Good afternoon, good evening, good morning, wherever you are listening to Change of Pace Live, the home of Pakistani cricket commentary. We're with you live for the second T20 International between England and Pakistan. The lineups have been announced, the toss is on its way. England have won the toss and they have elected to bowl first today. Pakistan's lineup is unchanged. Babar Azam, the captain, alongside Fakhar Zaman, Mohammad Hafiz, Shoaib Malik, Mohammad Rizwan, Iftikhar Ahmed, Shadab Khan, Imad Wasim, Mohammad Amir, Shaheen Shah Afridi and Haris Rauf. For England, similar lineup as well. Johnny Bairstow, Tom Banton, Daweed Malan, Ewan Morgan, Moeen Ali, Sam Billings, Lewis Gregory, Chris Jordan, Sam Curran, Adil Rashid, and Saqib Mahmood. The two openers for Pakistan will be Babar Azam and Fakhar Zaman in 10 minutes. And the two openers for Change of Pace today is myself, Masad Afzal, and with me, AZ Khwaja. Assalamu alaikum Musad. Looking forward to today's game. Finally, we might not have rain to play spoil sport. So Pakistan toss हार चुका है और पहली बैटिंग कर रहा है. We saw in the last game it was a very flat pitch, very easy for the batsmen. But we bowled exceptionally well with the new ball to keep them down in the beginning. फिर Benton show शुरू हो गया था. Yep. But then we pulled the game back really well with Shadab Khan. Khwaja, if you remember the exact things that you were upset about with the lineup a couple days ago, yes, we could essentially just replay that. यार अब of course wash out हो गया तो they're not going to make any team changes. They're saying हम तो game control कर रहे थे. But once again the two dinosaurs, Malik and Hafiz, have made their way into the lineup. No space for Haider Ali, which is very frustrating. Yeah. कि यार आप उस बच्चे को लाए हो, आपने उसको प्रमोट भी बहुत ज़्यादा किया हुआ अपने PCB चैनल पे, उसकी हाइप भी बहुत बनी हुई है, वो परफॉर्मर भी है. 100%. फिर भी we're going with the age old Jurassic Park वाले जो है हमारे. Can I add to this discussion though, Khwaja? Yes. I don't think that when we go at Mohammad Hafiz or Shoaib Malik, we should go at an angle of time or age. That's a variable that they can't control. I'll tell you what they can control though is their performances in England. 100%. And both of their numbers in England are extremely underwhelming. They were underwhelming at the 2019 World Cup. They've been underwhelming before that. And to persist with them doesn't make sense to me. Yeah, we have been going to England for the past 4 summers. Every summer we are in England. And how many performances can you count from Malik and Hafiz? मैं आपको एक हाथ पे दोनों की performance गिना सकता हूँ. फिर भी हम 2020 में भी उनके पीछे लगे हुए हैं यार. When we have a replacement, when we have a guy, when we have a young gun who's looking good, who's confident, who plays daring cricket with proper technique, फिर भी आप उसको बिठा के रखे हुए हो. Do you think they're apprehensive about the fact that he's going to debut in England? It might be a little bit tough. यार these pitches are so flat. अब क्या इतराना है? Especially in white ball cricket, England is probably the best place to play. We've had 450, 480, and look at that. Wacky Yunus. How's that for a masterclass? क्या बात है? Arguably the greatest bowling pair of all time. No doubt. White ball cricket में तो nobody comes close to Wasim and Waqar. Absolutely undisputed, the greatest pair ever. For any for any Pakistani generation, for any generation of any cricket, these two were the kings of white ball cricket, no doubt. And they have such an impact on world cricket. I was listening to the Tailenders podcast with Jimmy Anderson, and he was referencing how important it was for him to listen to Wasim Akram praise him and congratulate him. Of course. We obviously look at them at a very Pakistani angle, but even in international cricket and even in the global audience, they're massive figures. Yeah, Mitchell Johnson खुद कहता है Wasim Akram was my hero. Mitchell Stark said Wasim Akram was his hero. Usain Bolt, the multiple Olympic champion, said Waqar was his hero. So this is the impact these guys had globally. Yeah. तो पाकिस्तानी तो छोड़ो यार, इतने world class athletes इन दोनों के इतने बड़े fan थे, तो हम लोग तो फिर भी पाकिस्तानी हैं. A lot of the change of pacers are already in. Oh yes. Dawood Abdullah, VK, Zakaria Khalid, Zain Mirza, Mahobili. Today feels like the most important match of the summer, to be quite honest. Really? थोड़ा सा लग रहा है यार, वो तो मैं पता था बारिश ने चलो मैच खराब कर दिया. For me it was the first test match. वो तो of course था ही था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यार we have to make a big impact in this match. We need a win on this tour. That's what we need. 100%. And it would be frustrating if we don't get one because we constantly look like we're nearing it. यार we've honestly, अगर आप सारे दिन गिनो, सारे session गिनो, we've outplayed England for large parts of the tour, to be quite frankly. I agree with that. You can't argue that at all. Results शायद reflect नहीं हो रहे, लेकिन इस टीम ने वाज़े progress की है, youngsters ने वाज़े progress की है, रिजवान ने बहुत ज़्यादा progress की है, and I'm really confident for the future of this team. Looking good. Good captaincy as well from Babar Azam in the first T20. The little bit that we saw. Whoa, Wasim shape shifting. अभी उधर थे nets में, अब इधर पहुंच गए. He's truly a wizard, a magician. A wizard of many arts, says Wasim Akram.
Whoa. And if you're listening in, Yeah, you're आप कहना क्या listening चाह रहे हैं? to Change of Pace Live, the home of Pakistani cricket commentary. We've seen how good he is with aerial powder, you know. कहाँ से कहाँ सफेदी. सब कुछ साफ कर सकते हैं वो. England versus Pakistan, the second T20 international. England won the toss and chosen to bowl first. नहीं आज पाकिस्तानी आज Pakistan है आपने. Pakistan. No changes in Pakistan's lineup. No changes in England's lineup. We didn't really get much of a game last time around. यार इंग्लैंड के बॉलर्स बहुत ज़्यादा हिटेबल है. ग्रेगरी हमने देखा था PSL में, इज जस्ट अ ट्रंडलर. साकिब भी हमने देखा, ही स्प्रेज इट अराउंड, गॉट स्मैश्ड वर्सेस आयरलैंड. फिर मोइन को तो हम पहले भी बड़ी कुटें लगा चुके हैं. आदिल रशीद थोड़ा डेंजरस बॉलर है, बट व्हेन यू हैव बाबर आजम, क्या बात, टेंशन ही क्या है यार. Nice special on Babar ये भी Azam. अच्छा बॉलर. क्रिस जॉर्डन, बट नॉट एन एक्सट्रीम लेवल मैच विनर in that sense. I would say he's one of the T20 greats. He's very good in T20, but you're not scared of him. You're not intimidated by him like you would be by Stark or Bumrah or somebody like that. Or Shaheen Shah. Mohammed Ahmed Hassan referencing Shan Masood at the BBC today. I have to say, obviously, we're not competing with BBC. They're so much bigger than we यार are. उसने on the field उसको कम torture किया जो उधर भी जिमी एंडरसन के साथ बिठा दिया उसको. True, and apparently Isha Gua is constantly referencing that. But what I would like to say, Khwaja, when we were speaking to Bazid Khan about this a couple weeks ago, or a month ago now, it seems a while now, and we constantly referred and mentioned the fact that we do need more Pakistani voices in cricket. So whether it's Shan Masood or Razar Ali, it's good that they're getting this international platform. यार करना भी चाहिए. We for too long one guy has dominated the scene, monopoly, और हमने देखा his standards have fallen drastically over the last 5-10 years. Again, competition. बस cliche machine बना हुआ, नाम नहीं लेना चाहता, but we all know who he is. Competition breeds excellence. हाँ, exactly. Speaking of excellence, hope Babar Azam gets a big score today. कह रहा है कि मैंने T20 100 मारना है sooner or later, and of course he's playing for Somerset after this tour, तो उधर भी रंजे करेंगे इंशाल्लाह बाबर. Nice clear day in Manchester today. मौजा ही हो गया है. अब फिर ना कोई हैंड होगा. हमारी किस्मत में इस टूर पे लिखा है कि कोई ना कोई एक हमें हर्डल मिलेगा. Yeah. Also, a unique characteristic of this game, Khwaja, it's the first game since 1999 to be free to air on BBC. So we expect a lot of viewers in England. So why didn't they show the first T20? Not sure. I guess today was a Sunday. That's probably why. हो सकता है. Producer Surprise making an appearance. Of course, the 100 भी हमने सुना था BBC पे broadcast होगा. That was supposed to be the big push to bring cricket back into the mainstream, जैसे Premier League वगैरह ने dominate किया हुआ है. So it's good for the game. इसमें कोई हर्ज तो नहीं है. Yeah, for sure. It's a win for everybody. Will Pakistan get that dub? Yeah, I think Pakistan should. Batting first. यार इस ग्राउंड में ये मसला है कि कुछ डिफेंड करना looks tricky. तो अगर हम 180 185 करेंगे फिर जाके कोई बात बनेगी. So plenty nerves. Won the toss, England, and chose to bowl first. So that's gonna be the only. Fakhar Zaman भी come back कर रहे हैं. It's a lot of pressure on him. Making a return to the green colors after a while. Yeah. He was dropped in that series versus Bangladesh. It's been a while since we played white ball cricket. Fakhar Zaman ko, हाँ. Well, Pakistan as a whole, the last game was against. Our last ODI was when Sarfraz got fired. Sarfraz got fired. And then that against the Lankan B team, that was the last. The T20. नहीं, actually the Bangladesh T20s, but वो काफी bore match थे, मजा नहीं आया. Yeah. T20s in Pakistan, always a question mark because they're not as high scoring as they are in other countries. We are 5 minutes away from the start. क्या comments आ रहे हैं जरा पढ़ के सुनाएं. क्या predictions है लोगों की? क्या frustrations है लोगों की? For the first time in my life, I'm hoping for the failure of Pakistan players. Hopefully, a duck from both Malik and Hafiz signals an end for them. यार देखें, ये बात कहने वाली है. लोग पहले भी कह चुके, but it doesn't work. These guys, they don't fade away like that. ऐसे लोग magically drop नहीं होते. हमें पता है, they still manage to cling on. And Zain is saying, I'm with you, Musab, but we can't have these lot and hope to win the World Cup. हाँ, इसमें कोई शक नहीं है. और बल्कि आप शदाब इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है आपके PSL में. He was one of your highest scorers. He was hitting sixes for fun. उसको आप क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी दे रहे इंटरनेशनल T20 लेवल पे? उसको को 4 पे जाके खेलो. शो मी व्हाट यू गॉट. उसको क्या फ़ायदा 6 पे भेजने का? 3 ओवर रह गए, जाओ भी छिक्के मारो. उसकी वैसी गेम नहीं है. बल्कि तकरीबन पाकिस्तान टीम में किसी की भी ऐसी गेम नहीं है. इवन इफ्तिखार हमने देखा, ही इज़ बिन हिटिंग वेल, बट आई डोंट बिलीव ही इज़ स्ट्रेट फ्रॉम बॉल वन पोलार्ड टाइप हिटर नहीं है. उसको भी टाइम लगता है 5-10 बॉलें चेक करने के. But we expect them to just walk in and start blasting sixes, which is just not doing them a favor or helping the team. Players are coming out onto the field now. England in all red, Pakistan in that lime dark green combination.
Morgan. वैसे आपको कैसी? I don't like this England kit, to be honest. I don't mind it. I don't mind it. मतलब थोड़ा डिजाइन तो मानना चाहिए था. The World Cup one was amazing. वो तो बहुत That was gorgeous. That light blue. वो तो वाकई इन पे बहुत अच्छा लगता है. Amir Shirazi is saying, I wish we had won the toss and bowled first. If we put up a good score, our bowling might be able to win it. Fair enough. Of course, it will all depend on Babar Azam carrying the innings. अगर वो 12-13 ओवर खेल जाता, then we should get at least 175. Yeah. And Omer is also opening the first Pandora's box of the day. क्या कह रहे हैं? He's saying that apparently Babar Azam requested Malik Hafiz in the side. यार बाबर आजम ऐसे कभी भी नहीं कर सकता. I don't believe it. Babar can do no wrong in this 100%. commentary box. Babar Azam opening for Pakistan, Look at average that of record. 50.7, strike rate of 128. 13 50 हैं यार 40 मैच में. And 97 the best versus the West Indies in Karachi in 2018. Although Khwaja, the average in T20 cricket is a bit of an inflated statistic. हाँ एवरेज मेहंदी देख रहा है उसके आप 50s देखें. Were they 50s or 30s? I think 50s ही थे वो. Saqib Mahmood Saqib opening the bowling for We've England. seen कि average ये of- नाई इतना अच्छा नहीं है जो उसने बेंटन का हाल किया था बालों का. बहुत बुरे बाल काटे हैं वैसे इसने. उससे बेहतर तो अफरीदी ने काटे थे. वो शहजाद ने काटे थे अफरीदी के. आपने देखी होगी फोटो. मैंने नहीं Shahzad देखी giving बट Shahid Afridi a haircut. back when they were BFFs. Yeah. अब मुझे लगता है थोड़ी तलाक वलाक हो गई उनकी. अब वो बात नहीं रही अब. Here we go. First ball of the day. Saqib Mahmood to the captain Babar Azam. I have to say there's a pretty decent Pakistani British contingent in the side now. Moeen, Rashid and Saqib. तो उर्दू अब ध्यान से बोलनी पड़ेगी हमें. 0 for 0. There's a mid on in place. East is East. Fine leg inside the circle. Slip in place. Point, cover. Extra cover. Mid off. Fine leg in the circle, so that's an opportunity if he strays down the leg side. Yeah. But here we go. Saqib Mahmood versus Babar Azam. Feels like a Faisal Bank match. Tundi. Saqib Mahmood to Babar Azam. Short What of a the delivery, shot. played away through mid wicket. I think that should be the first हो जा. boundary of the day for Pakistan. No, it's be cut हो off. गया. Nope, that'll be 4. He almost did a Simon Jones there. Immediately, Babar Azam off the mark with the boundary. Lovely shot. Just Beautiful back of a length, sat up on the pitch. हमने देखा ये pitch इतना तेज नहीं है. It's good for batting. So Babar Azam easily rocking back, slapping it through mid wicket. Too short. You have to pitch it up, buddy. What a shot that is from Babar getting on top of that. थोड़ा सा ground. विंबलडन वाला फोरहैंड जो है ना वो टॉप स्पिन मारी थी. आप तो फेडरर के फैन हैं तो आप तो जानते ही होंगे. नहीं, I'm a Nick Kyrgios fan. आपका नंबर 1 तो नहीं होगा ना वो. मोस्ट फेवरेट है आपको. Most favorite है वो. लेकिन आप उसकी फिर स्किल्स पे नहीं जा रहे, उसकी हरकतों पे जा रहे हैं. उसकी हरकतें ऐसी हैं. 4 for no loss after 1 The Shoaib delivery. Akhtar of tennis. I like that. Beautiful drive from Babar Azam, but there's a man at the edge of the circle. यार ये साकिब की भी अच्छी पेस है. 140 142 मारता है. for गुड sure. एक्शन. अगर आपको याद हो पाकिस्तानी एक पुराना बॉलर होता था फैसलाबाद का मोहम्मद तलहा इन दैट मगरिब चेस मैच एंड अगेंस्ट दैट 2014 एशिया कप वाला मैच. ही बॉल्स अ लॉट लाइक हिम. दैट स्लिंगी एक्शन जैसे जेवलिन थ्रोअर है वैसे फेंकने वाली. VK is asking Musa, did you start watching tennis in 15? I actually regularly 18. I started watching tennis much later than 2015 even. I used to watch just the Grand Slams back in the day. सारी 4 के 4 Except विंबलडन में ही मजा आता है. to be except for quite the honest. Australian Open because of the timings. Played away onto the leg side, come through for a single. I'm a big fan of the French Open actually. फ्रेंच ओपन ठीक है I like the clay courts, the Roland Garros, लेकिन वो एक ही मुफ्ता उधर स्कोर पे स्कोर करी जा रहा है. द कौन? सेवाग ऑफ टेनिस. the Sehwag of tennis. फ्लैट ट्रैक बुली. Yeah, true. फखर जमान. लुक एट दैट डिसेंट रिकॉर्ड 450s. गुड स्ट्राइक रेट ऑफ 136. एवरेज तो ठीक है बस वही है व्हेन ही गिव्स हिमसेल्फ एन अपॉर्चुनिटी. We don't look at the average in T20 cricket. If he can get you runs at 150 odd in the power play, that's pretty good. 5 for no loss, Pakistan. Ray Lukata is saying Sajid Mahmood is a relative of Saqib नहीं साकिब तो स्कॉटिश है पीछे से. yeah. वो कबीर अली एंड आई बिलीव साजिद महमूद वर रिलेटिव्स आई बिलीव. Sajid Mahmood building a TikTok career. Big appeal. नहीं, Pitching नहीं. outside leg for Saqib, but it hits Fakhr Zaman flush on बल्कि the pads. कबीर अली जो है ही इज आल्सो रिलेटिव ऑफ मोइन अली. इनफैक्ट आई थिंक दे कजिन्स और समथिंग. सो इधर भी क्रिकेटिंग डायनेस्टीज चल रही हैं. There it is. Billy's asking, do you like the French Open because you're a Nadal fan? No, I'm a Nick Kyrgios fan. यार नडाल कितने को 8 साल से लगातार जीत रहा है उधर. He's just हद हो गई so है यार. dominant. Kabir Ali and Moin Ali are brothers. नहीं ब्रदर्स नहीं हैं. I don't think they are. कजिन्स है. Renu Kata तो just last name same है उनकी relationship नहीं बना वो रहे. रिलेटिव्स हैं लेकिन इतने डायरेक्ट रिलेटिव नहीं है.
5 for no इतने loss. direct. 0.4 overs gone here. Cricket in lockdown. We are into the second T20 of this tour of England. Saqib Mahmood now bowling to Fakhar good Zaman. ball, Gets a bit of an yeah. inside edge. The leg side for no run. अच्छी पेस निकाल रहा है और सीधी सीधी करा रहा है. That's the area where Fakhar doesn't like the ball on that middle and leg line. थोड़ा सा अपने वो blind spot में मिस हो जाती है उससे बॉल. हमने देखा था बुमराह ने इसको बहुत खूबसूरत तरीके से फंसाया था in that Asia Cup where we got humiliated. Masked Wise saying hello guys, hoping for a Pakistan win to complete an Arsenal and Pakistan double. भाई आर्सेनल जीत गई कल, पर देख लो अब. Get behind that. I can get behind that. लिवरपूल वालों के रोने शुरू हो गए ऑलरेडी. वो रोते ही रहते हैं वैसे देखा जाए तो, कभी खुश नहीं होते. यार अब इस साल तो खुश हो रहना चाहिए उनको. Ooh, inside edge, but just. What are you doing, Fakhar Zaman? Coming down the track, getting an inside edge. यार बड़ा जबरदस्त ओवर करा दिया लड़के ने. Bouncing over the stumps, and that's a pretty good over considering the first ball went for a boundary. 5 for no loss after 1. देखिए माहो अभी आई हुई है कमेंट्स पे. उनका रूल है कि जब वो आई हुई हो तो फुटबॉल की बात नहीं. बल्कि माहो तो खुद चेल्सी फैन है, मुझे याद है. Oh really? पीरलो फैन तो वो थी, अब चेल्सी Maho फैन just gets cooler every day then. पीरलो के तो Chelsea सभी fan. फैन होते हैं. If you don't like Pirlo, you don't like football. सही बात है. Simple as that. फुटबॉल. यार look at that head to head true. record यार. Pakistan only beaten England 4 times. That's interesting because I've always felt that Pakistan were a better T20 side than England. हाँ. Moeen Ali opening the bowling, very very interesting tactics. तो Pakistan Ali. taking a leaf, England taking a leaf out of Pakistan's book. Yeah. दोनों पाकिस्तानी बॉलर, पाकिस्तानी बैट्समैन were taking over. Mr. Khan, वो आप देखते हो वैसे मिस्टर खान BBC पे? No, I don't watch यार a lot of BBC to be honest. क्यों? आप रिपब्लिक देखते हैं? A bit of ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो. 5 for no loss after 1. चरस लाओ, गांजा लाओ, MDMA लाओ. यार यार ऐसे बंदा मांग रहा है तो उसको चपेट भी ना दे. this is a family show, Khwaja. यार वो कह रहा है, मैं थोड़ी Bring कह it रहा in हूँ. drugs, bring it in Arnab. अफीम, 5 for no गांजा. loss. Speaking of ganja, here's Moeen Ali. Pull away from Babar Azam, and he might just get about. No, there's a Mid deep mid wicket in place. बड़े चलाक है. Bowling short, Moeen Ali. That was a poor delivery, a loosener to start off अच्छा with. ये 7 इसने पहने में, मैं समझा लिविंगस्टोन था. If you're a right arm off spinner in T20 cricket, you don't really get a lot of room to get set. You cannot bowl a single loosener. बिल्कुल. But I think they're more confident with the Moeen's control of the new ball. आदिल रशीद को देते थोड़ी गंदी बॉलें वो डाल देता है. He Yeah. has a tendency to bowl a boundary ball. Tendinitis. Muhammad Haris on YouTube saying after Australia T20 series, Babar said himself the team needs experience of Malik and Hafiz. So maybe there's a story there that we are After not the looking Sri Lanka into. series. The Australia series. हाँ, fair enough. यार लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो वैसे ही हम इतना डरते हैं, क्या True, करें. good point. Muhammad Haris, you're on YouTube. You're can you make your way इधर over to हमारी वेबसाइट पे आ जाएं. changeofpacelive.com/matchday. 6 for no loss, Pakistan. And Babar Azam 5 off 2. Strike rate by spin direction. So when it's coming into him, he likes to go over mid wicket and at those areas. Pakistan get off the mark finally, playing it away onto the leg side for a quick single. अब यही बात है ना, वो भी बेचारा अंडर प्रेशर है कि जी मैंने रन्स करने हैं, कम बैक हो रहा है मेरा. So चलो थोड़ा टाइम लगा लेगा, but we know Fakhar Zaman can take the game away in just a few overs. Muhammad Ahmed Hassan is saying the Citizen Khan guy now does Good Morning Burton when Piers Morgan is away. It's pretty अच्छा आदिल रे काफी बड़ी pretty promotion हो decent. गई. Nice down the track from Babar Azam. यार आपको याद है वो YouTube पे होता था लड़का. Good running here from Pakistan, stealing क्या two, बात है, and it went to long on. Babar Azam making that call. प्लेसें अभी प्लेसें. Wonderful, and again the timing of the shot not too quick to the long on fielder, so he managed to take two. You were saying, Khwaja. आप देखते थे वो Diary of a Bad Man, that Hamza guy. Yeah. I used to यार love it. कितने जबरदस्त वो वीडियोस. It was hilarious. that Eid dance यार. Yeah, man, classic. Sajjad Ali played away to the leg side again. Shout out Sajjad. And long on is deep in the circle, but this time it's just going to be a single. आपका अगर आपको बोले भाई one song of Sajjad Ali for your life, only one. Oh man. अब वो ना कहते हैं गिड़ वो जो उसने. You know, if you कौन said सा था if you Coke Studio में? if you said you put a gun to my head, then I would just rather get shot and listen to only one song by Sajjad Ali. आप अपनी लाइफ को वैल्यू ही नहीं दे. It's just I incredible. would say तेरी याद से तौंदी. That's pretty वो good. जो उसमें जो गिटारिंग शिटारिंग हुई, it's very mellow, very nice. I और वीडियो am- कितनी क्लास की. I'm going to go with Chal Rande. चल रहने दे यार तू. Off the back foot, upish, beats Lovely point. shot. And he's going to carve that through to the offside to go for another boundary. Zabardast, Pakistan off to a pretty decent start here. 14 for no loss after 1.5. और आपको पता है जब सजाद अली की बातें हो तो कोई गलत काम नहीं हो सकता. What a shot Very that well is. created shot by Fakhar Zaman. थोड़ी सी पीछे थी बॉल, ज़्यादा नहीं थी, but he made that shot really beautifully. What good Teri batting. Yaad Sakhil is saying
Mohammed Ahmed Hassan is saying Chief Saab. Whoa. Good shout. Gopi Mia Kawal saying Hal Zulm is a good shout. It's Tasveer bana ke is also very nice. My dad loves that song. Cinderella. Down the track this time by Fakhar Zaman and just long on for a single. 15 for no loss after 2 overs. Pakistan doing decent. Good over, not bad. Yeah. Balki 9 run, I believe. Nahin, 10 hi hai. Good. Chris Jordan, we've seen it often in the power play that teams will experiment. They'll play 5 bowlers, 4 bowlers in the first 6. Pakistan used to do that, in fact. Bilkul. And Imad Wasim bowled really well, surprisingly. यार मैंने कहा चलो थोड़ा struggle करेगा flat pitch पर, but he bowled exceptionally well with the new ball for Pakistan. Yeah. And I actually put out a tweet today, Khwaja, that we really underrate Imad Wasim, the T20 bowler. He's got an economy of less than 6. He's a good T20 player. A strike rate of 21, and he bowls in the power play. 100%. Those are pretty यार good मैं तो statistics. कहता हूँ अगर ये थोड़े अपनी बैटिंग पे फोकस करता है ये तो टेस्ट भी खेल सकता है. Batting at 6. I was surprised. I was actually looking into his थोड़ी career. मेहनत करनी थी. I was looking into his career today. He hasn't played a single test match for Pakistan. वो कभी उसने फोकस ही नहीं किया उस पे. 15 for no, but also an off spinner in test match cricket. How often do you really? नहीं, he could have been a sixth batsman who was the 5th bowler. जैसे शदाब को नहीं हम लेके चल रहे हैं आजकल. But a leg spinner is typically an attacking bowler. हाँ, but ये तो चलो हम कह देते कोई contained bowler है. 15 for no loss after 2 into the 3rd over here. Jordan coming into Fakhar Zaman now. Right arm over the wicket. Wide outside off. Fakhar Zaman beautifully carves this away. It should run away all the way for 4. It does. A wonderful shot by Fakhar Zaman. Zaman का दिन लग रहा है. It was a full toss. Loosener wide outside off. Poor delivery by आपने Jordan. Jordan की तारीफ की और उसने आते एक horrible shit ball off stump. Jordan is with Zalmi or the Kings right now? The Kings. He was with Zalmi all these years. Then he went to KK. Right. And a good franchise player to have, a league player to have. He's a wonderful fielder off of his own bowling as well. आपको याद होगा वो जो PSL 3 का final था जो he took that stunning catch. Yeah. That was amazing. His best catch in the PSL so far. Maybe one of the best. Top 5 तो definitely. A 3D running back. हाँ वो भी ठीक था. Not Classic bad. PSL moments. Beautiful delivery from Jordan. नहीं, finding his line right outside off, but it's defended a point for no run. 19 for no loss after 2.2. Look at Chris Jordan's record. 58 wickets in 48 matches. Good average. Economy rate 8.67 thoda zyada. Ideally he should be around 8 or below. But look at that, best 4 wickets for only 6 runs. Unbelievable stuff. कौन सा गाना है? I have no idea what the song is. I thought Mahal was just having a go at us. क्या कह रही हैं? She says, "Yaar, please, मुझे कुछ लड़कियां चाहिए." What song is that? Even I don't know what that song to be honest. Sajjad Ali ka? Oh, a loose, dead ball from Chris Jordan here gets lost in his run up. Lari Adda bhi to hai yaar. Kofi Kawal saying there was a thread on our cricket where the majority ranked PSL is the 4th best franchise league. I disagree with that. I completely disagree with that. I think after the IPL, it's the PSL. क्या कह रहे हो? He wants us to rank the T20 leagues in the world right now. I think it's got to be obviously. यार ये बहुत subjective है. इस पे deep dive करनी होगी. The masses, obviously, and the numbers at the IPL are undefeated. Good this time on the leg side, beautiful on drive by Fakhar Zaman. Mid on doing the fielding there. It's Saqib Mahmood. We have to pronounce it like he wants us to. Saqib Mahmood. I think bowling wise PSL is quite strong. Batting wise IPL is quite strong. As a complete package, the commerce. Complete कोई भी नहीं है. सब में flaws हैं. सब में flaws हैं. IPL में flaw है because it's Indian. Yes. वो तो अब एक default flaw है. वो ठीक नहीं हो सकता. 20 for no loss. Apologies for that. Good shot. Nice CA. भाई मेरा सिंपल सा सवाल है. IPL ने इंडिया के लिए कितने प्लेयर क्रिएट किए हैं? Rohit Sharma. No way यार. वो 2007 की वर्ल्ड कप से खेल रहे रोहित शर्मा ने but still, I mean, he came no, to, of course not. His performance with the Mumbai Indians. यार परफॉर्मेंस अपनी जगह है. He was a recognized talent. KL Rahul. KL भी यार खेलता है डोमेस्टिक वगैरह उनके. वो तो सभी खेलते हैं. ये कोई बात है? नहीं मतलब जो हम कह सकते हैं भाई PSL IPL प्रोडक्ट है. Beautiful shot off the back foot from Babar Azam, driven to third man, and they'll come back for 2. The running today, Khwaja, has been on the money. They've been stealing those extra singles. Let me ask you a question. अच्छी chemistry. Let me ask you this question. जी. You're an avid cricket watcher. You don't let the cricket go. हाँ जी. Out of all the batting pairs you've seen, who do you think is the best between running the wickets? Who do you think are the 2 best runners between the wickets as a pair? Not individuals, because some people are good individual runners, but they're so good they get their partners run out.
Very good question. ये थोड़ा deep dive आपने. See what the comments I think have to Hayden say. and Langer were quite good. I already have my answer set. अच्छा. 22 for no तो फिर loss सवाल after क्यों किया? 2.4. मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना. Slow delivery from Jordan. This time flicked away onto the leg side. There's a square leg in the deep, and he'll come and get it. It'll just be a single. अच्छा बचाओ. अच्छा अभी भी एक ball See है. some of the comments coming in. Yes, Relukat, I completely agree with your answer. Dhoni and Kohli, those are my top two. That's my best pair. And Gopi Kawal is criticizing the bowling at the CPL. हाँ थोड़ा सा वो है उसमें. Omer is saying लेकिन fielding is quite he's amazing. behind the Foxtel Australia telecast. That's okay, you can just pause it and हाँ see if एक you can मिनट sync pause it up. एक 5 सेकंड pause कर ले हमारे साथ हो जाए क्या है. Moin Khan and Inzamam ul Haq, that's an answer. There's an answer for the ages. यूसुफ और इंजमाम तो 23 for no loss after 2.5. Hoiked away this time, heaved away from Fakhar Zaman. There's a fine leg in place. It'll just be a single. Pakistan slowly into 24 for no loss. Not a bad power play. Yeah. 50 in the power play is usually a pretty good 8 return. into 6 48. What else do you want? Exactly. That will be more than enough. Yeah. 9 runs off Jordan, 10 off what's his name? किसने कराया था दूसरा ओवर? मोइना भाई. सकीब ने तो अपना वो करा लिया है. पहले अब देखते हैं उसको वापस. So Tom 3 Curran. bowlers used in the first 3 overs. And I think he's bringing on Tom Curran now, so he's rotating all the bowlers. Yeah. He is a hittable bowler. इसको मार सकता है. Tommy C. यार इससे बहुत प्रॉमिसिंग था जब ये न्यू ऑन द सीन आया था. मैंने कहा यार इंग्लैंड को एक ओडीआई स्टार बॉलर एंडरसन जैसा बॉलर मिल गया. ही टुक लाइक 5 विकेट्स इन दिस डेब्यू सीरीज. यार एंडरसन जैसा बॉलर I don't think अब आएगा. नहीं फॉर ओडीआईज क्योंकि जब जिमी भी आया था ही वाज अ वनडे बॉलर. Yeah, true. लेकिन इसका वो करियर Jimmy इसका Anderson. करियर नहीं वैसे डेवलप हुआ जैसे होना चाहिए था. इसका भाई आगे निकल गया सैम करन. Sam Curran, I think, is one of the best test all-rounders in the world right now. Definitely right. And it's funny because the English test squad has arguably the top 3 pacing all-rounders in the world. 100%. Got Ben Stokes, Chris Wokes, and Sam Curran. Sammy C. Tommy C now coming in, and it's another shot into the pitch, smash into the pitch. There's a cover in place. Fakhar Zaman will get another single. Pakistan will get 25 for no loss, and brings Babar Azam on strike. अब मुझे लग रहा है बाबर्स गोना पुल आउट इस कवर ड्राइव. लेकिन Yeah, reckon? ये हमने देखा इसके चेंजेस ऑफ पेस. शाउट आउट काफी अच्छे हैं टॉम Nice. करन के. शाउट आउट टू आवरसेल्व्स. So he'll saying Fakhar bottom edge Zaman. यार ऐसे यार उसने कॉमी हीरो है यार. CT 17 में तो इतने उसने अपने सर से जो रन किए हैं ना. हेडर के रन्स किए हैं. Exactly, 24 for no इतने loss. हेडर तो जिडान ने नहीं मारे थे उस वर्ल्ड कप Why में. is that first ball not counted? Ooh, slower ball. Why is that first ball not counted? I for? think उनका वो मीटर फंस गया वरना एक रन तो हुआ था. The meter is फंस गया. We look at that thing. स्काई के साथ भी ऐसा हो सकता है तो हम उधर टेक्निकल डिफिकल्टीज हो सकती तो हम लोग क्या हैं यार. Yeah, Relukat is saying nobody really talks about it, but Jimmy Anderson has 269 one-day international 190 wickets as well. ऑड उसने खेले हुए हैं यार ओडीआई. सब कहते हैं जी वो टेस्ट के लिए सिर्फ टेस्ट खेलता है. वो भूल गए वो कितना पुराना बंदा है यार. वो 17 साल से खेल रहा है वो. In the conversation about the best runners between the wickets, Yunus and Misbah has been mentioned by Mohammad Ahmed Hassan. Partnership against Sri Lanka in the World Cup was a masterclass. Yeah, It's a good that was point, good actually. innings. Down the leg side, that's going to be a freebie for Pakistan. ओ नो बॉल भी हो गई And a मजेदार. free hit. Tommy C all over The the wheels place. are coming off. And very quickly too. What's happening here? Is it raining? He hit the stumps. Oh. याद है फिन वाला मसला. But why do they give it a no ball? ये क्या ज्यादती है यार. What else should they give it? Oh, that's kind of hurt on the knuckles. नहीं बट वो बॉलर जान के थोड़ी कर आप उसको पेनलाइज क्यों कर रहे If that was Ashwin, he would say it's a man-cad. हो. अश्विन तो है ही. और पॉन्टिंग कह रहा था मैं उससे बात करूंगा. Actually, interestingly enough, I was listening to the Tailenders podcast, जी जी. and Jimmy Anderson is a very anti-man-cad. Of course. He's like, I will shred Ravi Ashwin about this when I speak to उसने him. श्रेड किया नहीं तो वो याद नहीं है Yeah. फोटो जो हुई थी उसकी. 26 for no loss. 3.2 overs gone. Curran this time smashed by Fakhar Zaman, and he doesn't really get a hold of it. Bounces inside the circle. Sorry, Babar Azam. That's not his game यार. आप Yeah. टच प्लेयर हो बट गुड स्लोअर बॉल दैट Yeah. काइंड ऑफ किक्ड ऑफ द पिच. डिडंट टाइम इट एट ऑल. तो बचत हो गई इंग्लैंड की. बट लुक एट दैट. Okay, so fault in our stars. Babar Azam, the big hitter. यार कोई बात नहीं. Non-existent? नहीं हमने देखा है उसने अपनी इम्प्रूव की है समरसेट के साथ अपनी बिग हिटिंग. Yeah. तो ठीक है वो खड़े खड़े छिक्के नहीं मारता लेकिन जैसे ही कैन हिट दम व्हेन ही इज Yeah. इन द राइट सिचुएशन. 26 for no loss. Curran now coming in this time full and straight, clipped away by Babar Azam straight to mid-wicket for no run. But there's often comparisons between him and Virat Kohli. Virat's got that in his game. Kohli. Virat can hit you भाई sixes. कोहली plays with Sharma and Dhawan. He plays with Malik and Hafiz. What are you trying to say?
I'm just saying that the way you develop in the situations he has to bat, of course he can't play with that mental freedom. He's carrying our batting. मैंने आप हमारे आर्टिकल में भी जब आपने पढ़ा था, जब मैंने लिखा था और आपने पढ़ा था, I hope he made 25% of Pakistan's runs since debut. सोचो यार, 1/4 of all our runs एक बंदा कर रहा है. और उसके साथ नालायक थे सारे. कौन था बड़ा प्लेयर? T20 का है हमारे पास कोई दूसरा नहीं है. नहीं. फखर भी अब 2 साल से तो आउट ऑफ फॉर्म. Yeah, but you can't be the number 1 T20 batsman in the world and not know how to hit sixes. यार he can hit sixes. ठीक है, फास्ट बॉलिंग पे नहीं मारता है, स्पिन को तो मारता है. We've seen he's improved on that aspect. 26 for no loss. 3.4 overs gone. Tommy Curran coming in this time, played away onto the leg side for a quick single from Babar Azam. मेन चीज़ है उस बंदे में एबिलिटी होनी चाहिए कि आपको अगर 10 runs per over, 12 runs per over करना है required rate. Can he do it? Can he? I think he can do it. Sure, okay. If he's well set, absolutely. Comments coming in. Misbah Umar Akmal lanat hai. Referencing that. देख जी, वाइड बॉल क्रिकेट जो होती है आपको देख के खेलनी पड़ती है. ऐसी कोई बात नहीं. खुश दिल हमारा प्लेयर है, बर्जनिंग टैलेंट है, हम उसको मौका देंगे. Adil Momin is saying best partnership I've ever seen is Sanath and Taranga versus England. Who? Sanath and Taranga, Upal Taranga. अच्छा या उन्होंने तो इतना मारा था एक ओडीआई में. I remember, yes. Yeah. Back in 2006, I remember. Pulled away by Fakhar Zaman. Good shot. Can that be a 4? I think there's a fine leg in place. No, there isn't. हो गया. That'll be a boundary for Fakhar Zaman. The man was inside the circle. Pakistan will cash in. They move to 31, and that 8 and over Khwaja is still consistent, despite a pretty decent over from Curran. अब ये जो 7.75 ज़रा उर्दू में बोलें आप. मुसाद आपके एग्जामिनेशन लेते हैं. Oh man. 7.75. नहीं, 7.25 कहना था आपने यार. 7.25 कौन कहता है यार? पौना घंटा रह गया. मुझे लॉरी नहीं होते. क्या करे यार आप लोग. Excuse me, आप हमारी उर्दू. I said what I said. 31 for no loss. 4 overs gone. 7.75. Best और इस मैच में भी. Oh, speaking of Asharia, the Mufti. Goofy. अच्छा कहता जी, I don't mind. I want to share my experience. With who? With whoever is in the world who need me. Lovely shot, Babar Azam. फिर तुम कहते हो छक्के नहीं मारता, फिर तुम कहते हो चौके नहीं मारता, फिर तुम कहते हो बहुत बड़ा प्लेयर नहीं. Look at that shot, slashed away through cover point, screams away for 4. That's Bobby at his best. That's not a 6 though. भाई रोलिंग चौका छिक्के से बहुत बेहतर शॉट होती है. छिक्के तो यार कोई भी डंगर मार लेता है. We want to see that effortless class cricket, like a billiard table, just the ball rolling along. Yeah. Beautifully, lovely shot, too wide, too full. और कराची किंग के teammates, no respite, no love lost. 35 for no loss. Baba on his way quickly into this innings. What? Good ball. Bit of a weird drive. Didn't really get to the pitch that delivery. Off cutter मार दिया, बड़ा जबरदस्त off cutter मारा. Babar did not read that at all. He's smiling back at the bowler. But the ball seems to be gripping on the pitch, so I think the spinners will have something to say. ये देखें जो off cutter मारा. Yeah, Ramesh भी कह रहे हैं कि छक्के हर कोई मार लेता है, but you can't be a complete T20 batsman if you can't clear the ropes. यार, it's not about. I'm not talking about Babar in this case. I'm just saying, if you're going to be a top T20 batsman, you should know how to hit sixes. यार आप number 1 ranked batsman को आप advice दे रहे हो. मैं बता रहा हूँ. How dare you? This is a characteristic of a complete T20 batsman. वैसे ये बात तो सही है. Umesh Shirazi saying, "Come on, boys, 100 की partnership तो बनती है." Pulled away by Babar Azam, his body behind that shot, but there's a deep mid wicket in place. It'll just be a single. England काफी ज़्यादा slower ball इस्तेमाल करें. They've barely bowled anything up to full tilt or 67, 75. That's a typical characteristic of a T20 innings, though, isn't it? But maybe they're overdoing the variations. आप straightforward उनको seam up ball कराओ. Maybe they'll just mistime it, trying to be over aggressive. Fakhar Zaman gone off 17 of 12 और उसने बल्ला भी नहीं उठाया. I don't remember any rash shot. No, nothing. Just poor deliveries. Yeah, nothing rash from either of the Pakistani batsmen so far. But with Fakhar Zaman, you never know. It's always around the corner. 36 for no loss. Lahore hero hai aapka. Whoa! What? Look at that! Is Fakhar Zaman making me eat my words. That's a shot. ये वो Lahore hero. I accept it. What a beautiful. तुमने refuse किया ना कौमी hero. Straight drive, straight along off for 4. The Zalmi, Chris Jordan is shaking his head. We've got a PSL battle on, Khwaja. यार मैं शुरू से ही कह रहा था. This is a very. Oh, it's Lahore versus Karachi right now. Oh yes, it is a very beatable England bowling lineup. There is no excuse for us to not deliver against them. इतना कोई दहशतगर्द खौफनाक कोई भी उनका ऐसा bowler नहीं है. We are delivering so far, but do you think Fakhar Zaman has made amends to his batting grip right now? It feels like he's holding the bat a bit squarish. 40 for no loss after 4.4. It's been a very healthy power play for Pakistan so far.
as it continues. Wait. Short fine leg, chance for a run out here. Direct hit. No, he makes it safely. ये crouch इसने अपनी ज़्यादा increase कर दिया है. Maybe it's just me after seeing him after a long while. Fakhr Zaman? हाँ लगता है कि ज़्यादा crouch कर रहा है. Cat edge जैसे नहीं करता था. Oh yeah. Cat Cat edge. Bailey also a bit of a crouch. बेली साहब तो सीधा अपना पिछवाड़ा ही पेश कर देते थे बॉलर को. That was after ये टारगेट है. That was after he came back, right? Fakhr Zaman, he knew he missed out there. Poor delivery from Jordan. And now it's Karachi versus Karachi. Oh yes. Jordan versus Babar. Indeed. और एक चौका ऑलरेडी पड़ चुका है. अब एक और ही मिल जाए तो क्या ही बात है. Yeah. दो चौके पड़ गए इस ओवर में. Cut away this time by Babar Azam to third man for a quick single, and he knew he missed out there. Third man circle में होता तो scene on था. Yeah. But good over for Pakistan. 13 runs off the over, 42 for no loss after 5 overs. A dream start in my opinion. I always say in T20 cricket, if you can get 50 off the first 6, you're in business. अच्छा एक डिस्कोर्स होती है T20 के बारे में कि इट्स ब्रेनलेस क्रिकेट और ये हुआ है. Yeah. यार ऑनेस्टली आई फील कि T20 क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट से ज्यादा मेंटल प्रेशर होता है. I disagree with that on कैसे? that T20 cricket is not a game of brainlessness. There's tactics. थोड़ा सा एरोगेंस है लोगों का उसके बारे में. इट्स अ वेरी हाईली specialized format. I'm a traditionalist, Khwaja. When it comes to Test cricket, I don't even like logos on my Test shirts and all that. But there's a separate little slice in cricket for T20 what you do enjoy. The only format which is in serious trouble, in my honest opinion, is ODIs. Especially bilateral ones. There's not really much to them. But I do like watching an ODI. Of course, yeah. I wake up in the morning and I know today is going to be an entire day of cricket. An ideal white ball series for me would be 4 ODIs and 2 T20s. 6 मैच हो उसमें आप फिर डिवाइड कर लो. ज़्यादा सुपर सीरीज कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था तो यार 3 फील्ड्स अ लिटिल लेस. I like a 5+3 though. यार वो फिर टूर लंबे हो जाते हैं ना. वो इतने मैच मिलते नहीं है. Shot from Babar Azam, but there's another mid wicket in place, but that's a beautiful uphill. मॉर्गन साहब मिड विकेट पे खड़े हो गए हैं डर के मारे इंस्टेड ऑफ. See what the comments are saying. आई होप पता नहीं अब मैसेज कन्वे हुआ है या नहीं. बट बाबर आजम नीड्स टू बी एट स्लिप. यार ये कवर पे खड़े होने वाला काम नहीं करो. इफ्तिखार ने जो उस दिन कैच छोड़ा है दैट वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग. यार आप रिकग्नाइज स्लिप फील्डर हो. आपका क्या काम है कवर में खड़े होने का यार. और आप हो टॉप ऑर्डर बैट्समैन. यू नॉट अ बॉलर. बॉलर को पता है वो क्या काम कर रहा है. VK is saying ODI cricket should be banned. It has no purpose anymore. यार दो ही एक ही तो हम ICC का सबसे बड़ा कैश का इवेंट है वर्ल्ड कप. Played away to point for a single, 43 for no loss, and Gopi saying no mukabla for 50 over World Cup. That still is the most coveted prize. मसला ये कि वो खुद डिवैल्यू कर रहे हैं उसको क्योंकि ये T20 ज़्यादा खेल के ODIs कम करके. So they need to restore the prestige of ODI cricket. अब उसका हल क्या है? I'm not quite sure. I reckon 43 for no loss after 5.2. Both are openers into the 20s. Fakhr Zaman 22 of 14 facing Karen. Yeah. Edge it goes past the keeper into the vacant slip corner for 4. It's all working for Fakhr forehead Zaman today. Whoa. Moves on to 47 to Pakistan. Fakhr now 26. कह रहे मैंने जान के मारी कहते Yeah, ना. I doubt. होल में कप्ताना झूठ ना बोल. That crept up on him. It was a good ball actually. अच्छी बॉल थी. The bounce from Tommy Curran. With the engine again. Yeah. But gloved it, handled it. No slip in place. Third man in the circle. Easy 4. Pakistan. Sometimes you need that luck on your comeback. Always, always. जैसे शान मसूद का हमने देखा था थोड़ी सी. 3 दफा आउट हुआ था वो. हाँ. 26 off 15 for Fakhr Zaman. This time played off the back foot, driven away for a quick single. 48 for no loss after 5.4. Very good power play for Pakistan. 50 रन हासिल हो गए. Now it will be very important to keep that momentum. बाबर आजम को स्पेशली सोचना होगा कि यार मैं रन बॉल नहीं खेल सकता. मुझे भी थोड़ा सा एग्रेसिव रहना पड़ेगा. कीप दैट रन रेट अराउंड 8 and 9 ताकि एंड में एक बड़ी फ्लरिश हो तो हम तकरीबन 200 तक पहुंच जाए. Then the game will truly be in our hands. But Adil Rashid will be very tricky on this pitch. थोड़ी spin, थोड़ी cut मिल रही है. Fakhr never really looks like he's in form though. Even when he got that or 100, out of form. Or out of form. He's just a bit of such a freakish batsman in that sense. Played away to fine leg. Should come back for 2 here. Good running. This pair has been pretty economical between लेकिन the मजे की wickets. बात है आप अगर numbers पढ़ो ना फखर के they're outstanding even in ODIs. Yeah, he very just good doesn't numbers. look like a batsman, or the numbers actually show that he is. 50 up for Pakistan within that power play in 5.5 overs. Sabroso 11. Sabroso, easy paisa. Shout out Sabroso अगर Pepsi आपने कोई डील करनी है हमारे पास आ जाएं. 50 NRO करना है हमारे partnership साथ. between Babar and Fakhr Zaman. 22 off 20 and Fakhr Zaman 27 off 16. क्या बाल बनाए हुए हैं यार इस फोटो में. जबरदस्त. वो सुपरमैन वाले नहीं है. क्लार्क केंट Bit of a Clark Kentish
look from. Speaking of Kent board, here comes the Tom. यार. यार कॉमी हीरो है उनका यार ऐसे तो नहीं कहते. Full toss flicked away from Babar Azam. There's a square leg in no. place. He's missed out on that. And again, that should have gone for 6. 85 miles per hour, good wheels from Tommy C. Should have gone for 6, Khwaja. कोई बात नहीं यार, कॉमी हीरो है यार, कोई बात नहीं. Quick recap of the power play. Babar Azam, first ball of the Look at day, that. went for 4. And Pakistan never looked back since. Pakistan got into the ये action. बड़ी प्यारी शॉट थी जो with मोइन a को इस्तेमाल की. beautiful boundary to Moeen ये Ali. genuine बैट्समैन वाली शॉट थी, genuine. Exactly. And England have used 4 bowlers in their first 6, Khwaja, as they're Pakistan are now 55 for no loss. I think sometimes that can be counterproductive. आप बार-बार उनको bowling पे लगा रहे हो, हटा रहे हो. It can be off-putting, to be quite honest. Yeah, but it can also be off-putting to the batsman. लेकिन वही देखो ना, हमने तुमको कुटा है दबा के. It's a double-edged sword, as I like to say. और कारी साहब आगे जी. Adil Rashid now continuing, just coming after. Look at that, good economy rate. Best of 3 for 11. That's surprising. I thought he'd have better numbers. He's actually a much better one-day bowler. Very true. 51 Especially for वो जो no बॉल loss. उसने Cowley को डाली थी. Yeah, beautiful delivery. Doesn't really get much attention because it's England. Wow. Babar Azam drying his अच्छा hands. मजे की बात है, वो कहता है जी मैंने रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेली, वो फिर भी उसको टेस्ट मैचेस खिला रहे हैं. खिला रहे भाई, उनके पास और कोई लेग स्पिनर है ही नहीं. नहीं वाकई. You don't have the talent. What you gonna do? What's happening here? बल्कि arguably Stump England might. has more spinners than us these days. Not legs. Bessie, हाँ नहीं वैसे Yeah. spin options तो है ना उनके Yeah, पास. spin options. लीच है, बेस है. Let me ask you this, Khwaja. रशीद है. You just mentioned this Ji, to me ji. now. You've opened the Pandora's box Ji, ji, ji. yourself. You've thrown yourself into the mix here. जी. Pakistan were to tour India for a 5-match test series. We'd win 8-0. Wow. And that's why you're listening to Change of Pace. यार यासिर शाह तो आउट कर ही लेगा ना. Made us come- 51 for 1 after 6. That's the end of the power play. And Khwaja said that if we were to tour India for a 5-test match series, we'd win 8-0. What do you make of that, folks? Let us know in the comments. As Adil Rashid continuing here, right arm over the wicket, big Nahi, appeal. nahi, nahi, It's down hit leg Bobby hai. flush, and No. I think that's going down leg side. But a good start for Adil Rashid. On a serious note, I think VK saying it's going to be a 2-2 draw. हाँ ऐसा ही कुछ होगा. कुछ हम जीतेंगे, कुछ वो जीतेंगे. Something like that. Zain Mirza is saying that बाबर को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इन टाइमिंग, कुछ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. बस ये देखें छिक्का आ रहा है. Ooh, good inside, googs. nice. और ये हमने देखा रशीद की एक बात बहुत बड़ी गूगली मारता है, बट वो ये कंसिस्टेंसी का इसका सिर्फ इशू है. Guided away to square leg for a quick single. Ramiz is saying Fakhr hasn't tried to go aerial at all in this innings. अब मसला ये स्पिनर आ गया है, you know, if he throws the ball up, Fakhr will definitely chase it. इसमें तो कोई शक नहीं है. Yeah. Look at that replay, well down leg side, no chance. And comment here saying that we could have won during the miss you era. I think we were वो तो 100% for sure कर we're the दिए better थे. team during then. Nice drive from Fakhr Zaman. सईद अजमल कैसे खेल वो सवाल ही नहीं पैदा होता, खेला जाता उनसे. Adil Moment saying if Fakhr wants to play like Babar, he does not belong. One needs to be a hitter. यार 28 of 17 अब वो क्या करे, वो He's going रॉकेट at a- लॉन्चर ले. He's going at a strike rate of 164 right now. That's सही है यार, really क्या हो गया. not a problem. And the run rate is not a problem for Pakistan right now either. यार ये तो बहुत ही जबरदस्त रन रेट है. And it's gone, I think. नहीं Babar Azam, an attempted stump chance here. Gonna have to go तुम आउट upstairs. कर दो हमारे कैप्टन को साथ ही. He was well inside. I think he But was. a brilliant delivery there What a from ball, though. Rashid. Shadab should be feeling good. Look at that. That's ridiculous. Massive turn. It's a rank turner almost, Khwaja. And Babar doing well to keep his foot within the crease there, to be quite honest. Look at that. Wonderful piece of bowling. वैसे हमारे जो हमारे नहीं जनरली बैट्समैन योगा वगैरह भी नहीं करते. They can improve their flexibility or something. We'll have to ask them. High yoga. Power yoga, one of the most sought after forms of fitness these days. 53 for no loss after Slip in place, 6.4. man. Nice change of pace for England right now. They've really changed the, Spinning wicket the lag rahi tempo hai. of the innings at the moment. Pull away from Babar Azam. There should be a deep mid Oh, wicket player. yeah. It'll beat the fielder. It'll go for 4. Another boundary for Pakistan. Just as I said that this over is looking good for the team in red, it's the green shits that have cashed in. Well played, green shits. Shout out Shida for that all-time great tweet. I Asad think Ahmed keh rahe, I think as that's usual. the top 5 greatest tweet in Pakistani Twitter of all Yeah, time. yes, they are. एक वो एप्टाबाद वाली I can hear helicopters. Oh, man. Shout out OBL. No shout out, no. I played away onto the leg side for a Kyun quick yaar, single. kya ho gaya? It might come back for 2 here. Whoa.
बाउंड्री क्रॉस हो गई बाउंड्री यार, क्या वैसे हो व्हाट रहा आर द टॉप 5 ग्रेटेस्ट ट्वीट्स इन पाकिस्तान ट्विटर दिस इज अ ग्रेट सब्जेक्ट दो तो हमें मिल गई बाकी तीन I haven't been on Twitter long enough. ओ कम ऑन यार मुसाद कब से हो तुम यार But I logged on for like 3 years. And then came back like a year ago. यार सोचना पड़ेगा लेट्स आस्क हर चेंज ऑफ प्लेसेस So दे he ऑल would know actually. Maybe. इवन आई शुड नो माहो तो तारीख लिख दी उसने तारीख पे Twitter की। तारीख तारीख पे तारीख 58 for no तीन loss. और बाकी सोचनी पड़ेगी यार दैट्स अ गुड वन दो तो कंफर्म है बाकी तीन ढूंढनी होगी Adil Mohammed saying algebra formula: no wicket in power play equals Azhar Mahmood. There, wow. Oh, यार आदिल उसको टैग करो ये ट्वीट Adil is गुड just कोचिंग ब्रो torn into Azhar Mahmood here. उसकी मिसेस का मैसेज आ जाएगा हाउ डेयर यू Lewis Gregory into the bowling शाउट attack, एबीक्यू and again another Zalmi player. ज़ल्मी या ही डिड वेल इन दैट ओए ये तो सिथ लॉर्ड लग रहा है किसको आते क्या नाम है जनरल पैल्पटीन Syed Bukhari with a comment that I want to address here. Darth Maul Gregory now continuing right arm over the wicket. Big shot from Barber. I don't think he's gotten a hold of that. And it'll bounce a couple bounces into the rope. That's a safe shot. The mid-on was inside the mid-off was inside the circle. So the Pakistani captain taking his chances correctly. And a boundary to start off the over, always a good thing in यार T20 बहुत हिटेबल बॉलर है इसको तो मारो यार रशीद के कुट ओवर के इसको ना बस. रशीद के ओवर थोड़े तंग करेंगे लेकिन आपने इसको मारना है यार Bukhari's with a question I want to ask you. What are your views on Iftikhar Ahmed still being a part of the 11? I reckon यार he played well in Australia I reckon that it's a good pick. He's in a good form. Beautiful shot from Babar Azam, twisting those wrists. interesting deep fine leg पीछे रखा हुआ उसके लिए Yeah. so they don't trust him So you're okay with Iftikhar then, huh? यार फिलहाल तो ठीक है किसी को तो आप रखें 6 पे अब उसने जब तक जो भी उसने खेला है ठीक ही खेला है can't really complain Fair point. but I would like to see Haider and Khushdill in the side for the two Jurassic Parkers जो है हमारे vitality So Khel is look saying- at Babar Azam's record last year यार unbelievable 52 the average, striker 930 plus runs और 100 भी of course वो मारा था Yeah. that magical figure Bobby Badshah, as we like to call him. 63 for no loss after बेचारे बेंटन ने 7.2. तब से टोपी नहीं उतारी जब से वो हादसा हुआ उसके साथ उसके साथ जो बाल काटे गए हैं. Slow delivery Ooh. from Gregory, or he's just a slow bowler. Whoa. And it'll be slapped him in on for a single. Fucker, do you think he struggles against hitting the slower pacers for boundaries? I think He he, likes the pace on the he does enjoy when the ball comes onto the bat no doubt but हमने देखा पावर हिटिंग कर लेता है that slogs over mid wicket Yeah. बस वो है, जब वो अफरीदी He's मोड में not a चले clean जाता hitter. है He's not a हाँ, clean hitter by any means. थोड़ा जोर जबरदस्ती वाला But he hitter can है। definitely push the ball over the ropes. 64 for no loss. Beautiful drive from Babar Azam. There's a mid-off in place, so they'll refuse the run. 7.4 gone. Pakistan 64 मजे की for बात है no हमारे loss. इंटरन इतने बड़े के फैन है फ्री ऑफ चार्ज जितनी उनकी प्रमोशन करते हैं Yeah. सल्लू भाई तक पैगाम पहुंचाओ यार इतना आपका एक सुपर फैन है कहना चाहिए वो करते हैं ना वो बच्चों को मिलाते हैं अपने See, हीरो I से think he's a कॉमिक हीरो KK से fan, not a Salud Bhai fan. There's a difference. Gregory continuing here is LeBron James hairline. वो Bowling to Babar Azam, and he's flicked it in the mid wicket. Should pick up a couple runs here. No, just a पूरी single. फील्ड ही इन्होंने फैला दिया डरपोक Power play khatam hua hai, and हो obviously- गया Yeah, hit the panic button. Sakil saying thank you BC from Mokar Yunus was a top tweet. that was a Yeah. good shout out वाकई And Zakaria is calling Gregory a Mita bowler. इसको Umair is मारना saying, चाहिए। does Khushdill keep? If yes, we can bring him in as a T20 यार keeper. इसने डोमेस्टिक में की भी तो है ये तो We मुझे had that confirm पता है। conversation. And that's going to be 1,500 T20 international runs for Bobby Badshah. चलो अच्छी बात है FHD letting us know about that. Cheers. Slow ये क्या delivery from shot थी? Gregory getting a leading edge onto the offside. Come through for a quick single. यार पहले बॉल आपने चौका मारा है आफ्टर दैट यू ओनली टुक 4 runs in the over that's disgraceful 66 for no loss after Score 8. predictions. Bukhari is saying 170, 180. What do you reckon? यार we need to at least 100 more from this stage आखिरी 12 ओवर में so hopefully 175 तक तो करें ताकि मैच चैलेंजिंग हो उनकी बैटिंग भी काफ़ी खौफनाक है बट शदाब आई फील ही इज़ रियली गोइंग टू बी इनटू द गेम इन दिस मैच मुझे लगता है हफीज़ भी थोड़ी बॉलिंग कराएंगे इस पिच पे टर्न मिल रही है वाज़े तौर पे Yeah. बट इवन देन 8.25 का रन रेट आई थिंक वी डूइंग क्वाइट Let वेल me give you a statistic, Khwaja, that's going to जी 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 interest you a little bit. England have only taken 1 wicket in their last 24 power play overs in T20 cricket. So they have a problem. And this problem in T20 cricket, so many statisticians and analysts and coaches, from Tom Moody all the way from... and what was their solution bringing Azhar Mahmood Although Rashid was slipped in place. Big shot! Akbar Zaman clears the front leg, goes over long on for 6. Look at that. There's a half a dozen. Pakistan on their way here, 72 for no loss.
And immediately the batting coach at the Focus forefront. mein Exactly. What a shot that is. That's a clean hit. That was googly. He picked it. Picked It the was on goops. middle and leg, and it's flying over mid wicket for a huge six. That's a six in any ground in the world. 100%. What a shot from Fakhr forehead Zaman. ये देखें यार ये क्राउच इसने कह रहे हैं कुछ FFZ. changes लग रहे हैं मुझे. We call him FFZ? Fakhr forehead Zaman? He's got a कर lot लेते of हैं यार. got a lot of real estate up there. CCKNG. Ooh, Whoa. nice. Another googly नहीं this नहीं time. नहीं वापस जाओ भाई. A little bit more circumspect Fakhr और जब Zaman. फखर हिटिंग करे तो बाबर पे प्रेशर नहीं जाता. He can just Exactly. knit the innings together. अच्छा आप ये नोटिस करेंगे फखर का हेलमेट कभी सीधा नहीं होगा. टेढ़ा ही रहेगा. फौजी है ना यार क्या करें. Whoa, 72 for no loss. यार ये गाली नहीं थी. कोई वीगो ना आ जाए नीचे. पापा जॉन्स लेके. And I just said there's plenty of Oh! big shot in the air, and I think it might be taken. नहीं नहीं. And there's a man there who should take the catch, comfortable. Bants. Tommy Banton with a haircut takes a comfortable catch. Fakhr Zaman with a wild golf swing. This partnership has been a good one for Pakistan, but काम कर finally गई comes to an end. 72 for 1 after 8.3. Shadab Khan will get a promotion? Shadab का पता नहीं, but Hafiz is good versus spin. He will definitely attack Rashid. He was bowled out of the front of his hand and just played across it. थोड़ा सीधे ही मारता तो सही रहता ही, but very good comeback innings from Fakhr Zaman. 36 of 22, did his job, built a partnership, and Pakistan looking well position set. now, yeah. थोड़ा अपना सेल्फिश होके खेले था 50 के लिए तो फिर हम ज़्यादा खुश रहते, बट दैट्स हिज गेम, सो उसको फिर आप फॉल्ट तो नहीं कर सकते. बट आदिल रशीद गेटिंग अ इम्पोर्टेंट विकेट फॉर इंग्लैंड. 72 for 1 after 8.3, and here comes Hafiz the Prof. And he actually has a pretty good record in his last 10-12 tests, T20s, averaging about 80 odd. I think he did really well versus Australia and New Zealand in that home series. So there will be some pressure on him. और ये अच्छी बात है कि वो स्पिन अच्छी खेलता है तो वो अटैक करेगा. Look at his record, 11 50s in 93 games. 116.6 is the strike rate. Not that good to be quite honest. Best of 86 at Centurion. But Adil Rashid getting the wicket. Look at that, out of the front of the hand, just basically bowled it across Fakhr Zaman. Babar's Flicked away this time from Babar Azam to mid-wicket. Should come through for a quick single here. Speaking of running, Hafiz is a shocking runner between the wickets. कितने अपने partners को वो run out कर चुका है. Definitely one of the So worst in gotta the be business. careful against him. Banton with a comfortable catch off Fakhr Zaman. 73 for 1 Pakistan after 8.4 overs gone. The run rate 8.42. It's been a good brisk start of the to the innings, and Pakistan, if they can carry forward and get at least 100 more runs from here, Khwaja, I think they're going to be in good business. No doubt. This England batting lineup does have some of the big hitters though. Mar! Yeah, short Ball this time, and Hafiz misses out, goes straight to the man at mid-wicket, and they come through for a single. Square leg boundary on that side is quite big, but Hafiz is so good against spin. Getting a half tracker first up, yaar, maar deni chahiye the वैसे, to be quite honest. But 74 for 1 अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है. ये भी कोई जल्दी भी नहीं है कि भाई आते ही सार हिटिंग करो, बट Full length delivery from Rashid this time, just playing the long mid on for a single. राशिद के 4 ओवर अब हमें देखने पड़ेंगे कैसे जाएंगे. 1 for 16 so far, तो इतना भी उसको रिलैक्स नहीं होने दिया हमने अभी तक. 75 for 1 after 9 overs. Babar on 37, nearing yet another 50 in T20 cricket. But look at that, Shoaib Malik, Mohammad Rizwan, not power hitters, don't have that aggressive game जो हम चाहते हैं. इफ्तिखार में वो ability है. शदाब को I think opportunity मिलनी चाहिए to bat at 4 or 5 in this T20 batting lineup. But Gregory going for runs in his only over. Saqib Mahmood bowled quite well in his first over. शायद उसको reuse कर सकते हैं. But Lewis Gregory being persisted with. David Willey को ये लोग नहीं खिला रहे, which is quite strange. Azhar Ali and Abbas rooming together watching the game. अच्छी बात है यार, हमारे कौमी हीरो उधर बैठे हैं यार. 9 overs gone, 75 for 1. Lovely shot. Dab down to third man. It's fine enough for 4. Oh, what a shot, Babar Azam. Beautiful. And we saw him play this in the World Cup as well. And I saw him do this for Somerset in the summer as well. Babar Azam now growing in stature this innings, also rolling on to becoming something
Might get 100 here, Babar Azam. 79 for 1. इंशाल्लाह दुआ करो यार, क्यों नहीं यार, उसने कहा तो है कि Do मैं you know करना the चाहता हूं. only Pakistani batsman who has 100 in all 3 formats? Oh yes, Ahmed Shahzad. There he is. Do you think his international career is over? I think अभी भी आ सकता है वापस. Yeah, I think it is. Really? Wow. Yeah. Flicked off by Babar भाई Azam. मलिक और हफीज अभी तक जिंदा है, तो वो दोनों तो यंगस्टर हैं अभी भी. उस लिहाज से तो Actually आप मजे ठीक की है. बात है, वो यंगस्टर भी नहीं रहे, 28 30 हो But गए. it's not about age for me. It's about the ability, and he's gotten plenty of chances to play for Pakistan and repeatedly misses out, so it just doesn't work. T for 1 after 9.2. England seamers today, quicker balls 56%, slower balls 44%. ये वही, this is the Azhar Mahmood effect. It is, एक yeah. कटरे मारो, कुटरे मारो, changes of pace वगैरह मारो, then you lose your identity. यार हम इंडियन बॉलर नहीं है, हम पाकिस्तानी बॉलर हैं. हमने स्पीड मारनी है. Interestingly हम enough, 128 kph मेंटालिटी नहीं है हमारी. bowlers in India are picking up in pace now. 80. एक ही है और कितने हैं यार, दो ही हैं. Yeah, एक दो I think I've heard in the domestic leagues are coming. यार through. their main guys, the 3-4 guys they have, they're very good. उसके पीछे कुछ नहीं है, to be quite honest. 80 for 1 after 9.2. Gregory continuing here, flicked off the Shot. pads by Babar, who's moved on by Hafiz. Sorry, moves on to 2, and he's now just 6 runs away from 2,000 T20 international runs. यार बस देख लो मोहम्मद हफीज. Yeah. चलो यार कर लो, अब क्या करें. अब ये कोविड की वजह से इसके भी करियर को लाइफलाइन मिल गया, प्लेइंग another extra year, but Waqar Yunus down in the dugout giving instructions. 81 for 1 after 9.3. Babar 42 of 34. अब I think Babar has to pick up the pace जब तक हफीज सेट होता है. Beautiful Lovely. shot down of third man, and should come through for a single. Babar getting closer to that 50. 43 off 35. Captain's innings so far from Bobby. It's exactly what we need from Babar Azam. 82 for 1 after 9.4 overs. I think double करके plus add another 15 runs, 175 180 पाकिस्तान को definitely target करना चाहिए. Hafiz or 2 of 2 facing Gregory. Pull away, and it just beats the man. That run away. The diving keeper. Oh, another 4. Fortunate 4 for Pakistan. I think he just gloved it, to be quite Just honest. a quick comment on the technicalities of the website right now. We are having some hosting issues, so if you Overload हो गया हमारा change. right now, if you're on the website, you're fine. We can read your comments. We see them all. But if there's anybody new trying to access the YouTube पे आ website, जाए. come over to our YouTube channel, Change of Pace Live, and it should be fixed in the next 5 minutes. Ahmed Jr. will drop the link to our YouTube channel. Actually, no, Sirkhail will link you to our YouTube channel on Twitter, so that you can get access to that directly. Gregory continuing here, flicked off the pads. इतनी He'll hype come हो through गई for a सीरीज single. के, भाई हमारी वेबसाइट ही क्रैश कर दी लोगों ने. देखो यार. That's the Babar Azam effect. यार मैं समझा दैट्स इजी ख्वाजा इफेक्ट. बाबर आजम कहाँ से आ गए? वो तो मैनचेस्टर में है. चले हद हो गई है यार. That's on you. कौमी हीरो है हम भी यार. AZ Khwaja, our Qawmi hero. Look at that, Jay Roy looking like an English chav. 87 for 1 after 10 overs, but he's injured thankfully. Wise Beg saying the slow ball revolution has started for England. देखो ना वो इफेक्ट, आधी बॉल उन्होंने स्लोअर बॉल डाली है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाई वी डिडंट लाइक अजहर महमूद. महाबिली कह रही हैं अभी मैं गालियां लिख रही थी और हफीज ने चौका मार दिया. वो चलता ही गालियों पे. जब भी आपके दिल में उसके खिलाफ खुन्नस बढ़े, he senses it and hits a 4. And England struggling to take wickets, only 1 wicket in 10 overs, वो भी स्पिनर ने लिए. तो गूफी साहब का effect definitely proving to be negative. Rashid now into his third over, cut away by Mohammad Hafiz into the offside for a single. Hafiz needs to take the game on versus Adil Rashid. हमने देखा है कि he's very good at hitting those big shots against spin. Not as Babar is not as good as him, to be quite frank, in this department. तो Hafiz को थोड़ा सा initiative लेना पड़ेगा and let Babar bat the overs. Amazing that Hafiz is better at something than Babar. Look at that, he's pulled it away और तो वो साथ ही उसने चौका मार दिया. How dare you? तुमने कहा था, तुमने dubbing की थी, तुमने voice editing की थी. And Babar I strongly deny these allegations. over to 47. Pakistan into the 90s. This is a good little change of. यार अब दिल थोड़ा garden हो रहा है. Exactly. शायद 100 हो A जाए. nice change of gear for Babar Azam too. बिल्कुल यार. He's getting quicker, getting some boundaries to flow here. And ओए, the notebook is Superman out. Clark Kent आ गए. Shot from Lovely Babar. shot, yaar. Gorgeous drive. That is a shot of the day from Bobby, and it won't be cut off. 50 for Babar Azam, 50 for the Pakistan captain. He has looked absolutely phenomenal this afternoon. Phenomenal. The run rate of 9.14, 14th
international T20 50 for Babar यार Azam. इतना money player है. Look at that 14th 50 in his 40th game. Can't believe it. What a captain's innings. Come on Bobby यार, आज 100 हो ही जाए यार. 96 for 1 after 10.3. Pakistan right in the game. Yeah. Strike rate of 137 for Babar Azam. Adil Rashid getting taken to the cleaners. This is a single Good to shot. mid-wicket. There's a man straight there. ए, Yeah. दो हो जा यार. Good fielding Billings. ज़बरदस्त फील्डिंग यार. ये एक्स कीपर, एक तो इनके पास इतने एक्स कीपर हैं. 97 for 1 after 10.4. और आदिल रशीद को मारना बहुत ज़रूरी था. That will really demoralize the England bowling. Beautiful cover drive there from Babar Azam and no chance. The Bobs. Look at that, the skipper. ये चीज़. And it's amazing to have a captain in form. The last time that happened was in Zaman. Full toss, a wide outside यार off. इतनी हलवा बॉल है हफीज. Or it could have been out. Yeah. Just like Aaron Finch in the World Cup. Ken Williamson in the World Cup. यार Mohammad Hafiz trying to give his wicket away. प्लीज़ हफीज़ रिटायर हो जाओ. कुछ करें यार. पीटीआई हुकूमत कुछ करें यार. कोई एनआरओ लो, इसके साथ ख़त्म करवाओ इसकी क्रिकेट यार. बस हो गए. Calls in the commentary box for Sarkhail to join us. Hopefully when the pandemic calms down a bit, he will be able to come down to Dubai. Played away to mid-on for a quick single from Run rate Bobby. pushing up to 999 for 1 after 11. Pakistan doing it beautifully. Yeah. Look at that 50, 53 of 39 deliveries. Beautiful shots. Classic shots. Orthodox shots. 7 fours. Beautiful, pretty. Excellent timing there from Babar. Look at the pulls उसने बहुत अच्छी मारी आज. And picked the length. Went over the top when it was required. Gregory, look at that यार. The third man dab तो बाबर की एक specialist shot बन गई है. Pulling away off the back foot very well against the spin. And that cover drive, that was the shot of the day for me, to be quite honest. मज़ा आ गया यार. .53 not out from Babar Azam. It's been a collected knock. It's been a good inning from Babar Azam. And again, 360 from him. He's hit all across the park. यार बाबू की कोई weakness नहीं है. Mid-wicket, long on, through covers, behind 99 square. rating है उसकी FIFA पे. क्या बात है. देख लो आप. Saqib Mahmood back into the attack. He actually had a pretty decent first over. अच्छी बॉल. 4 dot balls and just a 5 coming off of it. Oh, this is the ex-England player जिनको बेचारे को कैंसर Having हो a गया था. biscuit. बेचारे को कैंसर हो गया था and he had to retire. He was a very good player. मैं नाम इसका भी याद नहीं आ What रहा. a shot that Stuart is. Taylor, क्या नाम था इसका यार? James Taylor. James Taylor, yeah, exactly. Dapped a third man from Babar लेकिन वो Azam. खरावात आपने देखा तो उसका खवात जो उसने पहना हुआ था. Nice. 100 up. Look at that. Oh, the the Kalai KG. God. There he The is. Kalai God is in the house. Oye, look at that ring. यार एक तो ये पट्टी आ जाती है हमारी. We're seeing by leg the spin God. Kalai. Oh my goodness. ये तो लेफ्ट हैंड से जाता है. पसीने निकल आए मेरे. जूनियर एसी ऑन करो यार, तुम मार दोगे हमें. पहले ही माहौल खराब हो रहा है इधर. 100 up for Pakistan in 11.1. Mohammad Hafiz facing Junior Saqib Mahmood. Mohammad Hafiz, welcome to the party. He's just picked this from his waist Picked it. all the way over square leg for a half a dozen. गंदी And that's going to be 2,000 runs for Mohammad Hafiz in T20 internationals. And that's probably the shot of the day. It was short. It was too slow and he's just hooked it away. Beautiful shot. For me, the shot of the day is Babar's late cut. यार ये भी not bad. But Yunus Bhai Oh. getting some camera action. Yunus was actually not that good of a Yeah. puller and a White ball player नहीं थे. yeah. No, just like in terms of the shot, he wasn't that great on the pull. 106 for 1. Look at that, 200,003 runs in 93 matches. The rest of the numbers are not. मजे really की बात है, the much. best innings Hafiz ever played in T20 was in a losing cause in that second T20 in India जब हम 2012-13 में गए थे. Right. यार जो उसने मैच में उसको इनिंग्स खेली थी, अनबिलीवेबल स्टफ. अभी भी यूट्यूब पे होगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा. बट साकिब गंदी बॉल यार. एंड नाउ इमीडिएटली अंडर प्रेशर, गॉन फॉर 6 ऑलरेडी. 106 for 1 आफ्टर 11.2. और साथ ही बॉल के पीछे इनके ड्रामे शुरू हो गए हैं कि जी बॉल चेंज करें, हमें बहुत मारे पड़ी हैं, पाकिस्तानी बहुत मार रहे हैं. Yeah, James Taylor has the heart condition, not cancer. He's right, no fell. अच्छा Good point, sorry, yeah. sorry. And Faisal is saying, why is Wasim dressed like an all black? I think he's because he's got the mentality of an all black. भाई वसीम भाई is greater than all of New Zealand put together. क्या हो गया यार ऐसे ना करो. रग्बी के क्यों भाई, क्या है उन्होंने क्या किया? And हॉपिट बना दी तो आपके हीरो बन गए वो साथ ही. what other big shot from Hafiz, but this time it's not going to carry. Just falls in between the fielder in the deep and the circle. He'll come through for a single. Typical Hafiz shot after the 6. And Zakaria saying 200 plus होना चाहिए, मगर अभी मलिक ने आना यार है. 200 प्लस. एक तो पाकिस्तानी एक छिक्का क्या पड़ जाए हम जज्बाती हो जाते हैं. बट एटलीस्ट 200 के 250 होने चाहिए. मैं तो कहता हूँ बहुत कम बोल दिया आपने.
Look at that, Shoaib Malik and Hafiz, the leading run scorers for Pakistan. और उमर अकमल, अहमद शहजाद, जितने रन उन्होंने 80 T20 में किए, 90 120 में किए, बाबर ने 40 में कर दिए. 20 टुंटों में, 20 टुंटों में. Look at these numbers. 20 टुंटों में. What a beast. Babar's numbers are astonishingly good here. Azam cuts this away this time in front of point and come through for a single. तो वनडो टेस्टों के बाद अब 2020 में हाँ, I think we 2020. need to add that to our library. Of course we need that. Vocabulary to be quite But honest. बाबर आजम के बारे में हम यकीनी तौर पे कह सकते हैं कि वो एक कौमी हीरो है. 100% यार, कोई डाउट ही 108 for नहीं. 1. Numbers for England looking pretty bleak. Just a 1 wicket for Adil Rashid. Gregory 2 for 16. Tom Curran 2 over 16. Jordan 2 overs 20. Moeen Ali 1 over 10. And Saqib एक Mahmood. भी वही मैं कह रहा हूँ ना, कोई extraordinary bowler नहीं, बस the run of the mill players हैं. You need some, but again they're missing the likes of Ben Stokes. चलो Missing the यार, likes of Chris Wokes. This is England's B side. इतने भी B side नहीं है The यार. bowling is definitely B side. यार उनका वनडे एक ही स्टार बॉलर है, जोफ्रा पेसर. Jofra, Wokes, Stokes. दे आर हिटेबल बॉलर्स यार. I don't think Wokes is hittable. I think वोक्स हमारे खिलाफ बीस्ट है, वैसे ओवरऑल इतना बीस्ट नहीं है वो. 108 for 1 after 11.4. This has been just inside edge, trickles down to square leg. 109 for 1. Ooh, overthrows as well. 109 for 1 after 11.5. bit of a heart attack there on the technical side of things for us in the comm box. 109 for 1 after 11.5. Nice brisk pace. This is a good match set up for Pakistan now. We're looking at a good contest. अब this मोमेंटम evening. नहीं लूज करना है यार. इधर से आपने गिरफ्त में कर ली है गेम. कोई एक दो खराब ओवर करा के डोंट ब्रिंग इंग्लैंड बैक टू द गेम. जस्ट गो इन फॉर द किल, गो फॉर द थ्रोट. Gotta get the moments. 109 for 1. Cut away from Babar Azam, close to his Oi. body, straight to backward point, and he'll still get a single. नहीं नहीं. No, no, he's come That's why back he's for it. upset. कहता है यार चौके वाली बहुत ही. He Cursing just himself. had to miss that fielder and it was going to be a 4. यही लगन होती है और यही मेहनत होती है और यही ambition और obsession होती है. क्या बात. That makes you from a good player to a world class player. क्या बात. 109 for 1 after 12. Babar 55 of 42. Run rate of 9.08. Pakistan going along very nicely. मतलब खड़े खड़े ही हमको 180 मिल रहे हैं. So just push that up, get another 20 runs extra, get that magical 200 mark and really put England under severe pressure. 109 for 1 after 12. Yeah, Akib Khan on YouTube saying, is your site down? The site is going through a little bit of repair right now. Refresh हो रही है. Unfortunately, I think we've got a bit of an influx of listeners. You can stay on YouTube and we will read your comments off YouTube right now. There's a bunch of you now on there as well. And if you're on Arena, if you're on our website, that's fine as well. Thank you for joining us on Change of Pace Live today. 109 for 1. मार Full यार. toss from Mohammad Hafiz. Does not get a hold of it. Goes to long on for just a single. यार दो फुल टॉस, हाँ मतलब ऊंची फुल हाई फुल टॉस उसने ज़ाया कर दिया फीस ने यार. 110 for 1 after 12.1. Adil Rashid being put under pressure. 1 for 29 off his 3 overs already. So Babar Get some score going after predictions him. from people over on YouTube and people on our website. What is the score going to look like today? Babar Pulled Azam away. heaves this away and he'll come through for a single यार ये again. बिलिंग्स की फील्डिंग आप देखें यार. Rocket arm. So But he's also fast. a wicket keeper, right? Yes, he is indeed for Kent. Actually, he's the captain of Kent now. The 111 for 1. The Nelson on the board for Pakistan in the 13th over. So going along merrily. Faisal with a good point, saying England's modern stars have not done much against Pakistan, be it Archer or Stokes, as this is pulled away again from Hafiz, this time to long on for a single. सारे half tracker दे रहा है बस deep mid wicket और deep long on लेके. But it's working for them so far. Murshi will not be pleased with the way Rashid is bowling, but he needs to tell Shadab, you have to pitch it up, bhai. The square leg side of that boundary is big, so you're in for wickets if you bowl it in the right areas. Pulled away this time, Babar. It's in the air. Should be taken. It is. There's the wicket that England were looking for. Babar's going to be cursing himself. That was a half tracker outside off stump. The Pakistan captain should have done better, but he doesn't. He succumbs to a poor delivery from Adil Rashid. 56 off 44. Pakistan now 112 for 2. And I think they're going to be looking at a bit of a change in the order maybe, or is Malik going to come I in? think Malik is good against spin, लेकिन अब वही आदिल रशीद का आखिरी ओवर है, so they have to think about that कि फ़ायदा भी है उसको बेचने का. Bring somebody who's good against space bowling. Yeah. But good innings here once again from Babar. 100 का ख्वाब तो चलो अधूरा रह गया. But 56 of 43. 4 उसने हाफ ट्रैकर दिए और हमने चारों का फ़ायदा नहीं उठाया इस ओवर में. I think Morgan is playing today.
There he is, Shoaib Malik and Mohammad Hafiz in the middle. Pakistan fans are going to want to look away. ये तो tweets from 2009 वाला scene हो गया यार. Maybe Sukhail can put one out. Tweets from 2009. Mohammad Hafiz and Shoaib Malik out in the middle for Pakistan. कब जान छूटेगी इनसे यार. Seriously. The run rate of 8.84. Definitely nothing और to... फायदा भी नहीं है क्योंकि स्पिनर के आखिरी 2 ओवर है. मलिक is only good at hitting spin. numbers देखो, ये इस numbers के साथ आप किस तरह इतने मैच खेल सकते हैं? Only in Pakistan. नहीं यार, बाबर is playing at a freak level, वरना ये normal numbers हैं सबके. Who else averages 50? Only Virat Kohli. Yeah, true, and Kale. तो ये ridiculously extreme players हैं ये दोनों. But honestly, a good poor shot from Babar, and I don't Time want नहीं हुई उससे. I don't want to nitpick our best batsman, but he does have. Actually, he should have played this on the off cut. Shot try करनी चाहिए. This was not there for the pull. But Qari Saab coming in, and handy for England, got both wickets. Yeah, and Rashid picking, he's got a habit of picking up big players. Virat and now Babar, 112 for 2, 12.4 overs gone. Deep mid wicket, deep long on, and a deep square in place. All Fine deep. leg in the circle. Just all deep. तो अगर आपने बड़ी शॉट मारनी तो behind point is a region to go. But the half trackers are going to continue. Ooh. No, this is a much better googly from Adil Rashid. मलिक भी इंटरनेशनल मैच कितनी देर बाद खेला? I think since that श्रीलंका series. Yeah. He's got a bandana on. अच्छा हाँ, drop भी हो गया था मलिक, so it's a bit of a comeback for him too. Comeback number 86. हाँ, कितने कर चुका है? Shoaib Malik off the back foot, played away to mid on for a single. Good over there from Rashid, ends his spell on a high note, but he did go for some tap thanks to Fakhar Zaman and Babar Azam. 2 for 32 after 4. Actually, that's fair enough. 8 का 30 तो चलेगा आराम से. They'll happily take a 160 target at this stage. 113 for 2 after 13. 7 overs to go. Predictions ले लेते हैं Musad. A wicket has gone down. I think Pakistan are going to end up with 170 here. यानी 7 ओवरों में 57 runs. Yeah. यानी they'll score at below 9. That's what you're saying. But बाबर कह रहे ये सारे बेकार ने हैं, सारे फारिग ने हैं, सिर्फ मैं ही प्लेयर हाँ. Adil is saying game will slow down now. Both cannot run or hit big. Maybe against spin, maybe against Moeen Ali. वो एलेक्स फर्गसन ने कहा था ना बेकम के बारे में, can't run, can't pass, can't shoot, otherwise he's a good player. Shout out to Saf. What a legend of the game he is. यार प्लीज ऐसे. Of course, जब अजहर महमूद जैसा bowling कोच होगा तो परेशान ही होंगे वो. Venom is saying on YouTube, Hafiz Malik come to India for 2023 World Cup. Oh man. I think India fans are probably hoping for that one. And Akib is saying he's expecting 160, 170. I think we need to cross that 180 तक हमें कम से कम जाना चाहिए. 113 for 2. Gregory back onto ball his third over. Lewis. Poor delivery down the leg side. Ball है यार. Malik does not cash in, but they'll come through for a bye. यार अब ऐसे हलवा बॉलर आप नहीं मारोगे फिर किसको मारोगे यार? अपने आप को या पाकिस्तान टीम के चांसेस को? और क्या? Jordan, Curran and Saqib will probably bowl the final few overs. All very hittable. अगर one of these, one of the cricket writers that I really admire is goes on Twitter by the name of Cricket Wala. I'm sure you've seen him. वो अयाज मेमन यार वो भी एक फिल्म है. उसकी एक ट्वीट मैं आपको दिखाऊंगा बाद में. And he said on Twitter right now that Babar Azam has a high and aggressive standard of excellency, and I don't think there's a better way to explain Babar Azam. Ooh, squeezed away to point. Quick single there between Hafiz and Malik. That ball a bit of reversing. ये क्या हुआ था? बॉल थोड़ी अंदर आई थी पिच को लग के. Yeah. So good bowling here from Gregory. अब मसला ये कि ये दोनों अपने selfish player हैं, अपने लिए खेलेंगे. Hafiz 16 of 12, Shoaib 1 of 2. This is the key stage of the game where we cannot lose the momentum that Babar and Fakhar have created. रन बॉल वाला काम नहीं, हमें वही 8 to 10 रन्स पर ओवर स्कोरिंग करनी पड़ेगी. पार्टनरशिप बनाने का फ़ायदा नहीं है. पूरी बैटिंग पीछे पड़ी, खुल के खेलो. शदाब है, इमाद है, इफ्तिखार है, रिजवान है. बल्ला उठाओ और मारो. ये देख यार ये क्या बैटिंग कर रहा है मलिक. इनसाइड एज फॉर अ डॉट बॉल, अ प्रेशियस डॉट बॉल. They're screwing the momentum away that Pakistan have created. 116 for 2 after 13.2. I think to give them a bit of the benefit of the doubt, शायद बल्ले पे नहीं आ रही ball, just gripping in the pitch. But that is where you have to show your experience कि भाई हमें पता है कैसे खेलते हैं इन conditions. 113 point. हर साल तो आप इंग्लैंड जाते हो और अब भी आप used to नहीं हो pitches के, फिर फायदा क्या हुआ फिर? पिचात. 116 for 2 after 13.2. Shoaib 1 of 3. Hafiz 16 of 12. Gregory coming in. Dab down a third man should come through for a single. यार ये क्या सिंगलें निकाल रहे हैं यार. रन रेट की MBA कर रहे हैं, गलत बात है. बल्ला उठाओ.
ग्रेगरी ने यार बच बचाव करा लिया. 2.3 overs, only 0 for 20. We need to start hammering him. Current projected score is 173. I think Pakistan will take it, but they'll be disappointed. I think 182, that will be a formidable score. Iftikhar. I think Pakistan should have been a little bit more flexible with their batting order. यार थोड़ा सा मैच सिचुएशन को recognize भी करो ना. Big shot from Hafiz. I think this is going to be clearing long on. No. Ooh. Manages to just clear the circle and will come through for a couple runs. Long on उन्होंने नहीं रखा हुआ था. That was going to be a straightforward catch. But another 2 runs. Hafiz completely mistiming that shot. ग्रेगरी ने यार अच्छा ओवर करा दिया. अब इफ्तिखार और शादाब बैठे हुए हैं. यंग गन्स जो हैं थोड़े बहुत relatively compared to these guys who are hungry and looking to bat. Iftikhar, we saw that cameo in Australia. He played really well. Mahapili is absolutely losing it. She's saying, when will the damn management see these singling? Yeah. Cut away this time by Mohammad Hafiz. Straight to the man at point. The dot balls are racking up here. No fellas saying, and for the next 3 overs, it will just be adapt to third man. That's exactly what's happening. उनकी strike आदिल कह रहे हैं retire out हो जाए. Short range ही नहीं है. वही जो हांगकांग सिक्सेस में होता है 30 रन करो retired hurt हो जाओ. इनसे 10 भी हो जाए और इनसे retired hurt करवा लो यार. And Umair Abdullah in all caps saying, I do not hate Hafiz and Malik, but please जान छोड़ दो. खुदा का वास्ता. 119 for 2, last ball of the 14th over. सारा ओवर उसका पी गए हैं यार ये लोग. अजीब बेगैरत हमारे ये सीनियर्स हैं कसम खुदा. Bunch of comments coming in on YouTube. Faraz is saying, if we get something over 160 plus, we should be surprised because these two play for themselves. ये देखो यार. I don't even know what to say about this. फिर आप कहते हो ये हमारे कौमी हीरो हैं यार. मैंने कब कहा है? 14. आपने 1000 दफा कहा है. I've given up. 14 overs gone. 119 for 2. Khwaja, I'm leaving you with Ahmed Junior. ये क्या बात हुई? For the remaining 6 overs. ये क्या बात हुई? चेंज ऑफ पेस ही हमारा बंद हो गया इनके 1 ओवर की वजह से. साकिब महमूद 2 overs for 15. मोइन अली के भी यहाँ बॉलिंग नहीं दी मोइन अली को. इंटरेस्टिंग. क्रिस जॉर्डन 2 for 20. यार लुइस ग्रेगरी 3 over 22 रन यार. That's a war crime to let him get away with them. हाँ. Unbelievable stuff यार. टॉक्सिक पार्टनरशिप है यार. इतनी टॉक्सिक पार्टनरशिप है कसम खुदा की. $119 for 2. Assalamu alaikum everyone. This is Ahmed Junior in. जूनियर क्या हाल है भाई? Alhamdulillah. आज आप भी मैच देखने आ गए मेरा. जी बस 119 for 2. Shoaib Malik 2 runs off 4 balls. Will Hafiz hanging around 18 runs on 15. वजह ये क्या हुआ है? ये दोनों डायनासोर आपने भेज दिए इधर. मैंने भेज दिए यार. another one squeeze, single squeezed away to square leg. इन दोनों का प्लान क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है. एंड इट्स क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग टू बी ऑनेस्ट. आपके पास 1 2 3 4 रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन पीछे बैठे हुए हैं. शदाब, इफ्तिखार, रिजवान, इमाद वसीम भी बैट्समैन है यार. I was looking at the PSL stats today. I was like, you know what, T20 is coming up. लोग हैदर अली के बारे में बात करते हैं. हैदर अली has really impressive numbers in the PSL as well. और जब आप देखते हैं PSL के भाई आप भूल जाते हैं हम लोग शदाब ने अच्छा खासा PSL खेला है यार. शदाब आपका 4 पे बैटिंग करे यार रेगुलर T20 में. उसने बैटिंग की. I think he was the 3rd highest Pakistani over there, the 2nd highest after Babar Azam. बिल्कुल आप सही कह रहे हो. तो वो भी एज अ कैप्टन. Exactly. चलो ठीक है. वो इस्लामाबाद United boshed down the ground by Hafiz. 1 bounce, 4 finally connects. And now they're finally on their way. 124 for 2. Gandhi ball way back of a length. And Hafiz just rocks back and slaps it tape ball style over the bowler's head. Good shot, but is it too late? क्या momentum पाकिस्तान lose कर चुका है? अच्छी shot थी. Timed What beautifully. connection on the bat. Perfect. इफ्तिखार definitely I agree. इफ्तिखार को आना चाहिए यार इस स्टेज पे. यार ये आकिब खान का कमेंट. अच्छा ठीक है. बट एक चौका क्या मार लिया. हफीज खुश कितना हो रहा है. देखे वो भी शॉट देखी. कितनी जबरदस्त शॉट मारी भाई. अगर हफीज भाई ऐसे 2-3 और मारते तो व्हाई नॉट. दिस हैज बीन यार. ये देखो पुल मार रहे हैं और वो लॉन्ग ऑन पे चले गई ये बॉल. ये कौन सी क्रिकेट है यार. 125 for 2. हफीज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विद हिमसेल्फ. एग्रेशन. आई थिंक ही इज फीलिंग द गाली गलोच जो 200 मिलियन पाकिस्तानी उसकी तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं ओवर द अटलांटिक ओशन. 125 for 2. यूनुस खान भी अपने क्या स्केच बना रहे हैं. ड्रॉ मी लाइक फ्रेंच गर्ल्स वाला सीन कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं. बट लुक एट द स्ट्राइक रेट यार. 147 इज नॉट गुड इनफ. वी नीड टू बी गोइंग एट 200 एट दिस स्टेज. इतनी बैटिंग पीछे पड़ी और आप ऐसे ही बॉल रोक रहे हैं. It's a little concerning for the strike rate to go down a little bit and run rate to go down, to be honest.
Oh, that's a short ball and way too high, given as a wide. तो extras तो हमें 100% Talking about कबूल है। Shoaib Malik, यार ये सारे hittable bowler This हैं is यार। Shoaib Malik's season, you know. This is when the CPL usually happens as well. This is where he's supposed अच्छा to वो make his चाहता मैं runs. जमाइका में होता है, वो पाकिस्तान के लिए भाई इधर अगर खेल रहा है। जमाइका में बनाए तो इधर भी बना लेगा, बनाए तो सही ना, बस ये है Shoaib ये Malik जमैका का- शमैका में ही अब स्कोर कर सकते हैं, इंटरनेशनल हाँ। लेवल पे ये खत्म हो गया है। Let's say ख्वाजा बल्कि ये 5-6 साल पहले ख़त्म हो गया था, हम फिर भी इसकी कारकस लेके घूम रहे हैं। वो द मम्मी फिल्म नहीं थी टॉम क्रूज की, ये वही वाला है। 126 for 2 after 14.3, शोएब 3 of 5। ये देखो यार, सर्कल नहीं क्रॉस कर रहा यार, ये काम तो शाहीन भी कर लेता आके। ये क्या कर रहा है बैट्समैन? I don't know, I just feel that we should have sent Iftikhar, Imad, Shadab, यार one आप of the three. पीटीआई, आप पीटीआई के वोटर हो, आप बात करो अपने एमएनए से। कौन है आपके एमएनए? फैसल वावडा है, क्या नाम है उनका, आपके मोहल्ले के? उनसे बात करो यार, नेशनल असेंबली में आवाज उठाएं इसके खिलाफ। अजहर महमूद कह रहे लुक माय कोचिंग इट्स यार वर्किंग। देखो हमने अजहर महमूद भी दिए इंग्लैंड को, और क्या चाहिए था? This was the perfect ये plan. भी दोनों पैकेज डील में दे देते, बाय वन गेट टू फ्री। 127 for 2 after 14.4, हफीज ऑन स्ट्राइक अगेंस्ट साकिब। यार उसके 23 रन इन ओनली 3 overs यार। Bashed again down the ground. Oh, over the fielder. One bounce for another boundary for Pakistan. शुक्र है साकिब भाई ने अपनी पाकिस्तानियत रियलाइज की और वो कह रहे हैं यार मैं कुछ देखिए, चौके खा look at लेता the हूँ। smile on बहुत Hafiz's गालियाँ पड़ी हैं face. मेरे कौमी हीरोज को। Look at the smile on Hafiz's face. खुशियाँ आ रही हैं भाई, चौके मार रहे हैं हफीज भाई ने शुरू कर दिया है मलिक साहब की। यार इतनी फारिग बॉलें और इतने फारिग बॉलर देखिए हैं आप, ये गलत बात है, उसने रन बना ली तो फारिग बॉलें हो गई हैं, ये तो ज्यादती है। यार। जो वो 10 बॉलें आपने खाई हैं उनका कौन जवाब देगा? जवाब दें, हमें साहब जवाब दें। दे रहा है ना जवाब, क्या हफीज कर दे रहे हो रहा है। आप? कैप्टन टॉप उनके मारे भाई इधर तो कमेंट्स आ रहे हैं कि प्लीज आउट हो जाओ। बिल्कुल हो जाए यार, दोनों हो जाए, मैं तो कहता हूँ। बेसबॉल होता है डबल प्ले, 2 विकेट कोई वाला सीन हो जाए इधर। टच एंड और हिटेबल शॉर्ट बॉल्स। वो इतनी खराब बॉलिंग करा रहा है वो लड़का, लेकिन बंदा क्या करे यार। 131 for 2 after 14.5, लास्ट बॉल ऑफ द 50th ओवर। थोड़ा सा रिकवरी होगी क्योंकि साकिब भाई ने थोड़े हमें से बफे बॉलिंग कराने, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट। आखिरी बॉल इसके फेरी का चौका निकाल दो और आप फिर रिटायरमेंट ले लो इस मैच के दौरान ही, जैसे अफरीदी ने ली थी टेस्ट मैच के दौरान। तो क्या ही बात है। YouTube's a little concerned that if we get over Pulled away 160 to plus. deep square, सिर्फ एक रन। 132 for 2। भाई फराज भाई YouTube पे कह रहे हैं कि if we get 160 plus it's gonna be a surprise। नहीं यार ऐसे तो ना करो, it's already 132 for Yeah, 2 in 15 overs। If we only get 160 तो फिर वो तो they're in the game भाई। Yeah, definitely। इतनी उनकी बैटिंग है। I mean look at predict rate, it's 191, so Dilvish should be at least over 200 easy। Come on man। दिलविज तो पहले ही टोन हुआ होता है भाई हमेशा आप की लोग भी तरह। अपनी predictions दें। What are your predictions on YouTube and on the Change of Pace website? 5 Please let over, us know। सिर्फ 2 विकेट गिरी, 5 ओवर पड़े। in 5 overs you should make at least 70 runs यार, to be quite honest, I'm not kidding। I mean पूरी yeah, बैटिंग 70 आपकी पड़ी है यार, पूरी बैटिंग। चलें आप और बताएं बॉलर ना। भी हल्के हैं यार। आपने स्कोर नहीं बताया, आप बताएं। मैं कह रहा हूँ वी शुड मेक 185 कम से कम यार। 132, 5 ओवर में 60 रन, आपकी इतनी विकेट पड़ी हैं प्रेडिक्ट विज 190 कह रहे हैं, तो आप प्रेडिक्ट विज से कम यार। दें। ये प्रेडिक्ट वे से ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये जान के एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट देता है हमेशा। ये रॉ ने बनाया हुआ है। Keep the hopes high। यार टॉम करन जैसे ऐसे बॉलरों को आप नहीं मारोगे तो फिर किसको वैसे मारोगे? वाकई आज हमने देखा कि पाकिस्तान 132 for 2, so last 5 overs in, send us your scores in। और हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड की बॉलिंग आप देखें सब घबराए हुए हैं थोड़ा। Tom Curran coming in and Hafiz just nicks it। यार क्या लॉन्ग ऑन पे सीधी बॉल यार, कम ऑन, जस्ट टेकिंग अ सिंगल। 133 for 2 after 15.1। शोएब, उसका स्ट्राइक रेट भी अभी तक 100 नहीं हुआ यार। ये बंदा 4 पे खेल रहा है हमारे लिए। And Nofel in the 20 comments में। is surprised that Azhar Mahmood is England's coach। भाई अभी तक 16 ओवर हो गए उनके, एक भी फास्ट बॉलर ने विकेट नहीं ली। तो आप देख लें इमीडिएटली वो डेविस्टेटिंग इफेक्ट अजहर महमूद गूफी साहब का इंग्लैंड की बॉलिंग पे पड़ चुका है। रमीज हसन का कमेंट आया 185 195। यार रमीज भाई इतना सेफ नहीं बताएं, एक नंबर बताएं। 10 रन आपने ऊपर नीचे T20 क्रिकेट में इतना तो मार्जिन ऑफ एरर तो गलत बात है। आपने एग्जैक्ट नंबर देना है हमें। 133 for 2 after 15.1, cut away by Malik to deep point। This is only going to be a single। oh they're running for 2, could it be a run out? oh out हो गया। I think so, but बेस्टो की बॉडी लैंग्वेज मुझे लग रहा है थोड़ी डाउन है। मे बी हफीज़ dive got actually Malik's dive got him there in time, but if he's not timing he can at least run hard।
लुक एट द रीप्ले, उसकी कॉल थी Oh, मलिक no. की, थ्रो पे भागा है, आई थिंक पहुंच जाएगा मलिक कितना अगर मलिक की athlete कॉल तो थी है। और मलिक ने ही आउट कर दिया अपने आप को, suspend किया। मलिक इज he's missed it. जॉनी बेस्ट, ये एक्चुअली टैक्टिकल हरकत की है इंग्लैंड ने, उन्होंने कहा इसको आउट नहीं करो, इसको खेलने दो, ये बॉलें खा रहा है, उसने जान के बॉल उसने मिस कराई है। गुड थिंकिंग फ्रॉम जॉनी बेस्टो। 7 of 7 is Shoaib Malik, 136 for 2 after 15.2, रन रेट ऑफ 8.87। यार थोड़ा सा फिर डाउन भाई हो रहा है। फराज भाई का कमेंट आ रहा है, हफीज गेटिंग गिफ्टिंग हिज विकेट टू पार्ट टाइम स्पिनर्स इन 2019 वर्ल्ड कप स्टिल हर्ट्स। यार छोड़ो यार, अब बंदा क्या बोले। फुल टॉस। Oh yes baby, look at that Hafiz. नहीं नहीं नहीं, He's headed for a 6. और नो बॉल भी है। Oh yeah. ये हुई ना बात। प्रोड्यूसर साहब यार ने ये डरा ऐसे दिया, बॉलर प्रोड्यूसर है, साहब ने कहा कैच है, मैं चुप हो गया, मैंने कहा ये क्या हुआ है। ये ऐसे बॉलर है, उसकी मूंछें ही देख लो यार, ये इस किस्म के बॉलर है यार। यार इनको फेंटे पड़ने चाहिए, ये टॉम करन है कौन? How dare Mohammad you? Hafiz. And ये this is देखो it. यार, That 6 is gonna take him. 130 की फुल टॉस दे रहा है वो, flies way back into the deep fine leg boundary for a huge 6. That- Stands में जाके गिरी है बॉल। It's a 6, it's a no ball, and that means Hafiz is gonna go to the 2023 World Cup. That's it. यार तुम साथ ही उसकी टिकट पंच कर दो। भैया आपको पता है कल टिकट का फौरन पता नहीं, मिल अगले जाती है। महीने का पता नहीं, तुम 3 साल बाद उसको वर्ल्ड कप भेज रहे हो। हद होगी जज्बाती फैन होने की। But a free भाई hit for हफीज भाई का Pakistan. जज्बात आए हुए। हफीज is 35 runs off 21 balls while Shoaib Malik is just hanging around there 7 off 7. Yeah. And this is a free hit, and we all love free hits. अब देखते हैं करता क्या है, फ्री हिट पे है। Tom Curran coming in. Wide ball smashed over extra cover. That is going to be a 4. Beautiful shot, Mo Hafiz. यार मैं तो हमेशा से कहता हूँ प्रोफेसर प्लेयर है आप। This is भाई it. लाहौर कलंदर The का यार tables have turned. कौमी हीरो है हमारा यार। Beautiful shot there from Hafiz, just slams it over extra cover. Lovely timing and beautiful. पर यार beautiful, देखना पड़ता है कि चलो वो भी काफी टाइम बाद खेल रहे हैं T20, तो हम भी थोड़ा जल्दी जज कर लेते हैं। beautiful shot. और वाकई अब कहना पड़ेगा कि हफीज is playing the innings वैसे अगर ये that he छोड़ needs to देता, play. ये छोड़ देता वाइड पे एक और फ्री हिट मिल सकती थी। अब But ये तो खैर है no यार, worries. It's fine. Already very expensive over. Pakistan 147 for 2 and 15.3. We're going on a run rate of 9.48. 185 तो वो भी अब हाँ। आउट ऑफ स्कोप हो गया सीन भाई, अब तो 200 करने ही करने। ओ अब भाई इरफान शबीर का कमेंट आ रहा है, अब 200 कर लें। अब कर लेते हैं। Look at that, pulled away once again to deep fine leg. Square leg, gets around. Slower ball थी, अगर full speed देता तो definitely would have gone away. England under severe pressure, Benton के तो बरकस बना दिया है। 148 for 2, 2 बॉल रह गई अभी भी 16वें ओवर में। शोएब मलिक, look at that running, और ये बेयरस्टो, that could be a very big moment in the game. एक विकेट गिर जाती तो बेचारे बॉलर का भी कॉन्फिडेंस बन जाता, but in the end he lost the plot. Ramiz And that Hassan. extra run given away, that was an overthrow, brought Hafiz back, and then he got a no ball which he smashed for 6. Watch a comment coming from Ramiz Hassan. जी Hafiz is our national asset. और यार हद हो गई यार ऐसे, इसलिए तो पाकिस्तान का ये हाल है कि ऐसे असासे हैं हमारे। 148 for 2, almost reaching 115, just the 16th over. Pakistan in control of the game. This has been squeezed away to point for third man for a quick single. Some चलो comments ठीक है coming यार। in from Adil Momin. Yaar, Malik needs to get out. हम तो कह रहे हैं यार मलिक को तो जल्द से जल्द आउट कराएं। पहले दोनों आए हैं, दोनों काफी स्लो खेले हैं, पर हफीज we just saw हफीज ने that cover he कर just लिया। picked it up real quick. Look at this over 1-3-6, a no ball 6 and a 4 right after that and 2 singles. प्रोजेक्टेड स्कोर 188 तो खड़े खड़े हमारा बन रहा है। इफ वी गो at 12 over it will be 199. I mean, Dilviz is saying वेरी पॉसिबल Why यार। not? Dilviz is saying 200 from my side. आप क्या कह रहे हैं? यार मेरा भी दिलवेज कह रहा है कि 210 तक खींच लो। Pulled away by Hafiz, and that's gone for 6 once more over square leg, smashes it over top. Tom Curran being destroyed. 155 for 2, 16 overs gone. Mohammad Hafiz, मैं तो हमेशा से कहता हूँ, मैं इतना बड़ा फैन हूँ इनका। Hafiz 46 of 24. We were talking about Babar Azam's 50. Hafiz is only 4 runs away from his 50. मुझे लग रहा है कि अजहर महमूद might be getting fired right after this over. क्या था यार तुमने ये क्या बॉलिंग करवाई? Sacked in the moment. Unbelievable shit show from the England Pacers here. Unbelievable. ये देखो, And look at that Burj Khalifa on the flow chart. ये तो मीनारे पाकिस्तान है यार, थोड़ी देसी तड़का लगाओ। बुर्ज खलीफा तो अभी आने वाला है। बुर्ज Usama Zaka in the comments is saying करण के गोडे दर्द हो रहे हैं। गोडों का पानी निकल आया बेचारे का। ही नीड्स some गोडा पानी, एनर्जी ड्रिंक। And a good question for Venom. David Willey is a better bowler. Why is he not playing? I don't understand यार, ये ग्रेगरी और ये इन सब टेढ़े मेढ़े को क्यों खिला रही है? He was in भाई, prime form. उनकी जो बॉलर है उन्होंने नहीं खिलाया, उनकी गलती है। हाँ हम नहीं जानते। ये हमसे मत पूछो। हमने भी तो हसनैन नहीं खिलाया,
वहाब नहीं खिलाया, हाँ, बट इसको खिला दिया शोएब मलिक को. शोएब और मलिक और हफीज को हमने खिलाया, so that's more than enough. Chris Jordan also getting hammered, gone for Is 20 in his Chris 2 Jordan overs. the senior player, the senior हाँ. bowling advisor of this team? Experienced bowler uncle. Look at that run rate, 9.69, 155 for 2. I think 4 ओवरों में 40 से 195 तो बनते ही बनते हैं. But we should Saeed Bukhari ideally saying- get 50 runs of the last 4. Hafeez Babbar Sher. Oh, shot! Shoaib Malik smashes over the top. 1 bounce, 2 bounces over the ropes. Beautiful chop mid off in the circle and another 4. Shoaib, यार मैं तो हमेशा से Talking about lines. मैं सियालकोट शहर मेरा फेवरेट शहर है पाकिस्तान में. I love सियालकोट. And खैर यार. the tables are turning. Hafeez Babbar Sher थे, मलिक भी Babbar Sher. ओए ओए ओए. बट पुअर डिलीवरी एक्चुअली. आप अगर आपने मिड ऑफ सर्कल में रखा हुआ तो इतने मुंह में बॉल क्यों दे रहे हो? दैट वाज एन इजी बाउंड्री फ्रॉम मलिक. एक्सपीरियंस बैटिंग और फाइनली अब ये पार्टनरशिप थोड़ी डेवलप हो गई है. और मे बी वी आर सीइंग कि लोग कह रहे थे कि बाबर ने कहा था मुझे मोहम्मद हफीज़ और शोएब मलिक टीम में चाहिए. आई डोंट एग्री टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, Why बट not? If they अगर do वो the काम job. चल रहा है, अगर बाबर खुश है तो हम भी खुश हैं. I mean, look at Hafeez right now. 46 off 24 balls. That's great. 159 for 216.1. Short ball, slower ball in fact, just dribbles over his head and is given as a wide, way too short. And once again England bowlers under severe pressure. हम आपको याद दिलाएं 10 extras already given away and उनके फास्ट बॉलर एक भी विकेट नहीं ले चुके अभी तक नए बॉलिंग कोच के. ये हमारा नाक कटवा रहे हैं. अजहर भाई क्या कर रहे हैं आप? नहीं नहीं यार, बहुत अच्छा कर रहे हैं यार, हम खुश हैं. A comment coming in. बहुत मजा आ रहा है. वी आर प्राउड ऑफ यू. अदनान समी के बाद मेजर अजहर महमूद हर जगह आप हमने. Khwaja comment coming in. You have to Seeing, bring down the queen. 160 for 2 after 16.1. Partnership 48 of 25. Full toss, bash through mid wicket. Will that be in the gap? Oh, good fielding there from Tom Banton. But another 2. The 50 partnership has come off of 26 deliveries. यार जिस तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया था, जी, वो जी. जो 2 ओवर 3 ओवर रोक रहे थे, फिर जो उन्होंने स्पीड पकड़ी है जैसे मियां साहब के मोटरवे पे निकल गए हैं. बाकी सही बात है. And look at that. 31 of 13 in this partnership is मोहम्मद हफीज. शोएब मलिक पे उन्होंने एक्स्ट्रा जूम क्यों लगाया हुआ है और हफीज को पीछे क्यों खड़ा किया हुआ है? ये क्या सीन है? It doesn't matter as long as the runs are coming. वो Khwaja. देखो इंग्लैंड कोचिंग स्टाफ की शक्ल देखो, रोने वाले हो गए. England परेशान है This और bloody is an absolute Azhar fraud. Mahmood cannot be seen anymore. Lovely shot, Malik. Oh, he has been caught at extra cover by the captain of England, Owen Morgan. लेकिन अच्छा ही हुआ, आउट हो गया, जान छूट गई. यार अच्छा तो 14 नहीं हुआ of यार. 10. कर लेता, एक दो छक्के मार लेता, हमारे दिल खुश हो जाते. उसने इतना भी कर लिया, बहुत बड़ी नेमत है उसकी भाई. Shoaib Malik 14 off 11 while we have Mohammad Hafeez on the other end. यार हिटेबल बॉल थी यार. मिड ऑफ भी सर्कल में था. यू जस्ट हैड टू बीट ओवन मॉर्गन हु barely hung on at extra cover. A vital wicket for England and a wicket for Azhar Mahmood finally in the 17th over of the match. 162 for 3 Pakistan, 14 off People 11. are complaining. Gopi Gawal, yeah, he's saying the bowling is so shit. It is shit to be quite frank. है ही टॉम करन, जॉर्डन, यार ये सारे आप मार सकते हो इन बॉलर्स को. और शुक्रिया हफीज साहब भी थोड़े फॉर्म में आए कि मोइन अली भी अपनी एडवाइस दे रहे हैं उनको. इफ्तिखार द 28-year-old टीनेजर आ गए हैं भाई देखें, इफ्ती चाचा जो भी उनकी एज है ना, हाँ. रन्स बनाती हैं. रन्स कितने रन्स बनाए यार, उन्होंने? कराची किंग्स के लिए बनाए हैं ना उन्होंने. कब बनाए हैं यार? अभी पीएसएल के अंदर नहीं बनाए. नहीं. जब भी लोअर एंड के अंदर आए छक्के छुक्के मार. मुझे लगता है आप इमेजिन कर रहे हो उनके रन्स. ऐसे कोई रन्स नहीं उनके यार. ऐसा ना करो यार. But a best of 62, that was a very good innings against Australia. Good strike rate of 141. Never underestimate. इनकी भी एवरेज 55 एवरेज चल रही है भाई. यार 55 एवरेज चल रही है, अच्छी खासी है. So Pakistan And he's right a bit now- of a मिसबा क्लोन. वही एक उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, वही बैटिंग स्टाइल है, तो शायद कोच मिसबा इसलिए उसको प्रेफर करते The हैं. fast bowler finally gets the wicket. वो भी मलिक की Jordan. जिसको आप वैसे ही आउट कर लो. Driven hard down the ground. Iftikhar gets off the mark. Simple, straightforward signal to mid on. 163 for 3. 2 overs left in the 17th over. What's the Pakistan score well predictions? set. यार 195 मुझे लगता है करना आप पड़ेगा. 195 कह रहे हैं. So और अगर हम 195 नहीं डिफेंड कर पाए विद हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, शदाब खान, फिर तो देयर इज़ नो एक्सक्यूज. वी कैन ओनली ब्लेम द बॉलिंग. बैट्समैन अपना काम करेंगे. ऊपर से पार्टनरशिप लगी, फिर बीच में हफीज़ और बाबर ने मोमेंटम रखा. मलिक और हफीज़ ने भी अपना कवर कर लिया था विद द ब्रिस्क पार्टनरशिप. सो देयर इज़ रियली नो एक्सक्यूज फॉर पाकिस्तान नॉट टू टेक कंट्रोल ऑफ दिस गेम. Slower delivery on middle stump, just flicked it to deep square leg for a single. थोड़ी सी एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं अपने क्रिस जॉर्डन. He's played a lot of T20s all over the world and played a lot of T20 internationals for England.
163 for 3. Has Chris Jordan played the CPL? हाँ खेला होगा, Yeah, डेफिनेटली खेला होगा उसने. वो तो है ही बेचारा बारबाडोस का. ही इज फ्रॉम द सेम आइलैंड एज जोफ्रा आई बिलीव. आई थिंक दे माइट हैव इवन गॉन टू द सेम स्कूल और समथिंग. मुझे इतना पता है क्रिस जॉर्डन और आपकी फेवरेट है रिहाना बाजी. दे वेंट टू द सेम स्कूल आई बिलीव. वो वाली रिहाना नहीं, रिहाना रिहाना. Yes sir. वो Hafiz साथ ही खुश हो 46 जाओ. off 24 balls. Ooh, good Yorker there from Jordan. Just a single, so a good finish to the over. थोड़ा सा इनिशियल मार पड़ी बट क्रिस जॉर्डन ने अच्छा कवर किया. एंड पाकिस्तान नाउ लुकिंग. ओह शान मसूद और जिमी Also the गप्पे मारते हुए. ये क्या हो रहा है? इंजेक्शन तो नहीं मार रहे उसको? अच्छा ईयर पीस लगा रहे हैं यार बेचारे. यार it's good. शान मसूद को पहले नाइटमेयर आते होंगे जिमी एंडरसन के, और उसके साथ ही उन्होंने कमेंट्री पे उसको लगा दिया. The two legends. और हमारे चेंज ऑफ पेस ने उनकी फोटो ट्वीट की थी. मैंने कैप्शन लगाया वो जो नहीं थी गेम निंटेंडो पे डक हंट. 165 for 3 after 17 overs, only 3 overs to go. जेम्स एंडरसन का होम ग्राउंड, उसको एक बॉलिंग एंड भी उन्हें दिया है. तो जेम्स एंडरसन एंड ऑफ कोर्स यार 600 विकेटें हैं बंदे की यार. बट गुड टू सी आवर प्लेयर्स गेटिंग इन्वॉल्वड इन द मीडिया एज वेल. अच्छा है यार, एक पॉजिटिव पाक पॉजिटिव इमेज आपकी प्रमोट होती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं. साकिब स्पीकिंग ऑफ पाक पॉजिटिव coming on to bowl his final over, gone for 28 in his 3 overs. He's a young bowler, has some pace. थोड़ा सा इसकी bowling इतनी perfect नहीं रही है, but he's a decent prospect. How do you rate him as a bowler? Like, do you think यार pace है, improve कर सकता है. Main चीज़ है कि जी speed है और accurate है. अब वो line length उसको थोड़ी अपनी ठीक करनी, वो कर लेगा with experience. अजहर भाई या तो करा देंगे या उसका career ख़त्म कर देंगे. But जो हमारे इंग्लैंड के selector बैठे हुए James Taylor looking a bit concerned after his bowlers are getting smashed. Here comes Saqib, wide ball edged through to third man, but only a single. Iftikhar bhai bhi chalo strike to rotate kare, ball नहीं जाया कर रहे. Things have slowed down a little bit, just a little singles and doubles coming in around. हाँ थोड़ा सा उन्होंने इंग्लैंड ने थोड़ा रिकवर कर लिया. Of course up and down होते हैं T20 innings. नहीं ना, हमें down नहीं चाहिए ख्वाजा. This is T20 cricket. We need the sixes and we need the fours. 166 for 3 after 17.1. हफीज़ needing 50. यार हमें पता भी नहीं लगा वो 2 ओवरों के मार से हफीज़ भाई तो 50 पे पहुँच गए हैं. तो उन्होंने भी अपना एंड कवर कर लिया है. टू बी क्वाइट ऑनेस्ट काफ़ी तनकीद हमने भी की है कि भाई हैदर अली को क्यों नहीं चांस दे रहे. बट हफीज़ जस्टिफाइंग हिज स्पॉट इन द साइड. दिस इज बी फ्लिक्ड अवे. One bounce over the ropes. Beautiful shot. That lap sweep that Hafiz really loves. 50 up for him. The experienced campaigner. The shot, yeah. मतलब मजा आ गया. और ये जो स्टाइल है हफीज भाई का, ये ले डबल फिस्ट पंप, एलिक हैविक. एंड यूनुस भाई तो स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं जैसे पता नहीं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आ गया उधर, जैसे कौमी तराना बज रहा है. हफीज ने बता दिया, सिलेक्टर्स को बता रहा है हफीज के भाई सिलेक्टर ही तो उसका कोच है, तो वो कोच को गालियां दे रहा है. एवं आप पेंडोरस बॉक्स खोल रहे हैं इधर. एवं कंट्रोवर्सी हो जाए, कहेंगे इजी हो जा खड़ा रहे लगा रहे. बट यूनुस खान इतने वैसे enthusiastic बैटिंग he is doing his job buddy. भाई ये स्कोर करेंगे तो उसकी जॉब भी सिक्योर होगी ना, समझा करें ना. Absolutely. ये 90 चेस खेल रहे हैं यूनुस भाई. Everything is connected here. Hafiz with his 12th international ये T20 क्या आप इंसेप्शन देख रहे थे कल रात? Everything is connected. 170 for 3 after 17.2, 12th 50 for Hafiz. यार जल्दी से कमेंट्स में आप लोग स्कोर भी तो बताएं. This has been smashed down the ground once again, over the top, mid off is in the circle, rolls away for 4. Hafiz is punishing Saqib Mahmood. उसका तो करियर ही खत्म करने वाला है. गॉन पर 37. उसका करियर और हफीज का करियर तो अभी शुरू हो रहा है. 55 off 27. आप तो पहले उनको अब 23 की वर्ल्ड कप तो आप लेके जा रहे हैं, 27 में भी ले जाओगे. हद हो गई यार. But mid off in the circle and Hafiz picking where the fielders are, going over the top, bad length, way too back of a length, and a beautiful shot rolls away. And Hafiz enjoying his life in Manchester. पता लगा ये भी यूनाइटेड फैन होगा. ओल्ड ट्रैफर्ड आया हुआ, कहता है ये तो मेरा स्पिरिचुअल घर है. बट साकिब गेटिंग स्मैश्ड. 3.3 overs gone, 37 runs given away. England bowling has fallen to pieces. Hafiz Ben 10 बन गया. The comments. मलिक साहब तो डॉक्टर रसल बन गए हैं. यार छोड़ो यार मलिक साहब. अब चलो 14 of 11 दे गए हैं, ठीक है. Ooh, another full delivery, just bit of an inside edge but rolls away to mid, long on for a single. 175 for 3. इनिंग्स में अभी भी 12 और 2 14 बॉलें रह गई हैं. 14 को डबल कर लें 28, ये हो गए 203. बिली का कमेंट है, ये 50 वाला चौका जब हफीज ने मारा तो मुझे लगा मेरे मुंह पर किसी ने तेरी बुद्धि थे लानत.
9.91. Look at that run If you rate. like him, if you hate him, it doesn't matter. Hafiz is doing the job right now. 56 off 26 और balls. रिजवान भी उधर हैप्पी जॉली हैप्पी गो लकी होते हुए. The proper T20 cricketer right there. While we have Iftikhar at the other end, people doubt his age, but you cannot doubt his cricketing skills. Oh yes, you can. Iftikhar tries to play इफ्तिखार the के इतने फैन कब से आ गए उधर. I don't think he has a lot of Inside fans edge have to be honest. they've made an appeal. वो कह रहे हैं जी बूट को लग के कैच हुआ है. अब यार ये दिन आ गए इंग्लैंड के यार ऐसी अपीलें कर रहे हो. बट होपफुली वैसे इफ्तिखार का कुछ पता नहीं ये भी आउट हो ही सकता है कुछ भी हो सकता है. एनीथिंग इज पॉसिबल. दिस इज T20 क्रिकेट. 120 Umpires जरा परेशान हो गए कि चलो चेक ही कर ले. ओ यार सॉफ्ट सिग्नल भी वैसे क्या बड़ा देने वाले. कच्चा बॉलिंग लाइनअप है. बिल्कुल ही कच्चा और हमें भी कच्चा है तो फिर हमें जीतना चाहिए. हमें भी पका के खा लेना चाहिए ना. फिर यही करना चाहिए हमें. Win this game and win the next game as well, because there's no way they're going to And win every match since then throughout our history. जीतते जाओ जीतते जाओ. But let's look at the replay and क्या जी हुआ है. यार क्लियरली ग्राउंड पे लगा है बॉल. यार हद हो गई. अब ऐसे अपीलें पे ये The नहीं ले English are रहे हैं. desperate for a wicket. हद हो Wicket गई. of Iftikhar. मुझे तो लग रहा है अजहर महमूद ड्रॉप हो जाएगा. फाके महमूद तो बेचारा कहेगा. यार अब अजहर महमूद को तो he's only there for the 3 matches. First one was rained out. Do you think we could have won that first one? यार पोजीशन तो ठीक थी हमारी. We should have restricted them to 150 160. Not out given. Last ball of the 18th But over the game coming up. just wasn't enough in that game हाँ to judge यार. who's going to win or not. 5-6 ओवर का मैच हमें कुछ मिल जाता तो हम शायद कर लेते. साकिब with his final delivery of his spell 0 for 38. Ooh, good Yorker. ओए भागो भाई उसकी कॉल सुनो. And they've sneaked through for a single. Ooh, is that a run out? Iftikhar at the non-striker end. What is They're going going for on overthrows. It's all happening. और 2 रन हो गए हैं. England in shambles. ओए, अभी फिर रन आउट होने वाला था दूसरी तरफ. But thankfully यार इनको समझ ही नहीं आ रही. थ्रोए ओवर थ्रोए हो क्या रहा है. अपना टेम्परमेंट लूज कर गए इंग्लैंड. 177 for 3 after 18. रिव्यू ले लिया है बट 0 for 38. साकिब गेटिंग एब्सोल्युटली स्मैश्ड टुनाइट. मॉर्गन बेचारा भी दूर दूर. कमाल का है. कैन नॉट स्टैंड इफ्ती चाचा. यार स्टैंड तो यार ऐसे तो ना कहें यार. कौमी हीरो हैं यार. अरे ऐसे गलत बात है. हम हीरो तो नहीं. कराची किंग के तो हीरो हैं ही. ये स्नो वाइट एंड द 8th ड्वार्फ लगते हैं मुझे. जब भी मैं देखता हूँ मुझे वो कार्टून याद आ जाता है हमारे बचपन का. पाकिस्तान 177 for 3, 18 overs in. अभी तक रिप्ले नहीं लोड कर पाए यार. ये क्या कर रहे हैं ये लोग. दिखाओ हमें क्या हुआ है. आर दे रियली So what सीरियसली happened over अपीलिंग here? फॉर अ लेग बिफोर. कहाँ से आउट है भाई. यार 5th स्टंप पे बॉल लग रही है. ओवन मॉर्गन हैज कंप्लीटली लॉस्ट द प्लॉट हियर. लुक एट दैट. That's never gonna be out in any circumstances. And in fact, yeah, he's missed it. यार लेग स्टंप नजर आ रही है उसकी उस टांग यार पे. वैसे ये कोई ज़्यादा ही टाइम लगा रहे हैं. It's clearly you can just tell in this review, but I guess आई थिंक वो पाकिस्तान का मोमेंटम भी तोड़ना चाह रहे हैं. rules are rules. Gotta follow them no matter ये what. देखो यार कंप्लीटली मिसिंग यार. And Hoj was One of the absolutely worst right. reviews ever. That was the 5th stump for sure. ये किसने सोच ही क्या लिया कि रिव्यू उन्होंने कहा हमारे 2 रन बच जाएंगे ना. वो ये प्लानिंग उन्होंने की थी. बट वो भी नहीं हुआ. that's not out. So Pakistan moving on, getting some overthrows as well. So it's been a poor effort in the field. All my England 93 today. Hafiz doing an amazing job. I'm glad Haris Rauf is playing. It's Let's a good look at the question. run out as well. Oh, Iftikhar पहुंच गया. पहुंच Very गया good, था. very good. So good game. हाँ पहुंच गए. Good game. Good game awareness from Pakistan के भाई चलो एक अपील भी हुई लेकिन उन्होंने अपनी रनिंग रखी है और उस एक्स्ट्रा एफर्ट की वजह से पाकिस्तान को ओवरथ्रोज भी मिल गए. So good stuff. टाइम थोड़ी है. We only have 2 overs left. क्या करने खड़े होके. Get those runs. Get those. कल quick होना हो. singles. बिल्कुल. कैसी वैसे आपको अच्छी लगती है वो मूवी कल होना हो. नहीं देखी आपने. I don't think I watched it. Yeah. हद हो गई यार. आप हमेशा ये वो देख रहे होते द बॉयज और अम्ब्रेला एकेडमी. ये टाइप शोज देखते रहते हो आप. कुछ बताएं नेटफ्लिक्स पे कोई अच्छा आजकल क्या देख रहे हैं आप. I mean, Umbrella Academy. न्यू गर्ल आप देखते रहते हो. I was actually watching Lucifer. I'm not sure. साथ ही शैतान के पास पहुंच गए हो भाई. हद हो गई है. साकिब की अभी भी एक बॉल रहती है. नहीं एक बॉल कैसे It's रहती all है? happening. What is happening with पता नहीं क्या हो रहा है. हाँ रहती है उसकी एक साकिब ball. भाई भी हंस रहे हैं और स्काई स्पोर्ट्स से तो वो कह दिए वो तो पहले ही उनका दिमाग आउट हो चुका है. Look at this 50 by Hafiz. What a shot. That hook over fine leg was a brilliant shot. गंदी बॉल है ना. पीछे आप इतनी देर इस पिच पे आप शॉर्ट बॉल नहीं करा सकते. You can pitch it up, you can pitch it full, but bowling back of a length is an absolute disaster. Hafiz on 56 not out of 28. So he's had a brilliant innings. 5 4s, 3 6s. Look at that shot. Everyone talking about the वो boys CT in the 17 की innings याद आ गई to be quite honest.
और ये वाला जो फ्लिक था और उसके बाद जो सेलिब्रेशन थी हफीज भाई कहते ए ले ए फेक बल्ला वे कितने उत्ते वार ले. A lot of comments on the boys in the comments. Have you watched the show? यार आप लोग रेकमेंड करते रहते हो लेकिन मैंने देखा नहीं है अभी तक. Coming on in the yes, season 2 is coming out on the 4th of September. Chris Jordan coming on to bowl his final over 177 for 3 after 18. 9.83 the run rate. This has been smashed over long on. This is going to go all the way for 6. Hafiz has gone ballistic. A massive shot and a huge 6. Chris Jordan being taken to the sword. Do you really need Babar Azam when you have Mohammad Hafiz? यार अब साथ ही controversial हो गए हो यार. हद हो गई है यार. यार दोनों चाहिए हमें. Look at that. इतनी फारिग ball. Tried to bowl that off cutter. Azhar Mahmood, we salute you for this coaching. You are our true son of the soil. Look at that. Pakistan, a shit ball from Chris Jordan. Pakistan is a pure T20 team and you cannot just do this. You can't play your average bowlers in this game. Well, khair. भाई ये क्या बॉलिंग हो रही है. ये बस आप सब एक दो नफल पड़े हैं अजहर महमूद की लंबी जिंदगी के लिए भाई. ऐसी कोचिंग करते रहे और ऐसे पाकिस्तान का नाम रोशन. Yes, currently our website does have some technical difficulties going on, so that's why you can आप इधर आ जाए YouTube पे आ जाए हमारे on the पास. YouTube. We're reading comments on both. If you're on the website, I suggest you now refresh it to stay there, or just head on to YouTube. It's all good. 183 Reading for comments 3. on both. अभी भी 11 बॉलें रह गई इनिंग्स में. अभी भी तहलका मच सकता है. This has been और यार inside edge. मैं Good fielding. Ooh. मैं तो Run out chance and he almost nailed Hafiz. ये तो क्रिस जॉर्डन था यार. इसकी तो बॉल ये क्या किया इसने बॉलिंग. यार कभी कभी हफीज भी छा जाते हैं यार. ये भी बात सही है. अपने क्रिटिक्स को उन्होंने एक जबरदस्त जवाब दिया. बट लुक एट दैट फील्डिंग फ्रॉम जॉर्डन. ब्रिलियंट जंप और थ्रो तो बहुत ही खराब थी. दलेरी द एग्रेशन. लेकिन अगर वो हफीज को बॉल लग जाती फिर हम केस बन जाना था. हम कहते भाई बैन करवाओ इसको. कंप्लीटली मिस्ड इट. थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन एंड थ्रू द लेग्स ऑफ हफीज ही इज नटमैग्ड हिम. बट चलो all's well that ends well. Dot ball for England. 183 for 3 after 18.2. Pakistan looking to cross that 200 mark. अभी भी 4 बॉलें रह गई. इफ्तिखार 3 of 5. Hafiz 62 not out of 30. He's playing one of his greatest innings in T20 cricket. Full toss. This is me smacked down the ground just for a single, maybe 2. Running रखो नहीं, just 1 run. Good Yorker there from Chris Jordan. 142 कि आप पेस निकाल सकते हो. फिर आप ये घटिया 70 miles per hour ये ऑफ कटर क्यों मार रहे हो. ये एक ही बंदे की I have गलती no है. idea what Chris Jordan is doing to be honest. ये आपका कराची किंग का स्टार बॉलर था इस साल. यार वैसे इसने भी कोई इतनी जबरदस्त नहीं किया है ना. A little bit of massage action going on. भाई कप्तान है भाई. आपको थोड़ी सी कोशिश डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है. टीम में नहीं रहे. कप्तान बेचारे की बैटिंग तो कभी आती नहीं है. That's वो true. एक वीडियो उसकी वायरल होगी बेचारी की. ये उर्दू बोलता है इसके सामने अपनी कराओ. दैट वाज अ गोल्डन मोमेंट. 9.95 द रन रेट. 184 for 3 after 18.3. अभी भी 9 बॉलें रह गई. 9 बॉलात गेंदात रह गई हैं इस I innings was में. looking at 200 mark and that could still happen. Ooh, good Yorker once again. This sneaks through for a single. अच्छे Yorker मारा है क्रिस जॉर्डन. उसने कहा है कि भाई I just have to pitch it full. और हमारे बॉलर्स को भी सीखना पड़ेगा. बॉल पीछे नहीं करानी. आप मुंह में दे दे मसला नहीं है लेकिन पीछे कराओगे तो कंफर्म सिर्फ 4 या 6 ही आपको पढ़ना है. Good experience shown there from Chris Jordan. 185 for 3. English batsman Benton. Look at Rizwan. Rizwan's happy and relaxed at the back and Benton got that. अभी से ही कंसर्न है. उसके बाल भी ख़राब हो गए हैं साकिब की वजह से. अब उसकी इनिंग्स भी ना ख़राब हो जाए. But Pakistan really putting on a show here in Do you Manchester. think there's pressure on Benton? 100% यार. क्यों नहीं यार. जब आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे हो और आपका इतनी रेपुटेशन है कि आप T20 प्लेयर हो. और ऑफ कोर्स ही फेल्ड इन PSL. कुछ किया ही नहीं. नहीं क्रिस गेल से भी बैटिंग नहीं होती उधर. मनरो से भी बैटिंग नहीं होती. कोरी एंडरसन भी हमने देखा था फ्लॉप हो गया था. Chris Jordan full Yorker once again, squeezed out to mid wicket. That might be just 2 runs. Sam Billings does the clean up job. Good running there from Hafiz and Iftikhar. लेकिन बहुत ही बेहतरीन ओवर कराया क्रिस जॉर्डन ने. गॉन फॉर 40. वो पहली बॉल बहुत ख़राब थी लेकिन उसके बाद अच्छा रिकवर किया. और जेसन रॉय भी आपके क्वेटा ग्लैडिएटर मुसाद के जो फ़ैन है उनकी टीम के ये नहीं खेल रहे. दैट्स अ बिग प्लस फॉर पाकिस्तान. ये इंग्लैंड क्यों नहीं अपने प्लेयर्स. यार वो इंजर्ड है. ये अच्छा, इंजर्ड है. वो वरना होता है इस मैच में. उन्होंने रेस्ट किया. स्टोक्स तो बेचारे उसके फादर बीमार है. उसके अलावा जॉस बटलर 6 टेस्ट खेला तो वो थक गया है. उसके अलावा वोक्स नहीं खेल रहा. वरना इनकी तकरीबन वही टीम है. जोफ्रा तो ऑफ कोर्स ये देखो यार, ये देखो सीम पे इतनी खराश मराश मार रहे हैं यार. ज्यादती है यार. हमारे बॉलर करें फिर आप बैन लगा देते हो. हमने तो उधर अर्नब शो कर देता है. व्हाट इज दिस. ड्रग दो 187 for 3 after 18.5. 7 balls remaining in the innings. You are listening to Change of Pace live. उफ यार जबरदस्त मैच हो गया आज तो.
Last ball of his spell. Jordan coming to Hafiz. Full ball. Smashed over extra cover. Oh! He's dropped it. A brilliant effort by Owen Morgan, but definitely saved 3 runs. Unbelievable fielding की है. ओए 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 ये अफरीदी वाला काम नहीं कर पाई. What's going on here? जबरदस्त यार flying effort थी उधर मॉर्गन की, but just barely got his hand to it. लेकिन इसने definitely इधर 3 रन बचा लिए हैं. Look at that effort by the England captain. Whoa! You gotta give it to- you gotta No give it to way! Becker. You cannot do that on Morgan. वो वाला catch बात आता नहीं, हाँ. Ben Stokes वाला catch. But Chris Jordan, भाई तेरा चौका बच गया, तू उसके लिए शुक्रगुजार हो. तू इतनी ओवर एक्टिंग करे जैसे मॉर्गन का कोई, वैसे कोई कद इतना है भी नहीं, like हाँ छोटा सा है, 5'8", 5'9", इतना ही होगा बेचारा. But Tom Curran, he has been absolutely smashed by Hafiz, and Hafiz is on strike. 188 for 3, 6 deliveries left, 12 runs to get. Pakistan, you have to reach that 200 mark. Iftikhar 4 of 6. Hafiz 66 of 33. ये भी लूसीफर वाला भाई नंबर. अगर 70 666 कर दे आप अभी, मजा आ जाए, सीन हो जाए. ये मूछें देखें आप, ये टॉम करन की यार, ये क्या मूछें हैं. ऐसे कोई 11 साल का बच्चा नहीं होता जो नया नया अपनी मूछें बना रहा होता है, गंदी सी. व्हाट इज दिस, डिस्गस्टिंग. ये इंग्लिश क्रिकेटर हैं यार, हद हो गई है यार. भाई टॉम करन की बात करें, Venom is already talking about the next innings. Shadab Khan bowling well on this pitch. What do you think? स्पिनिंग पिच है बिल्कुल यार. हमें इमाद वसीम को भी बहुत ज़्यादा इस पे इफेक्टिव होना चाहिए, बट उसको न्यू बॉल भी डेफिनेटली देंगे, so he has to So be it's careful. 19 overs, the last over, ladies and gentlemen. Pakistan 188 for 3, and Tom Curran coming in against Mohammad 0 for Hafiz. 39 already पड़ चुकी है. Hafiz on strike, smashes it through mid wicket. That's only going to be a single, maybe squeeze. नहीं यार, एक Maybe a run little है. bit of misfield. But But good Yorker. unfortunately not. They're finally going back to the Yorker ball कि भाई ब्लॉक होल्ड में अब मारो, क्या फायदा? जड़ों में मारो इनकी. अब क्या फायदा, आखिरी अब ओवर तो है. फेंटा पड़ गया ये उनको. तो वही वाली बात होगी, आखिरी ओवर अच्छा गिरा लिया, बीच में तो बहुत ही फेंटा खाया. 0 for 40 of 3.1 under severe pressure. He had a complete meltdown in that over against Hafiz. No ball, छिक्का चौका, हर तरफ उसको शॉटें पड़ी. पर लेकिन इफ्तिखार बेचारे को. Are you feeling confident with this score? हाँ यार, क्यों अगर पाकिस्तान टीम 200 स्कोर नहीं डिफेंड कर सकती, फिर हमारे बॉलर क्या कर रहे हैं. ये भी बात सही है. Iftikhar on strike, second over, second ball of the over, hits it down the ground through mid wicket, one bounce, go in the gap. nahin, Sam Billings gets across, that'll be another 2 runs. तो Iftikhar not quite timing it. It's difficult when you bowl those full Yorkers, और इनकी decent speed है 85, 86. यही बॉल आपको 6 की 6 करानी है स्टेज पे. आप जो ये ऑफ कटर, लेग कटर, इन चक्करों में पड़ गए थे, आप खुद कंफ्यूज हो गए हम थे. जब बात करें कि ये उमैर शिराजी का कमेंट आ रहा है हाँ, on हाँ. the YouTube stream that wonder why Moin Ali didn't bowl an over again after only one over. बिल्कुल जब यार. हम बात ये करेंगे आई spin थिंक हो वो रही है. हफीज से डरते हैं कि वो ऑफ स्पिन के खिलाफ वो मारेगा Hafiz- उनको. even Malik was on at that हफीज और time. मलिक दोनों खतरनाक है. Yes. उनका मसला ये तो कि आदिल के ओवर शुरू में ही निकाल दिए, तो फिर उसके हाँ. बाद उनके पास कोई सेकेंडरी ऑप्शन ही नहीं था स्पिन पे. So you couldn't just put on. Full toss, this has been hooked away. 1 bounce, 2 bounce. ओए यार ये चौके वाले शॉट थी यार, बट स्क्वायर लेग, ब्रिलियंट फील्डिंग देयर. Pakistan Lewis Gregory. 191 for 3 and 19.2. 4 balls left in the over. I mean, sorry, 3 balls left in the over. Iftikhar just chilling यार around. फुल टॉस थी लेग स्टंप पे यार, फायदा उठाना चाहिए था इसका, बट डिडंट रियली टाइम इट. इफ्तिखार थोड़ी सी हम देख रहे हैं रिवर्स स्विंग में थोड़ी अंदर आ रही है. 192 for 3, 3 balls remaining in the over. एक 6 लग जाए तो पाकिस्तान will be in the 200 range. But Sam Curran going for 43 in his 3.3 overs. शदीद मार पड़ चुकी है. Look at the field. There is a deep fine leg, deep square leg in place. Look at the Third jazba. man is in the circle. लेकिन वो जैसे यॉर्कर मारा, बॉल उधर जाना यार मुश्किल क्या ही है. बात होती अगर फैंस होते इस मैच के अंदर. पाकिस्तान 200 बना रहा है यार. Especially Manchester में यार. Manchester, all the Pakistanis are there and making 200 in T20 is a good score. I love it. 100%. Flicked away to deep square leg. The fielder in place. Good fielding there. यार. Saves a certain boundary. Gregory. ये बेहतरीन एक तो bowling यार की ये है. बाउंड्रियों पे रोकी जा रहे हैं, रन पे रन रोकी जा रहे हैं. No doubt, no doubt. 194 for 3. अभी भी 2 बॉलें रह गई है. एक चौके की मार है, लेकिन अपनी फील्ड के मुताबिक बॉल करा रहा है कि जी फुल लेग स्टंप पे दे रहा है. मेरे सारे फील्डर पीछे हैं, तो 1-2 और 1-2. He's only given away about 6 runs in the over. Khwaja, so काम we सही saw कर the रहा है we saw the batting order today. जी. What do you think? Would you change anything from this? Would you remove Malik, or you know what? It's fine. This batting order was good to go just for today. Like you know, आज आप हमने देखा काफी अच्छा गया है. Overall आप देखें बैटिंग तो सही गई है. हाँ नहीं, तो आप कैसे हाफिज? You can't complain जब इतना स्कोर पड़ जाए. हाँ. This has Talking been about the score. top edge through extra cover, and he's caught at last. Owen Morgan finally. Hafiz's luck has run out. Not Hafiz, gone the for- great Mohammad Hafiz is gone on 69 Well runs. played, Professor Saab. 69 of 36. A gem of an innings. जब hitting की जरूरत थी, बिल्कुल. Hafiz delivered, and Tom Curran finally picks up a wicket. थोड़ी Babar ball and given Fakhr way set the outside base. off. Chance था कि थोड़ा third man के ऊपर से मारते शायद थोड़ा मुश्किल होता है, but complete bottom edge.
went straight up, खड़ी कर दी हफीज ने. But a brilliant innings, 69 of 36, one of his best in T20 innings to be. यार ये क्या किया professor, but I think he's done his job. कोई बात नहीं, amazing played all night 93 is saying, and he's absolutely right. Yes. Standing ovation दे रहे हैं हमारे खुशदिल शाह और यूनुस खान. और हफीज़ का वो जो सिग्नेचर स्टाइल है, बैट घुमा रिवर्स करके नीचे से पकड़ना to celebrate his 50, very good innings. So what we were talking right now, paying off. Other moment is saying remove Malik for Heather. But यार of course यार, हैदर अली को तो मैं तो पहले से पिछले मैच से ही कह रहा हूँ, इतने तालियां दे रहे हैं उसको हफीज़ कि भाई तुमने क्या नया पाकिस्तान बना लिया, क्या हो गया, एक ही 50 मारी है, रिलैक्स. लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स कमिंग अप, इफ्तिखार ऑन स्ट्राइक, हियर वी गो. This being cut away to point, abe, straight to the fielder. So Pakistan will finish on a disappointing, honestly. Chalo, 195 I mean, is the final score. The Dilviz said 200, but Predict Viz said 195 from that time, and I guess Pakistan just made 195 on this. On the target for England to chase in the second T20 at Old Trafford, 196. A required run rate of 9.75 in the second Vitality T20 game. Hafiz with a 50, Babar Azam with a 50, Fakhr Zaman making a good 36 with Malik 14 of 10. तो बैट्समैन ने तो अपना काम कर दिया. इट्स अ टफ पिच टू बॉल ऑन, स्पेशली इफ यू बॉल बैक ऑफ लेंथ, बॉल आगे कराएं. देयर इज सम स्पिन इन द सरफेस, सो शदाब विल बी इन द गेम, इमाद विल बी इन द गेम. मुझे लगता है इफ्तिखार को भी हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा. हफीज़ भी हैं, मलिक भी हैं, सो वी नीड टू मैक्सिमाइज आवर स्पिन ऑप्शंस. वील बी राइट बैक. जस्ट 10 मिनट का ही ब्रेक होता है. आई थिंक T20 में जल्दी आ जाएंगे हम. T20 क्रिकेट जल्दी ब्रेक हो जाते हैं. यहाँ कोई चाह सीन नहीं होता, जल्दी आ जाता. And but letting you all know that our website is currently down, so please head down to our YouTube channel, पे आ जाएं. And if you're still on the website, you can stay there. But anything that happens, yes. But we'll join you for the second innings just as soon as it starts. Stay tuned to Change of Pace.
Welcome back, change of pacers, to the second innings of the second T20 between Pakistan and England at Old Trafford. Pakistan with a massive score, 196 target दिया हमने अंग्रेज़ों को. Tom Banton out to bat for England. Gonna be feeling the pressure. पहले मैच में बड़ा खुला डुल्ला खेल रहा था भाई, बड़े छिक्के चुक्के मारा था. अब तो टारगेट मिला है. आज देखते हैं कि तुम कैसे परफॉर्म करते हो. That was his maiden 50 in the previous game, but a very talented player. Wicketkeeper, opening batsman, and Imad Wasim taking the new ball for Pakistan. 196 target. Emma Junior, are we going to defend this score? बिल्कुल सिर्फ एक मुख्तसर जवाब दे, yes or no? Yes, we will. Easy भाई, पहले ओवर में विकेट है, मैं कह रहा हूँ. ओए इमाद भाई हैं और वो विकेट ना. इमाद भाई हैं, आपके कैप्टन है के. Absolutely. और मज़े की बात है, इतना डिमांड था और इतना ट्रैफिक था, हमारी साइट ही क्रैश हो गई खैर से. सो यू गाइस हैव टू कम ऑन यूट्यूब एंड जॉइन अस इन द कमेंट्स. तो हम वो उसको रेक्टिफाई करें. हमने इंजीनियर लगाए हुए 2-3 उसको. हमने बिल गेट्स भाई से भी बात कर ली, वो कह रहे मैं टीम भेज रहा हूँ. ओह, साइट ऑन हो गई हमारी. वेरी गुड यार, ज़बरदस्त सॉल्व हो गया. देखो छा गए बिल भाई. एंड वी आर बैक ऑन a change of pace. Let me just open up our chat. As you can see, Khwaja is not calling Pakistan the Sabroso 11 today because they've made a big score. First ball cut away to point, but straight to the fielder. Yes, our website is back up. Join us at the chat, changeofpacelive.com/match day. उस पर आप फ़ौरन आ जाएं और हमें ज्वाइन करें लाइव स्ट्रीम पे. हमारे साथ चैट करें, अपनी गपशप दें, अपने प्रेडिक्शंस दें, अपने जुगते सुनाएं, अपने जिफ्स लगाएं, अपनी ट्वीट्स लगाएं, हमारे साथ गप्पे शप्पे मारें. And here we go, second ball to Banton. Ooh, this has been squeezed too long on for a single, so England are off the mark as well as Tom Banton. तो पाकिस्तान ने यार बड़ी सेंसेशनल बैटिंग की है. फ़खर ने अच्छी बैटिंग की, बाबर ने अच्छी बैटिंग की, हफीज़ ने बहुत ही आला इनिंग्स खेली, 69 of 36. शोएब मलिक ने भी अपना रोल थोड़ा बहुत अदा किया आफ्टर बीइंग स्लो एट द स्टार्ट. बट जॉनी बेस्टो विल बी द की प्लेयर फॉर इंग्लैंड. काफ़ी हैवी हिटर है, पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर भी बहुत कर चुके हैं इन द पास्ट. So we'll have to be very careful against him. ओ यार, ये अभी आउट हो जाएगा. यार ऐसे तो ना के हैं. Talking about this, M. Arsenal 93 saying he's the first one here today. Squeeze to square leg for a single, and so Bairstow is also off the mark. और इंग्लैंड वाले घबराए हुए हैं, थोड़ा डरे हुए हैं. उनकी शक्लों पे नजर आ रहा है कि भाई they're facing Pakistan. It's going to be big trouble. इंग्लैंड 2 for no loss after 0.3. इमाद वसीम ने पिछले मैच में बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की थी. Got the wicket of Johnny Bairstow, caught and bowled, so he'll be looking to get him once again. Coming out to the pitch, Tom Banton, but squeezed. And we were talking about Imad Wasim, the other game that got washed out. He bowled pretty decent that time as well. We were just talking about how he's transformed his body and the weight he had put on before. So he's doing very well for himself and for the Karachi Kings, of course. बट इंग्लैंड की फास्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे जूनियर? यार मैं समझ ही नहीं आया कि किसको बिल्कुल. आई डोंट नो इफ यू कैन एक्चुअली कॉल इट द अजहर महमूद इफेक्ट बिकॉज़ क्यों नहीं यार अगर आप देखें गुड बॉल स्ट्रेट ऑन टू द स्टंप्स बट स्ट्रेट टू मिड विकेट. अ डॉट बॉल वंस अगेन. इमाद बॉल. आई डोंट थिंक उनकी ए टीम फास्ट बॉलर्स की नहीं खेल रही थी. उनकी बी टीम फास्ट बॉलर्स की खेल रही थी. एंड देयर वाज वेरियस रीजंस. अब हमें पता है कि हमने पहली बात की समवनस गॉन बिकॉज़ समवनस पेरेंट्स आर सिक एंड समवनस प्लेड अ लॉट ऑफ टेस्ट क्रिकेट. So there's a doubt there, or maybe they could get that Azhar Mahmood effect on them on a good side. कि भाई चलो आप इनको सिखा यार हमसे बड़ी गुड साइड कोई हो सकती है? हद हो गए यार. कौमी नंबर 1 थे हम. आई मीन दुनिया के नंबर 1 थे यार. आपको पता है हर बंदा कौमी हीरो है चेंज ऑफ पेस पे. Ben 10 versus Wacky Racers. But brilliant over once again. Only 3 runs given to Shaheen Shah Afridi, the Qalandar. Farooq Rahman कह रहे हैं Azhar Mahmood played well. He is already man of the series. एक मैच वॉश आउट करवा दिया और दूसरे में 196 रन खा लिए. Talking about fast bowling, Shaheen Shah Afridi. ये हुई ना फिर बात. Look at that age 20 left arm fast medium. ये क्या तौहीन कर रहे हैं आप शाहीन शाह अफरीदी की? भाई ये मीडियम हटाएं. We are only speaking fast or express fast. हमारे दो ही मोड होते हैं. There's no such thing as medium in Pakistan cricket. Yes. 3 for no loss, 1 over gone. यार इफ्तिखार को फिर स्लिप में इन्होंने ले लिया है यार. आदिल मोमिन, आदिल कुछ करो यार. ज़करिया खालिद, इमाद आई एम इन लव with the shape of you. Shout out इमाद शेरन. वैसे एड शीरन के गाने आपको पसंद है? बस ठीक है. बस ठीक है. अच्छा इतना डर की क्यों जवाब दे रहे? मैं कार्ड थोड़ी दूंगा अगर आपने कह दिया पसंद है. अंडर प्रेशर ही आगे जूनियर कप. शाहीन शाह अफरीदी, Banton, ooh, inside edge once again. ये तब से edge ही मार रहे हैं, तब से फाइन लेग को ही हमेशा बार बार बॉल जा रही है. बट शाहीन शाह getting that shape on the ball.
And the comments are already coming in. FKHD saying Hafiz की जगह पक्का for the next 3 years. यार वाकई यार we live off one innings. आप एक परफॉर्मेंस दे दें आपके 6 महीने एक्सटेंशन मिल जाती है पाकिस्तान टीम में. Sakhil pointing it out, Shaheen Shah perfectly fast and the lady fast. यही बात है. घोड़ों का पानी निकाल दो अंग्रेजों का आज. England 4 for no loss after 1.1. Shaheen Shah Afridi Bairstow 1 of 3. Banton 3 of 4. Kopi Mia cover. I miss when Change of Pace used to play those music clips for each player. हाँ वो हम अपने करना है definitely, but वो यार हमने कहा यार मुहर्रम का महीना है, we should respect, you know, so we are avoiding playing any music right now. Absolutely. During this very important month. But 4 for no loss after 1.1, and Shaheen Shah Afridi bowling to Johnny Bairstow. Inside edge once again, but good fielding off his own bowling. Shaheen Shah Afridi बेहतरीन bowling. यार Shaheen Shah ने जो इस टूर पे bowling कराई है ना यार, आउटस्टैंडिंग. मुझे लगता है बेंटन आउट हो जाएगा अभी. यार बेंटन जल्दी से अंडर 10 ही इसको आउट कर लें. बेंटन को तो वाकई मज़ा आएगा. शाहरुख खान क्या बात है. किरण इफ्तिखार को मैं अपनी गली की टीम में सेलेक्ट ना करूं यार. इतनी ज़्यादा करो यार, ऐसी बात नहीं. कौमी हीरो है यार. Dude, he's play, and then we think playing the PSL is not a joke. I mean, we know we praise the PSL a little bit too much over here, but it is the PSL. यार आप मैच सिचुएशन भी देखें ना, आते ही स्लॉगिंग करना इतना आसान नहीं है, स्पेशली जो इंग्लैंड और हमने देखा यार पाकिस्तान यॉर्कर पकड़ लिए थे एंड में. टेलर से रन ही नहीं बनते थे पहले टेल एंडर से, एंड नाउ वी सी कि भाई वो बनाता है, शादाब बनाता है. You can consider him as tail ender. This has been flicked away over mid wicket, mid on in the circle. और क्या पहुंच पाएंगे? No, that's the first boundary for England today. England 8 of no loss and 1.3. A big target ahead. 196. उस्मान कह रहे हैं इफ्तिखार looks older than Hafiz. He probably is. रमीज हसन कह रहे हैं he's the कौमी चाचा. वाकई. और शोएब कह रहे हैं दादाबू एक इफ्तिखार से आज उम्मीद थी but he came late. हाँ सही बात है. बिल्कुल. But boundary given away from Shaheen. Thickish inside edge. इनके बल्ले इतने अच्छे होते हैं आजकल. आप किस प्लेयर से अभी इंग्लिश बैट्समैन से अभी डरेंगे? Like we should get this guy out. यार बेयरस्टो और मॉर्गन खतरनाक हैं. ये दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं इनके, और एक्सपीरियंस भी हैं, वर्ल्ड कप ऑफ कोर्स विनर्स भी हैं, तो वी हैव टू बी केयरफुल अगेंस्ट देम. शाहीन शाह अफरीदी catch it, yeah, gone over extra cover, just flashed over him and it's gonna run away for 4 just about. That was an opportunity, but हमारे फील्डर ही छोटे छोटे से हैं. It's Shaheen unlucky shot for this over. यार बॉल भी थोड़ी सी खराब थी, बहुत बाहर दी थी, but it was in the air, there was a chance. यार just over the top. हफीज साहब से तो अब ये कैच नहीं पकड़े जाने थे. गुड शॉट फ्रॉम बेयरस्टो. यार आप इतना अंदर क्यों खड़े हो यार, आप सर्कल पे खड़े होते, कैच था यार. Hafiz coming in way too much, and Shaheen Shah bit errant in his line, gone for 9 runs off his 4 deliveries. 12 for no loss. England after 1.4. Banton on 3 and Bairstow of 9. And look at that Vitality logo on the field. We know the Vitality Blast is coming soon as well. The Babar Azam playing for Somerset. शोएब कह रहे हैं ख्वाजा कैन यू प्लीज कॉपी हर्षा बोगले. यार उसके मुझे स्टाइल नहीं आया. यॉर्कर फ्रॉम शाहीन. ओए थोड़ा लेग साइड हो गई थी, बट दिस गॉन थ्रू फॉर अ लेग बाय. नहीं रन्स दिए, सो तो द अंपायर सेइंग दैट ही इज प्रोबब्ली गॉट इट ऑफ द बैट इनसाइड एज. और बाबर बार पूछने ले लूं कहते नहीं रहने छोड़ दे. I don't think he's going to take the review. He's looking at the ball though. बॉल से ज़्यादा ज़रूरी है. आपने देखना अंपायर क्या दे रहा है. अगर अंपायर कह रहा है कि बल्ले पे लगी, फिर तो डेफिनेटली रिव्यू लेने का फ़ायदा नहीं है. इंग्लैंड 13 फॉर नो लॉस. फिर भी थोड़ा 10 रन पड़े हैं, बट थोड़ी some good deliveries in there from Shaheen Shah as well, besides the 2 bad balls. But look at that Yorker, look at that in swing. Yeah, and we know the danger man Bairstow is still hanging around, and I mean, he's a pretty well ball there. बॉल तो अच्छी थी, बस थोड़ी सी मिडिल स्टंप से स्टार्ट करता. लास्ट बॉल ऑफ हिज फर्स्ट ओवर, लुक एट दैट, फ्लिक्ड अवे थ्रू मिड विकेट फॉर अ क्विक सिंगल थ्रो एट द स्टंप्स. बट ऑफ कोर्स जब मारनी होती तब तो पाकिस्तानी कभी भी नहीं मारते. जब बैट्समैन बॉलर से भी गुजर गया होता तब डायरेक्ट हिट हमारी लग जाती है. 14 for no loss after 2 overs. Banton 4 of 5. Bairstow 10 of 7. Shoaib keh rahe, who remembers Vince McMahon was nice lad. Played PSL to Vince ने कब James Vince था, Vince McMahon ने कब PSL खेला है यार. Brock Lesnar लाहौर की टीम में था. But we're having a change in commentary. Ahmed Hassan, welcome to the match. The Ahmed trifecta today. जी आज हमने मुसाद को बेदखल कर दिया. हमने कहा निकलो तुम मोइन मनूस, जब भी तुम बैठते हो बारिश हो जाती है. Exactly, जिस किस्म की उसने ट्वीट्स डाली हैं आजकल, तो उस हिसाब से उसको ये कहता है इमाद वसीम अंडररेटेड. हद हो गई है यार, ये कोई बात है करने वाली. Imad Wasim is the GOAT. Oh, what a shot there by Tom Benton. Speaking of Imad Wasim, he's welcomed with a reverse swept 6 over point. Wow.
यार आप आए और पहली बॉल छिक्का हो गया इंग्लैंड यार का। वो मुझे लड़का पसंद है तो बस उसने कहा कि आपके लिए। टॉम बैंटन ब्यूटीफुल What a शॉट। यार यही मसला है कि हमारे बैट्समैन ऐसी शॉट्स नहीं मार मैं सकते। एग्जैक्ट ये पॉइंट कहने वाला था कि यार हमारी टीम में कोई एक ऐसा बैट्समैन नहीं है जो सिर्फ मिसबा मारता था, मिसबा भी मारता था लेकिन मतलब छक्के नहीं जाते छक्के थे। भी नहीं मारता था वो भी definitely। डैब पैडल स्वीप्स होते थे, नथिंग इन दिस सेंस। और इमाद ने भी थोड़ी लालच दिखाई कि मैं विकेट के लिए जाऊं, थोड़ी बीच में बॉल तेज कराइए, डाल बार दिया। बार कराओ भाई, फायदा नहीं है अभी बिल्कुल इनसे। बिल्कुल। Imad again comes down the track this time over यार। mid wicket and that'll be another boundary. No, नहीं, it won't be. नहीं, It'll यार। just plod a little bit in the outfield. Fakhar Zaman will collect वैसे 2 फखर runs. जमान की आपने बात जिक्र की, डिड यू सी ही इज मेड अ चेंज इन स्टांस, काफी झुक के, जैसे कैटिच नहीं खड़ा होता था Right. वैसे खड़ा हो रहा था, एंड इट वाज वर्किंग फॉर हिम, ही प्लेड सम Mean गुड the way शॉट्स। Sarfraz stands. यार सरफराज तो बस मैं कुछ कहना नहीं नाम चाहता। नाम ना ही लें तो बेहतर। वैसे ख्वाजा आज अनचेंज लाइनअप खिलाया है, मतलब मेरे हिसाब से तो एक्सपेक्टेड था कि अनचेंज ही होगा क्योंकि पहला मैच जो था वो नो रिजल्ट था। हैदर अली को नहीं खिलाया, लेकिन अब वही अब 195 डाल दिया, अब क्या करे बंदा बट यार। अगर आज ये टीम जीत जाती है इंशाल्लाह तो आपको क्या लगता है अगले मैच में हैदर के चांस बनेगा? आई I don't होप think- सो, बट इट विल बी अ लाइव गेम, यू नो, द इंग्लैंड विल बी लुकिंग टू ड्रॉ द सीरीज, तो फिर वो डेड रबर समझ के नहीं लेंगे ये। दिस हैज बीन इमाद जस्ट फॉलोज टॉम बैंटन डाउन द लेग साइड एंड जस्ट स्क्वीज्ड अवे टू मिड ऑन फॉर अ सिंगल। ये थोड़ी क्लेवर बॉलिंग है, आप अपनी विकेट के लिए नहीं जाओ, Yeah. मेक देम प्ले अ रैश शॉट, क्योंकि ये ऐसा पिच नहीं है कि आप कोई मैजिक से उनको आउट कर लो बिल्कुल। और आपका इतना स्कोर हो गया। जस्ट वेट फॉर देम टू फॉर द स्कोर बोर्ड प्रेशर टू वर्क ऑन देयर माइंड्स, और वो खुद विकेट दे देंगे। और आज तो मेरे ख्याल में उनका अप्रोच भी यही रहेगी कि बस हमने ऑल गन्स ब्लेजिंग। हाँ, दलेर तरीके से खेलनी है। Swept away this time. It's going over square leg. I don't think Fakhar Zaman's going to cut this one off, and that's a boundary. 4 runs for Johnny Bairstow. It's a safe shot from him. It was aerial, but यार landed ये safely. इनकी बेहतरीन शॉट हैं, वो फील्ड को मैनिपुलेट करके ये शॉट मारे, उनको पता है जी फाइन लेग सर्कल में है, Yeah. उसके ऊपर से मारो। And they स्क्वायर wonder- लेग वाज टू स्क्वायर एंड अ ब्यूटीफुल शॉट बाय बेयरस्टो, खतरनाक बैट्समैन, और वेरी वेरी बॉल खतरनाक। एंगल से अंदर आने वाली है, आराम से सेफ शॉट है, कोई फील्डर भी नहीं खड़ा हुआ। Plus they want to take Imad out of the attack early, हाँ, because if you're going to bring Imad in against the left-handers who are still to come, it's not his strong suit. So that tweet's backfiring here for Mossad. 27 for no loss after 2.4. Graham Thorpe, now the head coach of the T20 team for England. This time on the Ooh, pads aimed at tucked the away behind pads. square. They will just pick up a single. वैसे ख्वाजा, speaking of यार जितने इनकी टीम है उससे ज़्यादा तो इनकी कोच होते हैं, इतने ये लोग बदलते रहते और हैं। यार ये भी मतलब काफी हाई प्रोफाइल लोग लेके आते हैं। हाँ। मार्कस ट्रेस्कॉथिक who's T20 specialist लॉर्ड in this पैल्पटीन नहीं case. लग रहे वो ऐसे। Come over to the dark side. Hooded Palpatine. Last delivery of the third. Catch it! That's in the air. I don't think there's anyone Hey, there. oh, it's just yaar. over the head of Babar Azam that hung around for a while. Yaar, Bobby made unlucky. good ground from long on, but couldn't cut that off. 3 overs up, 30 without loss. Banton 15, Bairstow 15. शाहरुख खान कह रहे हैं ऐसे दिन आ गए हैं कि इफ्तिखार इज आवर गो टू हिटर यार, लेकिन चलो 195 तब भी आपने स्कोर डाला है। टॉप एज देयर फ्रॉम बैंटन, बट मिड-ऑन वाज इन द सर्कल और That was पहुंच नहीं पाया swirling. बाबर। That was swirling so much that Babar Azam couldn't really track it in the air. Reminded me of that Shahid Afridi effort against New Zealand. Still remains one of the greatest catches. यार हंसी मजाक हंसते खेलते 30 for no loss हो गए इंग्लैंड, और दोनों 15 पे चले 15 गए। 15 9 balls पे यार कोई टेंशन ही नहीं है। Here comes the cutter specialist. ओ यार ऐसे तो ना कहें Kattu. यार, आमिर कट्टू। सीटी 17 जिताया आपको यार, ऐसे तो ना यार कहें। सीटी 17 में भी 4 साल होने वाले हैं। हाँ ये बात तो है। मतलब आप खुद देखिएगा कि उसी एवरेज तो अच्छी है, इकोनॉमी रेट भी बहुत अच्छी है यार। इकोनॉमी एवरेज दोनों बहुत अच्छी हैं, बट मतलब हम वही कहते हैं ना कि यार एक प्रीमियर फास्ट बॉलर आपको हाँ। हुआ करता था, पेस स्विंग, अब जो है वो स्टिल ओनली एज 28 और रेड बॉल छोड़ दी इन्होंने यार। a lot हाँ, of पढ़ा। questions being asked about Amir's enthusiasm and commitment to the game. ज़करिया खालिद भी वही कह रहे हैं, इरफान पठान से आके स्लो बॉलिंग कराओ यार, हद हो गई यार ज़करिया। उस बंदे ने आपको टाइटल जिताया और आप Yeah, but उसको वैसे इरफान पठान बोल रहे हो। Very good comparison, Zakaria, because his career in a way has हाँ। gone the exact same way. You know, pacey swing bowler reduced to off cutter specialist. यार ऐसे ना Here he करो, is गलत बात है। over the wicket to Johnny Bairstow on the leg stump, and it's that नहीं cutter यार। tucked away past fine leg. That'll be 4. It was inside the circle. Imad Wasim. It's a loose delivery and easy picking. 68 miles per hour. I think that's as fast as Adil Rashid bowls. अच्छा ये वो देख रहे हैं व्हाट डिडंट वर्क फॉर इंग्लैंड, और ये भी वही बॉलिंग करा रहे हैं। ये ऑफ कटर बैक ऑफ लेंथ वाला काम नहीं चलेगा भैया, आगे पिच द बॉल अप, मेक देम ड्राइव ऑन द अप, ये फायदा नहीं है बैक ऑफ लेंथ देने Yeah, का। exactly. अगर आपने स्लो बॉल करानी भी है तो आप ऑफ स्टंप के बाहर तो करवाएं, मतलब let them put their hands through the ball. Don't give और them आदिल these मोमिन easy ने तो shots. सीधा कह दिया आमिर इज डन, खत्म। आदिल मोमिन को भी गलत बात कहते ही हैं। सही बात है। शाउट आउट टू आवर ब्रो इन ह्यूस्टन।
But 34 for no loss after 3.1. It's an even worse delivery, and it's dispatched for a 6. Back-to-back boundaries, this time on leg stump, slightly short in length. And अब it was अजहर महमूद easy. बाहर आके बैठ गए जब हमें छिके पड़े. मैं वही कहने वाला था यार, अजहर महमूद के आते साथ ही इंग्लैंड की बॉलिंग भी जो तबाह हो गई है. यार ये क्या बॉलिंग करा रहा है आप यार. Full pace down the leg side. Yeah. It's a small boundary on the freebie. fine leg. Easy. It's a freebie. A free hit एक किस्म की. Absolutely. आमिर यार ये क्या 10 off बोलेगा 2 आमिर यार? deliveries, and Amir is now giving the game away to England. He was brought on to get some control into this innings, but he has not bowled well for these 2 deliveries. मिस्टर आस ने कहा आमिर की धोती फाड़ दी यार. ऐसे तो ना Yeah. यार, हद हो गई है. Again, a cutter this time, better delivery on off stump. यार ये आर्सेनल Put फैन away को to ज़्यादा point. एरोगेंट नहीं हो गया. कम्युनिटी शील्ड भी जीत Community गए Shield हैं. जीत गए, such a huge trophy, man. यार At least season आप में तो उनके मजाक को उड़ा रहे हैं. उनका मैं मजाक. मजाक नहीं उड़ा रहा. मैंने कल यही पढ़ा था कि अगर आर्सेनल जीतती है तो इट्स अ बिग ट्रॉफी, हार जाती है तो मिकी माउस कप. 40 for no loss after 3.3. आमिर प्लीज़ यार अपनी बॉलिंग सुधार लो. 3 बॉलों में 10 रन खा लिए. बॉलिंग शक्ल दोनों सुधार लो. वो हाँ थोड़ा सा अगर बेंटन अपनी हजामत करवा सकता है तो आप भी करा ही सकते हो. बिल्कुल. ब्राउन बॉल लेके आ जाता है. शोएब कह रहे हैं मीनवाइल डैरेन सैमी इज हैविंग करियर्स वर्स्ट टाइम इन सीपीएल. अब बुढ़ा भी तो हो गया यार. यार वो बस अब नाम पे रह गया. देयर इज नथिंग एल्स लेफ्ट इन इट. अब आपके नाम में एयरपोर्ट बन गया है. यू कैन दैट्स योर पीक इन लाइफ. उसके ऊपर आप क्या जा सकते हो, कहाँ जा सकते आपको हो. जो है वो ऑनररी सिटीजनशिप मिल गई है. हाँ. What more do you want? Amir again, cutter this time dead way towards short अबे third मार man, दे शाहीन. and that'll be a quick single. Good running by both of these batsmen. 42 after 3.4. Johnny Bairstow 26 off 13. डीजिंग कह रहे हैं आमिर नीड्स अ रेसिस्ट हेयर कट एज वेल. यार दे दो वैसे ऐसे, कोई मसला नहीं है. आज ये टॉम करन को क्या हुआ था? उसने अजीब छोटी सी जो है वो गंदी सी पता नहीं क्या रेसिस्ट मस्टैश. दाऊद अब्दुल्ला कह रहे हैं 118 116 सो दैट्स सो डिसअपॉइंटिंग. एग्जैक्टली फ़ायदा किसी को हो नहीं रहा इस पिच पे, लेकिन फिर भी ये बॉलर ट्राई करी जा रहे हैं. एटलीस्ट इफ यू बॉल एट फुल टिल्ट और उन्होंने अच्छी शॉट मार दी. Exactly. नो प्रॉब्लम. Maybe surprise them with a short delivery or a quick delivery at least, but you know और हमें these पता है cutters, एक साइड स्क्वायर लेग बाउंड्री बहुत बड़ी है और आराम से 2 Yeah. 2 3 3 रन मिल रहे हैं. यू कैन टेक maybe अ चांस ऑन इट. tried something against Banton. Amir comes in again. This time a straighter delivery. It was a अबे मार दे faster one, यार. and he's had a shy at the stumps. Faster at 83 miles per hour, mind you. So not सीम अप really that बॉलिंग कराओ fast. यार. He needs a little नौफिल wind कह in रहे his हैं sails. also remember Amir when he could bat a bit that 70 versus New Zealand in an ODI. Yes, back in 2010. Yeah, basically remember Amir when he gave a shit. That's Exactly. that's what you should be saying. It was Amir when he used to give a damn, and that Amir is long gone. So सही बात it's an है. interesting phase for Pakistan cricket right now. We do have a lot of young talent still in the pace department at least. He should be looking behind his back के भाई कोई भी आके मेरी जगह ले सकता है. 100%. You have guys like Asnan who've नसीम racked up शाह good भी numbers. स्क्वाड में ले Naseem आए Shah हैं. is still वहाब there. भी है अभी वहाब भी. भी है. वहाब बुड्ढा हो गया. हसन अली भी वापस आएगा. हसन अली भी वापस आएगा. Exactly. So you have a lot of depth. मूसा खान अभी तक जो है वो पूरे तौर पे पाकिस्तान स्क्वाड में नहीं आ सका. So he needs to be wary, and he's going to try a cross seam delivery here based on his grip. Last delivery of the fourth coming up. Oh, it's a slower delivery again on the Yeah. pads, tucked away towards square leg. They'll pick up a single. End of the fourth. 43 without loss. Pakistan need a चलो wicket. अच्छा बच बचाव करा लिया जो दोस्त को 10 रन पड़े थे 2 बॉलों 3 बॉलों हाँ में. मतलब कुछ ना कुछ तो हो गया है, लेकिन अगेन आप मज़ा नहीं आया. नहीं है यार. चस्का नहीं है bowling में. 13 रन्स पड़े हैं आपको. शुरू के आपको पता है 4-5 ओवर में बॉल स्विंग करती है. Why not try something that comes back into the stumps? Bowl with pace. और इंग्लैंड ने इस मैच में ये अच्छा किया कि they didn't let इमाद वसीम बॉल एट देम. उसको उन्होंने काउंटर अटैक किया कि उन्होंने चांस लिया उसके खिलाफ. और आई थिंक क्या नॉर्मली होता है ये इमाद के खिलाफ कि अगर आप पहला मैच देखें किसी भी सीरीज का, इज ऑलवेज वेरी सक्सेसफुल बिकॉज बैट्समैन आर स्टिल थिंकिंग इज अ लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, व्हेयरएज ही इज मोर ऑफ ए राइट आर्म ऑफ स्पिनर. बॉल अंदर आती रहती है, सीम अप कराता रहता है. उस हिसाब से आपको जो है वो उसको ट्रीट करना चाहिए. आपको एक पुराने ज़माने में पता नहीं आपको याद होगा एक बॉलर होता था न्यूजीलैंड का क्रिस हैरिस, ऑलराउंडर. वैसी ही बॉलिंग एक किस्म की कराता है. क्रिस हैरिस तो चलो वो मतलब वो लेग कटर्स भी मार देता था. उसकी एक अजीब सी बॉलिंग होती थी. बट या वेरी सिमिलर लाइन लेंथ बॉलर है. कीप्स इट टाइट टू द स्टंप्स. उस किस्म का उसको मिरर कर लें वैसे मोर और लेस यही है माद भी. True. Shaheen Afridi is coming into the attack now, replacing Ahmad Wasim. 1 over 11 runs in that first one. England 43 without loss after 4. Slower delivery again, driven through the covers. Good a stop, good fielding yeah, effort zabardast. there. It's Ahmad Wasim. He's Wow, everywhere. ये तो मोजा ही हो गया. बस यार देखो उसने जैसे ही वजन कम किया उसको जो है उन्होंने ज़करिया खालिद कह आमिर लेफ्ट आर्म खिचड़ी. मिस्टर कह फ्रोजन मटर वाली. यार खिचड़ी में मटर कौन डालता है? डालते हैं क्यों नहीं डालते? डलता है. What is this? डल सकती है. डल सकता है. वैसे खिचड़ी में है क्या? यही डाल दो. दाल चावल होते हैं. मटर डालोगे तो मटर पुलाव बन जाएगा.
ये यार वैसे मटर Pandora's box मूड हो रहा है अब वैसे सुन के यार मटर पुलाव और शामी कबाब off shorter delivery Banton tries to cut away यार ये भी He'll सिंगल दे only pick up a दिया single good delivery though he's trying to mix up his lengths here Shaheen Afridi रमीज भी यही पूछ रहे मटन एंड खिचड़ी हाउ डेयर यू मिस्टर आर्सेनल आपका ताल्लुक कहाँ से है कौन से सूबे आर्सेनल से आर्सेनल से ऐसी पुट्टी चीजें वहीं हो सकती हैं यार ऐसे तो ना कहें यार कभी वो देखो दाऊद भी कह रहे हैं नो no माइकल स्कॉट वाला नो yeah but seriously मटर कौन डालता है खिचड़ी में I need answers Mr. Arsenal जो डेनली भी उनके स्क्वाड में है लियम लिविंगस्टोन सारे पीएसएल मर्चेंट्स आए हुए हैं उनके absolutely again on the leg stump this time a Hoyt towards square leg will only get Bairstow a single he's mixing शुक्र है up his आमिर इन length, चक्रों में नहीं mixing up his पड़ा spaces. शाहीन इन चक्रों में नहीं पड़ा कि Yeah. भाई मैं भी कटर कुटर मारूं वन इज इनफ ये नहीं कि चार चार वही बॉल डालते And रहो that's the बार-बार। thing I think they were expecting another cutter उसने पहले 2 कटर कराए हैं उसके बाद तीसरी उसने तेज डिलीवरी डाली है तो थोड़ा सा जो है इसके अंदर 46 for no loss after 4.3 Banton 17 of 11 बेस्टो 29 पे चला गया यार अभी तो आया है 3 ओवर पहले हद हो गई है मिस्टर आर्सेनल कहने वेंगर मटर खाता था बचपन में बहुत शौक से अच्छा यार आर्सेन वेंगर Wenger did it Mr. Wenger मिसबा भाई भी यार ठीक ठाक एंग्री हो रहे Again, हैं a cutter on leg stump, this time defended by Banton. They'll pick up another single, 47 after 4.4 is a good question coming in from Shoaib. He's complimenting us as well. Thank you, Shoaib. And he's asking who's the most underrated commentator in your opinion. He thinks it's Sean Pollock, Pommy, or Nick Knight. And Nick Knight, sorry. यार पॉमी ठीक है Yeah, शॉन Pommy पॉलक is a तो favorite of mine, so I've always had a Oh, preference for he Mr. smoked that वो जो रज़ाक वाले Yeah, मैच yeah, में yeah, yeah. Goodness My me goodness. वाकई Gone a यार long way. पॉमी अच्छा कमेंटेटर Pommy's a वाकई good commentator. He brings a nice balance of हाँ. emotion and also expertise. एंथुसियाज्म coming बहुत इंपॉर्टेंट होता Yeah. है ओए Oh, that's a full toss. Hoiked into the air. And this lands Oy, safely behind Shoaib yaar. Malik, who was putting in an effort from long on. Mid on, sorry. They'll pick up 2. यार शाहीन इज गेटिंग सो अनलकी इन दिस सीरीज यार It's given as a no ball as well. It was above waist यार height. ये so कहाँ से नो बॉल है it यार will be extra runs for England here. runs 50 up for England in the 5th over so they're right on track Pakistan are under a bit of शदाब पे pressure. मुझे लग रहा है he will be the key ball Yeah, but यार that was not a no was ball not a ball. यार इससे ज़्यादा high तो इफ्तिखार वाली बॉल थी आपने जो रिव्यू करो यार second last बाबर में, but बहस करो उनसे It might have been a front foot one. I haven't seen the umpires that call okay yet. fair enough but 50 partnership and Bairstow 31 of 17 Banton तो उसके सामने खेल ही नहीं रहा but ये कौन England कह रहा है मेरी fighting आवाज back. से शान मसूद लगता मिसबा है looking- यार खुदा को मानो क्या खुदा को मानो Oh, this time it's a uppish shot high in the air and it's going to clear the infield with ease. But again, it Backspin. somehow doesn't go to the boundary. गोल्फ वाली शॉट लग गई यार ये आउटफील्ड वैसे कितनी अजीब ही है कचरा आउटफील्ड है यार मैनचेस्टर है ही फारिग शहर बट 52 for no loss shout out मैनचेस्टर और मैनचेस्टर वाले सरखेल सुरखेल हो गया but Misbah Misbah, got look his at that head in his hands यार वैसे बहुत ज्यादा है मिसबा भाई जो है काफी अपसेट लग रहे हैं इस वक्त Yeah, I think this deserves to be memed. Probably Dijink. लेकिन उसने गलत क्या Good किया है step जो in वो here. इतना अपसेट हो रहा है आई एम नॉट श्योर I think maybe they're not following the plan here. Oh, and was the pass is sound about appeal and not Yeah. given. I think it's pitched outside leg stump yet again. Bairstow was trying one of his 91 miles per traditional hour flicks, and that's why शाहीन he's शाह beaten. फरीदी यार Sheer pace. Can't get the fast medium. ले लो रिव्यू यार क्या हर्ज है Leg bye भी नहीं दिया तो शायद inside edge की वजह से he's thinking about it, Babar, but I don't think he's going to go upstairs. End of the 5th, 53 without loss, and it looks like How Babar was Azam's that? coming on Let's the ball. take a look No, यार I'm how was that यार kidding. Definitely outside leg stump. maybe यार it Easy looked हो like जाए, it easy हो pitched जाए. right on leg Easy हो जाए. यार एक कॉमी रिप्ले तो दिखाया हम कॉमी हीरोज के लिए यार कोई मुझे कह रहा है अहमद भी कौमी हीरो है और रमीज कह रहे हैं पूरा पीओसी कौमी हीरो है पीओसी पीपल ऑफ कलर हो गए सीओपी मतलब था उनका बट पीओसी है पीओसी है look at that Look at how far outside leg यार। stump that's pitch Khwaja. It's hitting outside ये कॉमी leg as रिप्ले well. नहीं हो सकता है यार ये नहीं। कैसे हो सकता है यार VK का सवाल है is Babar a good captain? I think too early to judge but his captaincy in the last game was quite good. He was हाँ। making the right changes, the right calls. So I think we need to इधर give भी him यूनुस time. खान की नोटबुक आ गई है बस देख लें द नोटबुक मूवी पसंद है आपको द मैंने नोटबुक देखी नहीं है सिर्फ मीम्स देखी सिर्फ मीम्स देखी मैंने उसकी 53 for no loss after 5 Bairstow looking dangerous on 33 of 19 Banton 18 of 12 Muhammad Amir gone for 13 of the first cutter over specialist
It starts with a cutter, pulled away Catch! this time, and Yaar. that's only going to be caught in the crowd if there was one. That's over square leg. Another 6 for Johnny Bairstow. He's racing away towards the 50 here. 39 off 20. Mohammad Amir being ये punished. क्या बॉलें बैक ऑफ लेंथ करा रहे हो यार, आपने देखा नहीं साकिब महमूद के साथ क्या हुआ है, इतने लटरियां उसको पड़ी हैं, बॉल आगे कराओ यार, पिच इट अप। दोनों वैसे फारिग बॉलर हैं, मोहम्मद आमिर और साकिब महमूद। यार वैसे आई एग्री, साकिब काफी आपको बोल रहा हूँ कि जो है साकिब महमूद में कुछ नहीं रखा, बिक गया है। गोपी मियां कवालकर ने आमिर से 2-3 ओवर करवाई यार, हद हो गई यार। मलिक भी समझा रहा खुदा दे बंदे अगे गेंद करा बगैरता। Look at मिसबा भाई man. तो फुल अपसेट हो गए। I think मिसबा ने शायद या तो मिसबा भाई ऐसे अपसेट हुए जैसे किसी ने सिक्स सेंस की एंडिंग बता दी उनको। I see white people. दाऊद तो ऑल कैप्स हो गए। इंशाल्लाह लास्ट मैच फॉर मोहम्मद आमिर, यार इंशाल्लाह। मैं भी मतलब ट्विटर पे कुछ लोगों को फॉलो करता हूँ जो काफी इस वक्त एंटी आमिर हुए हैं, राइटफुली सो, नॉट जस्ट आई थिंक मेजॉरिटी एंटी आमिर हो गई। क्योंकि यार एक आपको मोटिव क्वेश्चन करना पड़ता है। हाँ। एक बंदा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को प्रायोरिटी नहीं दे रहा, हाँ तो कुछ ना कुछ तो उसमें है। सही बात है, जाओ फ्रेंचाइज में जाओ, जन्म में और या तो जाओ। आप आके इतनी मतलब तबाही कोई बॉलिंग हाँ। करा रहे हो, this time a better delivery on the middle stump, यही बॉल आप कराओ यार। point shy at the stumps, but they were सीम well अप in. कराओ, वो आपको मारते हैं आपकी फुल पेस बॉल, ठीक है, आप पे Exactly. लल्लू कटर दे रहे हो, वो भी हाफ वे डाउन द पिच, तो वो मारेंगे ही सिक्स, और और क्या ऊपर से आप मारेंगे। लेग कटर ऑफ कटर भी जो दे रहे हो वो लेग स्टंप के बाहर दे रहे हाँ। हैं, मतलब he just has to जो swing his शाहीन ने arms. मारा था बिल्कुल लेग पे गिरी और मिडिल पे लग रही थी, उनको Exactly. रोकना पड़ गया। Exactly. आप क्रैम्प तो करो भाई, कुछ तो चेंज करो एंगल अराउंड द विकेट आउट, मतलब डू समथिंग डिफरेंट। प्रेडिक्टेबल बॉलिंग कराओगे तो रिजल्ट भी प्रेडिक्टेबल ही होगा। 60 आफ्टर 5.2 और सिर्फ 4 चौके 3 छक्के मारे, लेकिन हमें लग रहा है कि पता नहीं कितनी देर से मार पड़ रही है। बट वो यही हो रहा है ना, हर ओवर में मार रहे हैं, वो ये नहीं हो रहा कि भाई एक ओवर में आपको ज्यादा रन पड़ रहे यार हैं, ये भी कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं। ड्रामा क्वीन ही है यार। अच्छा वैसे ख्वाजा, आज मोहम्मद हफीज की जो बैटिंग रही है उसके बारे में आपकी क्या राय है? यार काफी क्लीन हिटिंग की है, लेकिन वही मैं बता रहा हूँ, साकिब ने इतनी बेकार बॉलिंग कराई है उसके खिलाफ, मतलब कि he हफीज की had to बैटिंग smash भी, them। बट आज आपने उसके पैडल स्कूप्स भी देखे हैं। एक हमारा है यार उसमें। एक ही काफी होता है, एक मोर देन द अदर फिर बैट्समैन। जो ट्रिपल फिस्ट पंप जो उन्होंने दिया था, ये देख ये देख, मार सकता हूँ मैं, खेल सकता हूँ मैं। और वही उन्होंने जवाब में 5.2 में 60 मार दिए हैं हमें आपको। ट्रिपल फिस्ट पंप दिया हुआ है। कटर दिस टाइम बेटर आउटसाइड द ऑफ स्टंप, पेन 10। शुक्र है ऑफ के बाहर तो दिया बगैर। एग्जैक्टली यार, थोड़ा सा तो आप उनको ट्राई करवाओ कि यार ऑफ स्टंप के दाऊद भी खेलें। इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, कहते हैं यार व्हाट इज ही इवन डूइंग, And he seems मतलब to be यू आर प्लेइंग अ struggling. T20 आफ्टर सच अ व्हाइल, then you're pulling this BS, he's looking completely effortless। Speaking of pulling, I think he might be hurting his hamstring here. He's stretching it out. This चलो might be a cause of नया concern ड्रामा for शुरू हो गया Pakistan. इसका। बाबर को दे दो यार, बाबर से बॉलिंग भी कराओ। अब इसके batting भी, 3 ओवर कौन captaincy कवर भी। करेगा? ओए सरफराज फिर मीम बन जाएगा इसका यार। पांडा की जमाई। यार सरफराज पांडा 60 for no loss, 5.3 overs. उस्मान साथ ही थ्रोबैक, आज मोहम्मद आसिफ होता, Oof. Oof. बट Again on leg stump this time. अच्छा हैमस्ट्रिंग के बाद अब बेहतर बॉलिंग करा Flick रहा है। towards mid wicket. Just a ड्रामा ही single. है यार। I think यार ओवर कंप्लीट करो, उसको निकालो। हैदर अली बेचारे हम, ओ हारिस रूफ, अच्छा ओ No, हारिस भी है I यार। don't think he's going to continue. He's stretching that hammy. That's the thing that we were afraid of. After such a long layoff, you're going to be rusty. You're going to have some niggles and pulls. And Mohammad Amir just in this second over here has pulled up lame. और यानी इसके भी 2 ओवर अब हम इफ्तिखार या फीस से कवर करने बिल्कुल, होंगे। बिल्कुल, और वो भी मतलब तब कवर करेंगे आप जब लेफ्टीज आएंगे। इंग्लैंड बीइंग the smart unit that they are going to continue to send right-handers here. यार ये तो हैंड हो गया पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा। मिस्टर आर्सेनल ने बस एंड कर दिया, आमिर कुडंट सिद्धा खलो। The physio's onto the field, so he is struggling here, Mohammad Amir. आप सबकी बद्दुआएं जो है मिल के लग गई हैं इस वक्त। यार हमने थोड़ी कहा था कि अब तुम ये लल्लू कटर मारो और अपनी हैमस्ट्रिंग उड़वा दो, और बट ही इज डाउन एंड आउट ऑलमोस्ट प्रीटी मच। मिसबाह तो फुल तपे हुए हैं, स्टीम इज कमिंग आउट ऑफ हिज ईयर्स के भाई ये क्या सीन है। अभी मैंने I can't find it now. Oh yes, Usman is saying Mohammad Amir needs emergency dental work. आप यूट्यूब वालों को मैं देख रहा हूँ। उमैर शराजी कहते हैं पाकिस्तान लूजिंग दिस वन, नहीं यार अभी भी प्लेंटी ऑफ गेम टू गो, बट आमिर इज क्लियरली स्ट्रगलिंग, मे बी दे ट्राइंग टू पुट सम फ्लूइड्स इन हिम कि भाई शायद कोई थोड़ी आपकी रिकवरी हो जाए। फारूक But, रहमान कह रहे हैं आमिर जो है प्रवीण कुमार के पीएच यार गुड कंपैरिजन। और मजे की बात है उसका नाम प्रवीण, तो पाकिस्तानी इसको परवीन प्रवीण कहते कर दिया यार, प्रवीण होता ही नहीं है कुछ। बट आप ये देख लें कि अभी तक जितने भी कंपैरिजंस ड्रॉ हो रहे हैं वो सिर्फ इंडियन बॉलर्स के साथ हो रहे हैं। हाँ। व्हाट डज इट से अबाउट व्हाट मोहम्मद आमिर इज बिकमिंग? रमीज हसन कह रहे हैं अब घबरा लेना चाहिए। देखें आपने घबराना नहीं है। थोड़ी थोड़ी भाई कोच हमारा इतना तपा हुआ है तो हम तो घबराएंगे ही। बिल्कुल, But, उनको खुद जो है वो इस वक्त क्लूलेस नजर आ रहे हैं।
61 for no loss after 5.4. Bairstow 40 not out. Banton 90 not out. England need 135 of 86. Mohammad Amir down and out after 1.4 overs. So this could be यार hamstring होती भी 1-2 महीने की इंजरी होती है, जल्दी नहीं आता बंदा वापस. यार again मतलब अगर कोई cramp stram है तो अलग बात है, but if he is feeling something that might lead to a tear, then this tear हो गया तो is फिर a मसला far हो जाएगा. bigger injury for Mohammad Amir. Might be a few months at least on the sidelines. और तीसरा पेसर भी हमारा चौथे मैच में अपने हारिस रऊफ. That's the other thing. हारिस रऊफ भी अपने पहले मैच में जो बॉलिंग देखी थी वो काफी unconvincing रही है, and he is struggling for form in my opinion at least. क्या पानी पिला के उसको सही कर लें. मोहम्मद अहमद हसन ने एक डीप डाइव किया. हाउ वुड IK have fared in T20? Yeah, I think this would have been a suitable format for him. He had Wouldn't. that ability. अच्छा, Yeah, I he think he had that ability. I think उसके अंदर वो six hitting भी थी, आपने देखा ही था. Batting के लिहाज से he was again someone who could bat in the top 3. ज़करिया क्या कह रहे हैं? Like a coon tiger. But I think it's the ideal format, you know, just coming in, bowling 4 overs fast, then going out, batting at number 3. I think he would have been the ideal रिजवान और batsman. शदाब ये कह रहे हैं भाई बॉलिंग नहीं हो रही तो तू रिस्क ना ले, हमें टेर वेट करवा Exactly. और दे. अगर आप मतलब 2-3 overs बाहर जाके बैठ भी जाते हो and you come back near the end of the innings, it's better. He's struggling to walk here, Mohammad Amir, I think. उमेश शिराजी करे या अल्लाह तेरा शुक्र, should we fast track Naseem in the third T20? यार आपके पास हसनैन है, उसको क्यों नहीं आप खिला रहे? हसनैन और वहाब रियाज है यार. I feel कि वहाब रियाज is being hard done. और here. आपको I'm not a याद big होगा fan, 2016 का जो T20 था इस मैच में, इस ग्राउंड में, द फर्स्ट मैच ऑफ सरफराज कैप्टनसी करियर, वहाब ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी. 2-3 विकेट ली थी उस मैच में. We were referencing और वो the सिर्फ long ये कर रहा squares. था भाई डीप पॉइंट मेरा बहुत पीछे है, बड़ी साइड है, बाहर बॉल दे रहा था, वो कट पे उधर ही कैच हो रहे थे. आदिल रशीद ने 4 हाफ ट्रैकर कराए हैं और चौथे पे बाबर आजम कैच आउट हो गए. अब वो एक मतलब आई गेस एस्पेक्ट है गेम का जो बाबर को भी थोड़ा सा इंप्रूव करना गेम पड़ेगा. अवेयरनेस बढ़ानी होगी. Also his six hitting ability I think is something that he's trying to develop. Again a cutter outside off stump, cut away this time, a diving effort from Shadab Khan, and that has surely saved a surefire boundary. That was a hard cut. They're going to come back for 2. वीके कह रहे हैं, वीके का एक सवाल है, हु वुड प्ले IK इन अ फिल्म? वीके कह रहे हैं परेश रावल. यार मतलब क्या ऐसे तो ना कहें यार. ये आप इतने एक हैंडसम आदमी को जो है वो नहीं, क्या नाम है उसका, वो जैकी श्रॉफ का बेटा, क्या नाम है? वो इतना वो जनाना आदमी है. शक्ल तो वैसे ही है. उसकी जो एक्टिंग है वो लेडीज की भी कर एक्टिंग तो सकता मैंने है, उसकी तो men कभी की भी जिंदगी कर में सकता फिल्म है. नहीं देखी, लेकिन What उसकी is this? शक्ल मिलती है यंग इमरान खान से. चलो तुम कह रहे हो तो याद मान नहीं लेते हैं. मिलती. टाइगर की हाँ, नाम भी टाइगर नाम है. टाइगर है तो फिर बनता है. कैच. Oh, that's in the air. That's going to clear पहुंच जा, covers. पहुंच जा. Fakhar Zaman's going to come around. He's going to keep it to बेस्टो 2. की टाइमिंग थोड़ी आउट हुई है. इज नॉट हिटिंग द बॉल क्लीनली. I guess again वो slow delivery जब ऑफ स्टंप के टाइगर बाहर आपने टाइगर कराई है. श्रॉफ. टाइगर श्रॉफ तो बस वही बनता है. I think he's going to go off the field. मोहम्मद here. अहमद हसन ने एक जवाब दिया है, मुसाद डेफिनेटली खुश हो जाएगा. मार्क वॉलबर्ग यार वो Mark Wahlberg's like half the height of Imran इतना Khan. और इतना आमिर वेरिएशंस टुडे. स्लोअर बॉल 67%. ये स्क्रीनशॉट लो, उसको भेजो और अगले साथ ही रेजिग्नेशन लेटर इसको लिख के यार दे इसको दो. कोई मैसेज भेजेगे अजहर महमूद अब आपका कोच नहीं रहा. हाँ, आप जो है वो दूसरे कोच की स्ट्रेटजी पे आए हैं. Full fast into the wickets. 2 overs 25. That seems to be the end of the day for Amir. Yeah, I don't he's think he's struggling. going to He's going off return. the field. So we need 2 overs from Hafiz, Iftikhar और मलिक. आई थिंक अब लेफ्ट हैंडर्स जब मॉर्गन वगैरह ही आएंगे तभी हम रिस्क लेंगे. बेयरस्टो और बैंटन के खिलाफ तो सवाल ही नहीं पैदा Especially होता. क्योंकि इफ्तिखार ने जो पिछले मैच में मॉर्गन की विकेट भी ली है. हाँ. I think this will be something that Babar Azam has in mind. Pakistan playing their ace card, Shadab Khan End coming on to of the bowl. power play though, England are ahead at this point, 65 without loss. Benton 19 off 14, Bairstow 44 off 23. You are catching all of this on changeofpacelive.com. वीके बताने टाइगर श्रॉफ्स रियल नेम इज जे. अच्छा, हाँ? JAI. JAI. JAI नहीं, जमात इस्लामी नहीं, JAI. JUI नहीं. फिर तो बनता था. अगर JUI होता और टाइगर श्रॉफ होता और इमरान खान का रोल होता तो कैसे नहीं बनता यार. इसने भी 42 मैचेस खेले यार T20s में. यार, आमिर के देख 50 है by the way. हाँ, और शादाब खान के 42. Here he come is on in the attack Shady. against Benton. Good ball, good delivery. start. Back of a length, spinning away and just played off the back foot towards point for a single. अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या करें हम? यार आई थिंक इस वक्त आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि शादाब को अगर ये अटैक करें Spinner ही लगा ले. एग्जैक्टली. रिस्क ले ले, ये हो इमाद को भी सकता एक है. ओवर के लिए ले आए आप वापस. इफ्ती हाँ, ने विकेट ली थी Morgan बट वो की. राइट हैंडर्स के खिलाफ डेफिनेटली नहीं खिलाएंगे उसको क्योंकि दे आर गोना टारगेट द शॉर्टर बाउंड्रीज और उसका वो एक वो जादव टाइप राउंड आर्म एक्शन भी है, वो स्पिन नहीं होती इतनी लेफ्ट के बॉल्स पे. खिलाफ लेफ्टी के खिलाफ जो है वो थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है. वो slider मारता है, हाँ. एग्जैक्टली ग्रिप ऑफ द सरफेस. 66 for no loss after 6.1. Shadab to Bairstow. Catch it! Popped up in the air.
It's a top edge. And Good it's taken. catch! Ahmad Wasim with a good catch from short fine leg. Shadab Khan with the breakthrough. Johnny Bairstow's gone. 66 for 1 England. Big wicket, yaar. Bairstow khabis out ho gaya. Finally. Beautiful leg break from Shadab. Threw it up, invited the shot across the line. A big top edge and a good smart catch. But Ahmad Wasim. यार ये होती है ना, आप मतलब कहते हैं ना दलेरी से बॉलिंग करानी है, बड़े दिल के साथ आप बॉल कराओ, फ्लाइट दो, Good catch लेग स्टंप पे, गुड कैच यार, केम रनिंग अराउंड. मुझे बिल्कुल मुझे भी उम्मीद नहीं थी. कोई उम्मीद नहीं थी कि ये पकड़ लेगा. मतलब Come इमाद on, के अलावा कोई भी होता तो मुझे उम्मीद होती वैसे. 100%. लेकिन हमने देखा है शोएब मलिक की वो कैचिंग फॉर्म हो नहीं रही. पीएसएल में काफी कैच यार आई गेस थोड़े से रिफ्लेक्सेस वगैरह शोएब भाई के स्लो होते जा रहे हैं. शोएब भाई हो गए. शोएब भाई हो गए. इतनी रिस्पेक्ट. शोएब अंकल भी कह सकते हैं. यार वो तो हम सब भी कह रहे थे कि शदाब हमारा एस कार्ड है यार. हम भी क्रिकेट देखते हैं यार. हम भी हमारा भी एक कौमी एलबीडब्ल्यू है यार. कौमी खेल, कौमी शौक, सारी चीजें कौमी हमारी. बट बिग विकेट एंड अ पॉजिटिव स्टार्ट फॉर शदाब गेटिंग अ I think विकेट he needed राइट this as well. राइट. उसको पता था पिछले मैच के बाद अटैक होऊंगा मैं, मुझे उन्होंने टारगेट किया था. मुझ पे यलगार होगी यलगार. Exactly, bold is the plan. And this brings out David Malan. दाऊद भाई आ गए. दाऊद भाई. Malan, look at that. यार Average. एवरेज और देखो स्ट्राइक रेट देखो बंदे का He's यार. only played 12 matches yet he has a ज्यादती है T20 यार. 100 यार against इसको New टेस्ट में भी Zealand. उन्होंने जल्दी निकाल दिया. वनडे में तो मौका ही नहीं देते. और टेस्ट में भी इसने सेंचुरी बनाई थी. एशेज में है. एशेज में बनाई थी बिल्कुल. बट आई थिंक टेक्निकल फ्लॉज थे. How was that? Big appeal. He's got it. Shadab Khan. It's the googly and back-to-back wickets for Shadab Khan. That was full straight, and Tom Banton again trying to sweep him was struck in front of the stumps. He's thinking about the review, but I don't think he's going to send this upstairs. Out है. चलो They have निकलो. to review. Oh, shut up, you bloody fool. I think the only thing that might save him here, If he's hit it. if he's hit it, or if it's outside the line of off stump, which I don't think. Yeah, I think it's a wasted review. हैदर ये कौमी की क्या स्पेलिंग आपने लाई? COMMIE कौमी. कौमी वो दूसरा वाला सुर्ख कौमी सलाम है. सुर्ख सलाम. ये दूसरे कौमी है. स्टालिन भाई खुश होंगे आज. Look at this delivery from Shadab. He's out. Get out of here, buddy. Google's On your Banton. bike. Yeah, he's gone, son. मिस्टर बर्न्स है हमारे अंपायर यार. वो कैसे आप देंगे? Mr. Burns? Smithers, that is out. Get out of here. But no inside edge. That is going to be plum. PLU. ये plum सिर्फ क्रिकेट में यूज होता है. plum. Plum लेकिन कौन सा वाला? Plumb. Plum वही plum. What was the logic of that? ये कोई पता नहीं समझ. यार. Maybe because the red ball looks like a plum or something, you know. पर वो plum हुआ फिर बगैर B वाला होना चाहिए ना? वो हाँ वो B वाला नहीं है. B वाला नहीं है. This is plumb in front. Let's have a look at ball tracking here. He's missed it. Umpire's call on impact. That's crashing in the middle stump. Yes. And that's 2-2 for Shadab Khan, the leader, the legend, the captain of Islamabad United. Lovely bowling, yeah, Shadab. We were just saying that he would be. Broken even half. I love the passion here too, because he knows how यार important वैसे this wicket is. सोचो JR और लॉलर क्रिकेट मैच पे कमेंट्री कर रहे हैं. तबाही हो जाए वैसे. अच्छा अब Paco, what's he macro? He's risen from the dead. Hat-trick ball to the England captain. Can it happen? Can we have a miracle? We need a hero. Shadab to Yuvraj 2017 CT trophy. Maybe he gets that leg spinner on middle Tommy stump. Banks with Never that know. shit haircut. Get out of here, buddy. Love you, Tommy. Not your time. But पाकिस्तान के लिए एक और फायदा हो गया कि अब दोनों लेफ्टीज आ गए हैं, तो अगला ओवर इफ्तिखार का पक्का है. Very good strategy here from Ahmed Hassan. Thanks. मैं भी बस मिसबाह गई जो आपको पता है. चेला हूँ. Slip in place. Here's the hat-trick delivery. Oh, it's a leg spinner respected by Niyama, Owen Allua, Morgan. Niyama, Allua. जैसे हमारे श्रीलंकन भाई नहीं कहते. But All might can. Paco, that's 6JR. He's broken it in half. अच्छा वैसे यार JR जो है वो अब उसमें चला गया है. Podcasting में चले गए. No, there's अच्छा. another wrestling. Oh, that! How was that? Oh, yaar. Oh, Shadab Khan. Are you serious? ये वो युवराज वाली बॉल हो गई है. उसने कहा ले लो. उसने कहा ले लो. And Babar Azam बाबर without आजम तो ठा hesitation. करके रिव्यू. Without जैसे पिस्टल hesitation. शॉट पटाख. बाबर तो रेडी रहता है वैसे. टी जो है उसका हाँ, ऐसे ही होना चाहिए. ले लो. सोचो बगैर रिव्यू ले लिया करो. Ooh, that might be close. I think the only thing saving मॉर्गन him की here. एक्सप्रेशन में लग रहा है कि वो उसके दिल में कोई जहर भरा हुआ है. इसकी भी उसको थोड़ी- लग रहा है वो आउट है. खुन्नस अच्छा, भरी हुई है. इसकी भी क्या थोड़ी 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 पड़ रही है. But yeah, let's take a look. That is gone. That is out. Captain Morgan on your bike, buddy. You were cooked. Easy हो जाए. अभी आउट हुआ नहीं है. यार ये अंपायर कॉल Don't mislead the listeners. We're still waiting. वो हमसे आगे हैं यार. अच्छा वो हमसे आगे हैं. आउट हो गया? नहीं मैं चैट नहीं पढ़ रहा. No spoilers.
back on that up until the JR. No It's gotta be inside hitting back on. no inside edge there for sure. So it's going to be a matter of whether this is hitting the यार ये stumps or अंपायर्स clipping the कॉल stumps. अंपायर्स कॉल चवलपन पे ये बच जाएगा. यार लेकिन अगर 3 इस ओवर में हो गए तो मतलब शादाब खान greatest What a T20 spell, player man. for Pakistan ever. Oh, impact on umpire's call. That was hitting middle. That is a shit call, umpire. ये क्या बकवास है यार. Unbelievable. ये He क्या robbed बकवास us. है. Daylight robbery. मिस्टर बर्न्स Unbelievable. ज्यादती इसके इसने ऑरेंज शेड्स नहीं लगाए होते ना उसको नजर आता. ज्यादती एब्सोल्यूट शिट शो फ्रॉम द इंग्लिश अंपायर्स और हैं भी होम अंपायर्स तो ऑफ कोर्स थोड़ी सी फेवरेटिज्म तो चलती है. 66 for 2. What an over by Shadab Khan. Should have had 3 wickets. Still 1 ball to go. Was on a hat trick and he's completely changed the game. यार England are now on the back foot all of a sudden. फारूक भाई आपके comments अंसारी भी कह रहे हैं that would have been given 8 out of 10 times. डॉम बेस्ट होता तो उसको गोद में लेके उसने आउट दे दिया होना था यार. मतलब रिव्यू पे ऑन फील्ड हर जगह आउट होता. Last delivery of the 7th coming up. Shadab Khan to Owen Morgan goes for the Brilliant googly over, this yaar. time pulled away. Brilliant But over. an exceptional over from Shadab. Just 2 runs off with the 2 wickets. Should have had 3. चिराजी ने तो कहा अंपायर शक्ल से ही रेसिस्ट लग रहा है. हाँ यार उसकी ऑरेंज ग्लासेस उसने लगाए हुए हैं. ये कोई तुक हुआ. हैदर कह रहे हैं व्हाइट सुप्रीमेसी. I think इफ्तिखार का ओवर बनता है दोनों लेफ्टीज के हिसाब से. Let's have a look at that over. Shadab. Brilliant Pindi boys connecting. Good catch by at fine leg by Imad Wasim with that Aussie technique and that big cup. hoik across the line. Completely missed it. And Shadab, well, look at that energy. You miss I hit buddy. You're gone. ढक दो. MDA में दो गांजा लाओ, चरस लाओ, एक्सटेसी लाओ. मुझे दो. दो यार ख्वाजा वैसे क्यों नहीं. यार 67 for 2 Is it allowed after in 7. England a recreational Mary Jane? इंग्लैंड में आई थिंक नहीं है अभी. नहीं allowed. नहीं है. Uptight there. Iftikhar, as I predicted, is into the attack. Ooh, good delivery edged. first up. And yes. Right on the money. Ifti. यार तो हफीज को क्यों नहीं यूज किया? ही इज फीलिंग इट. गिव हिम एन ओवर. यार I guess वो पिछले मैच की विकेट के बाद इफ्ती जो है वो थोड़ा सा सुपर उसको कर गया. यार ये बंदे मुसलसल हर मैच में आके इधर तबला और ये सब बजा रहे होते हैं यार. तबला व्हाटएवर इट इज यार. ढोल ढोल यार ख्वाजा लाहौरी होते हैं. एक ही बात है यार. एक ही गल है यार. बट good to see some support out there for the green shits. Venom 68 is saying, for 2. as I say, Shadab Khan key on this pitch. Absolutely Venom. I think we're seeing early signs of the spin attack that Pakistan are going to employ for the next maybe 8 overs. मलान भी इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेल चुके हैं. Sub Didn't really Islamabad succeed, I United. think. Yeah, He I didn't don't have think a he had great a long tournament. enough run. Ooh, Good good delivery, ball, middle and यार. leg stump. देखिए कितना रफ क्रिएट हो चुका है उधर. अच्छी खासी हुआ अब आप स्पिन बॉलिंग. दो आपके जब लेफ्टीज करा ट्रेन ट्रैक चलता है उधर. ये क्या सीन है ये? यही लग रहा है यार. मलंग हो गए भाई. मलंग हो गए. फुल मलंग. I think there might be like some special needs or something like that. But looks. Wow, Khwaja. नहीं, I'm not kidding. Why have we? Seriously कह रहा हूँ मैं. मजाक में नहीं कह रहा. Why? Catch! Oh, outside edge this time. Goes यार. past short third man. Good effort here by Fursil Shah, but the ball is going to beat him to the boundary. 4 runs. यार थोड़ा aggressive एक slightly चलो think error अब नहीं है लेगा. लेकिन slip रख सकते I थे think यार. अब ले लेगा. I don't think he was expecting them to pay this much respect to Iftikhar or him to bowl as well. जैन मिर्जा कह रहे इफ्ती bowling from 1942. उधर कैसे? ये क्या सीन है? यार आपने वो अजमल वाली जो क्लिप भेजी थी, ये तो मेरे बड़े भाई के साथ खेलते थे. 1974 लेकिन वो शायद कह रहा था. बट यार बाबर की बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई एज कैप्टन यार. आई डिडंट थिंक ही वुड जान बी. में जान आ जाती है. एंथुसियास्टिक कैप्टन होगा वो. Yeah. A good delivery this time on middle and leg. He's going to just tuck it away towards mid wicket for a single. 73 for 2 wickets. और ये 9-9 रिक्वायर्ड रन रेट वाले मैच में एक ओवर आपका अच्छा निकल जाए इट लीप्स अप टू 11-12 और आपको ऐसे एक ओवर चाहिए था जिसमें 2 सेट बैट्समैन जाएं. अब आपके पास जो एक एडवांटेज आ गया. हमने कहा था कि आमिर क्योंकि इंजर्ड हो गया है and you need to cover those 2 overs. Iftikhar's bowled exceptionally well here again. 6 runs off the first 4 deliveries. Unless Morgan targets him here. यार उमर अब्दुल्ला इतनी क्रेडिट तो दे दे इफ्तिखार को. गुड फॉर नथिंग. यार वो अच्छी बॉल थी यार. Cut away this time, short delivery. He's going to miss out there. Owen Morgan, no run there. Another top ball, and like you said, Ansari, हम पूछ रहे हैं how was Hafiz's batting? यार he hit some good shots, but honestly he faced some really bad bowling. Back of length बार बार कराई जा रहे थे and he just and on middle and leg, if the kept bashing it down the ground. No, long on will come in and it'll just be a single. End of the 8th, 74 for 2. ऐसे ही हम बस आप चुपचाप ओवर निकाल दो. बच बचाओ करा के. That's all we need. लिटरली आपको सिर्फ एक ओवर और निकलवाना है इस वक्त इफ्तिखार से. अगर वो आपको दे देता है, आपने आमिर का. लेकिन मुझे लग रहा है कि ये रऊफ को थोड़ा टारगेट करेंगे. या शाहीन को मारना मुश्किल है. करना पड़ेगा क्योंकि शादाब को अगर आप सेट होने दोगे, उसको टारगेट नहीं करोगे तो किसी एक को तो आपको करना पड़ेगा.
और इमाद का भी एक रहता है, सो दैट विल बी इम्पोर्टेंट. ट्रू, या हो सकता है कि एक एक्स्ट्रा ओवर जो है उससे बल्कि अगर इमाद भी दे सकता है, के भी हाँ. आप ओवर जो है कवर कर सकते हैं. हाँ. अगेन लॉट्स ऑफ ऑप्शंस हियर फॉर बाबर एक राइट आर्मर आता तो इमाद को लगा दो, उसको वो भी राउंड ओवर जो कि आएंगे अभी, क्योंकि आपको मोइन अली है और सैम बिलिंग्स है इस वक्त. इफ्तिखार सर एलेक्स का दोस्त होता था यार. Yeah. Google What a and this is shot, launched yaar. into the air over square leg, 6 runs. All that respect has gone out the window. Owen Morgan with his first यार boundary. he should have 80 for got 2. him यार. लेकिन अब शादाब को ये भूलनी पड़ेगी बात कि he was out. Exactly. और I think उसने try सही की थी. He realized कि he was gonna get targeted over the leg side. He bowled the googly, just didn't spin too much. पिक कर ली उसने, I think. Owen Morgan with that hand-eye coordination. easy यार pickings for कमाल him. क्लीन हिटर ऑफ द बॉल है यार ये. फ्रीक टैलेंट टू बी क्वाइट ऑनेस्ट. Absolutely यार. यार अब तो ये वो उस किस्म के टेढ़े शॉट्स नहीं खेलता जब ये हाँ. पहले आया था जो खेलता था. 2010 में First time I saw a batsman hitting a fast bowler for a reverse sweep. Crazy Title shot, shot was yeah. him against Ravi Rampal. Crazy I remember shot that in the he was. World Cup, I think. England 80 for 2 after 8.1. Shadab continuing to Morgan cut away. अबे नहीं I think यार there will ये be भी दो रन a हो गए. sweeper. No, there's a sweeper there, and it's Haris Rauf. They're gonna still pick up 2. अच्छा रऊफ को अभी तक नहीं लगाया उन्होंने. Rauf को नहीं लगाया. I think 10 के बाद लगाएगा. क्योंकि एक ओवर तो पक्का इफ्तिखार का निकलता है अगला. हाँ उनका जब तक पार्टनरशिप बन रही है तब निकाल लो. But Adil Rashid in the background burst over with a good hand today. Got 44 I believe. Jason Roy भी नहीं खेल रहा भाई. Jason Roy भी नहीं खेला. यार ये टॉम करन की क्या है यार, मतलब what is that mustache? Reminds me of Vincent Price a little bit. Vincent Price कौन? यार आपने सिम्पसन्स में, मैंने सिम्पसन्स में वैसे ज़्यादा देखा. ही used to be an old movie actor Okay. हाँ I with get the what you little mean. thin mustache. वो जो अप का विलन था उसकी तरह. A little bit, yes. And he used to be in a lot of the Halloween specials for The Simpsons. So 83 for 2 throwing after it back a little 8.3. So England going along nicely. Run rate का तो अभी तक जूनियर इशू ने नहीं कहा आया. था, हम तो हार जाएंगे. यार हद हो गई. इतनी जल्दी ये हिम्मत हार जाते हैं यार. बस यार बच्चों के अंदर आजकल फेथ ही नहीं है. उन्होंने वो बुरा वक्त नहीं गुजारा जो हमने गुजारा है. सही बात है यार. बिगड़े हुए बच्चे हैं ये. Oh, that's dropped by Shadab. Did it carry? I think it carried, but मुझे I नहीं think लगता, मुझे नहीं लगता. maybe it was just lost in the air for Shadab. We're gonna have to take a look at this in the replay. Leading edge. यार ही No, नहीं. it just dropped short. Well पता है shot, शादाब well छोड़ता short. नहीं है यार. Well shot of आपको him. पता है शादाब कैच नहीं छोड़ता. लेकिन मलान ने तो खेला होगा उसको नेट्स में. But You should be aware of his इस वक्त bowling. थोड़ा सा nervous लग रहा है. This time leg stump tucked away towards square leg. But It'll be a Shadab is single. bowling beautifully यार. जबरदस्त. जब अपने ये पीक पे आया था 2017-18, that nagging length and that बिल्कुल. beautiful line, this well, confidence this is guy- really surging through him. Exactly. और आपको पता होता है इसका जो confidence तब है जब Googlies जो है consistently मार रहा होता है flighted. जैन मिर्जा एक भाई एक शुरू हो गया ट्रेंड इफ्तिखार पे जोक्स. वो जो मोहम्मद जोक्स नहीं होते थे. कैच इट. Oh, that was hit way too firmly by Owen Morgan. A straight drive goes past the bowler, goes past the umpire, all the way to the boundary for 4. 88 for 2 after 9. यार 16 पे चले गया है यार. यार उसका हाथ टूट जाता अगर वैसे वो बॉल पकड़ने की कोशिश 2 for करता. 16 is Let's Shadab. have a look at this. I think he's got Firm a drive. hand. Oh, He no, had it's no just going chance. through past it. And the umpire's done well here to duck that. जैन मिर्जा कह रहे हैं इफ्तिखार का पहला पेट टी-रेक्स था. यार I think इसकी थ्रेड बन सकती है वैसे आज ट्विटर पे. वाकई. Ifty jokes. But 88 for 2 after 9. क्या बताएं क्या करना चाहिए. पाकिस्तान 86. आपको पता है क्या करना है, आपने बस करना है. ख्वाजा आपको याद है आखिरी बार जब 86% विन विज ने दिखाया था तो क्या हुआ था. ये बहुत बड़ा फ्रॉड है ये प्रेडिक्ट विज यार. जब भी पाकिस्तान की हक में बोलता है मैच हार जाते हैं पता ही नहीं इनको करना क्या होता है. दिलविज इज द रियल प्रेडिक्शन. दिलविज क्या कह रहा है ख्वाजा. यार. अभी भी मुझे लगता है 50-50 है मैच. राइट इन द बैलेंस. आई फील 60-40 इंग्लैंड के लिए.